Hello everyone, good morning. Okay. So, good morning all once again. Welcome to Gate Academy. So, in this session I would like to discuss about complete revision on electrical machine. So, we know we have a 4 chapters in the electrical machine. One is transformers, induction machine, DC machine and also synchronous machine. So, here I will tell you how to what are the possible question based on the transformers, what are the possible question in induction machine and what are the possible question in the DC machine, and also I will discuss everything here and what are the possible question in the synchronous machines. Okay. So, in transformers part there are the 3 major parts. One is a single phase transformer and second one is a 3 phase transformer and another one is auto transformer. Okay. And most of the question comes from the single phase transformers. Mostly 80% of the question in case of the transformer comes from single phase transformers, and next one 3 phase transformers and also auto transformers. And one more chapter in the electrical machine, that is the induction machine. So, in induction machine, so majorly we can expect the question from the 3 phase induction motor and also single phase induction motor, and little bit discussion about the induction generators, that is the 3 phase induction generator part. Okay. Okay, all of you clear about it? Is that clear? So, next in the DC gener machine, so we have a 2 parts majorly. One is a DC generators and DC motors, and in synchronous machine, so we have the major parts. One is a synchronous generators, that's we call alternators, and 3 phase synchronous motors, and one more this is a most of the question comes from the synchronous generator part. So, mostly a 70% of the syllabus in case of the synchronous machine is synchronous generator, remaining part is a synchronous motors. Okay. And so, let us start the discussion about the transformers part. The first part here, first topic, so that is a operating principle of the transformers. This one. Okay. Okay. Yes, good morning all everyone, good morning. Okay. Okay, Hashish, I will tell you in Hindi, don't worry. Just introduction my diya tha, I will tell you. I will discuss everything in Hindi also. Sumit, good morning. Yes. So, we know that transformer operates on the principle of Faraday's laws of electromagnetic induction. So, mathematically this is the EMF induced in a coil is a directly proportional to rate of change of the flux linkage. Okay. So, this is the according to the Faraday's laws of electromagnetic induction, EMF induced in a coil is directly proportional to rate of change of flux linkage. So, where psi is a flux linkage, so that is a number of turns multiplied by flux phi of t here.
So how do we get this flux? Okay, where n is the number of the turns and phi is a flux and where psi is a flux linkage. So flux is a, so we know that in any conductors, like suppose we have a one state conductors, okay. So any current carrying conductor the produces magnetic field, okay, around this conductors here. So suppose I amount of the current passes to the conductors, so then what will happen? So here the magnetic field around the conductors. So according to the Ampere's law, a current carrying conductor produces magnetic field around the conductor. But how do we obtain the direction of the magnetic field? So this direction of the magnetic field can be obtained by using, okay, by using right and the thumb rule. So in case of the state conductors, here we have a two methods. So this rule, according to this, is the right and thumb rule is used to find out the direction of the magnetic field. Only Ampere's law state that a current carrying conductor produces magnetic field around it. Suppose we have a one more, so that is the it is a state conductor, okay, it is a state conductor, and another one is a coil. Suppose a coil which has a n number of the turns, okay, this is the n number of turns are provided on a coils, okay, where I amount of the current passes through the coil. So this is the two conductor, it is the one state conductor and the circular conductor or coil. So which has n number of the turns. Now we have a question. Suppose how do we find out direction of the magnetic field in a state conductor, and how do we find out the direction of the magnetic field in the circular conductors? Have we got it? So here this is in case of the state conductor, here thumb indicates the direction of the current and the fingers around the conductor indicates direction of the flux. But in case of the circular conductor, what will happen? So this orientation of the fingers around the conductor indicates the current direction. This thumb, right? This thumb indicate the flux directions. Okay, all of it clear? Okay, Imansh, it's for tribili and also instrumentation. You can watch this class. Okay, so this is about the Ampere's law and also Faraday's laws of electromagnetic induction. According to Faraday's laws of electromagnetic induction, EMF induced in a coil. So here Ampere's law means a current carrying conductor produces magnetic field around the conductors. So this magnetic field direction can be obtained by using, so right hand, okay, thumb rule. Okay, clear? So next one, and how do we get this magnitude of the flux here? So this is also one of the question, relation between the magnetizing current and flux. We can expect the question based on this flux. Okay, so here, so we know that according to the Ampere's law, so here integration of magnetic field intensity with respect to the dl, so that is equal to number of turns multiplied by magnetizing current, where h is the magnetic field intensity or magnetizing force, okay, where n is the number of turns and I is current passes to the conductor, where n is the number of turns of a coil. So by integrating this, we can get h is into the L length of the core, the number of turns multiplied by magnetizing or current, or the current passes to the conductors or coil. So here H is the magnetizing force, H is equal to number of turns multiplied by magnetizing current divided by length of the core. So this, let us assume this is the equation 1. So next one, here we know according to Savar's law,
the B is equal to flux density B is equal to the nu H, okay, the nu H here. So flux density means flux by area, so that is equal to permeability of the core. So H is the N multiplied by magnetizing current, so divided by length of the core. So now simplify here, so flux phi is equal to, so magnetize, this is the number of turns, the permeability, number of turns, magnetizing current, area of the core divided by length of the core. So from here we can get flux is equal to the number of turns multiplied by magnetizing current, so divided by, just wait a minute, so magnetizing current number of turns, so this is a L length of the core divided by permeability and area of the core. So what it means, the length and permeability and area of the core, so this is equal to the number of turns, ampere turns divided by the this is the reluctancy of the core. So that's why we can write, so flux is equal to mmf the divided by the reluctancy of the core, okay. So this is the mmf is a ampere turns, reluctance is the analogous quantity of the resistance in the electrical field, okay. Yes, it's a revision class, okay. I will revise all the concept within 3 hours. So that's why I am doing, just I will discuss what are the possible question and everything, okay. Okay. So we have discussed about what about the flux relation, the EMF induced in the conductor, that is equal to the minus n the d phi by the dt. According to Faraday's laws of electromagnetic induction, the EMF induced in a coil is equal to minus n, where n is the number of the turns, okay, differentiation of the flux with respect to the time. So this flux is a time varying nature of the flux. Got in my point? So now n is the number of the turns. So this EMF is known as a statically induced EMF. Okay. Why it is treated as a statically induced EMF? EMF induced in a coil is in a coil due to relative time variation between the magnetic field and set of conductor is called the statically induced EMF here. So this the E is, this minus sign indicates, okay, Lenz's law. Okay, now we have a question. What are the possible question based on this equation? Suppose in case of the primary winding, this is the E1 is equal to minus N1, okay, d phi of t by the dt, differentiation of the flux with respect to the time. So from here we can write E1 is equal to minus the n d psi flux linkage by the current flux, differentiation of the flux linkage with respect to the time. So by this equation, E1 is equal to minus the differentiation of the flux linkage with respect to the magnetizing current and this differentiation of the magnetizing current with respect to that time. So what about the flux linkage by current? So this flux linkage by current, E1 is equal to minus the self inductance, okay, the di nu by dt here. So this is a EMF induced in the primary winding of the transformer. Similarly, the EMF induced in the secondary winding of the transformer. So E2 is equal to minus N2, the differentiation of the flux with respect to the time. This equation you can rewrite, the E2 is equal to the minus differentiation of the psi with respect to the current, and then you can write differentiation of the magnetizing current with respect to the time. So it is a EMF induced in the primary winding in terms of the number of the turns, okay. Similarly,
EMF induced in the secondary winding in terms of the number of turns in secondary winding of transformer. So now how do we write this equation? Flux linkage divided by the current. So this one you can write, it is equal to minus M, the differentiation of the magnetizing current with respect to the time. So it means that EMF induced in the primary winding of the transformer is a self induced EMF. The EMF induced in the secondary winding of the transformer is a mutual induced EMF. So here till now we have discussed about just what is the operating principle, and also how do we find out direction of the magnetic field, and also how do we find out direction of the induced EMF in a coils. Okay. So what are the possible questions from this, okay, discussion? Okay, क्वेश्चन कैसे बनता है एक डिस्कशन में? आर यू क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, so what are the possible questions from this discussion? One of the question here we know EMF induced in the transformer. So that is a statically induced EMF. Okay. So now EMF induced in the primary winding of the transformer. So that is a self-induced EMF, right? This is the one of the questions like. And EMF induced in the secondary winding of the transformer is the mutual induced EMF. Okay. And one more possibility of the question, sometimes the number of turns are given. Okay. In any question here N1 turns in the primary winding and N2 turns in the secondary winding. So number of turns are mentioned in the question, N1 and N2 are given, and asking about the here EMF induced in the primary winding and also EMF induced in the secondary winding of the transformer. So this is also one of the possibility of the question in this concept. Now similarly, so sometimes here one more possibility, the here self inductance and also mutual inductance are given in the question. So then L1 and that is the self inductance and mutual inductance will mention in the question, and they will ask about the EMF induced in the primary winding and the secondary winding of transformer. Just here suppose number of turns are given. So they will here one more diagram, shape of the flux also mentioned here. Okay. And but the self inductance and mutual inductance have given. So then we can say that here magnetizing, shape of magnetizing current is also given. So that is the beauty of this question here. One is the statically induced EMF, self induced EMF, the N1 number of turns, mutual inductance and self inductance. Okay. This is the one possibility of, these are the some possibility of question based on the operating principle of the transformer. One more possibility of the question. So that is so we have a questions like, if transformer is excited with a square wave voltage source, what is the shape of induced EMF? This is also one of the question. And one more possibility of the question, the if transformer is excited with a square wave current source, then what is the shape of induced EMF? If transformer is excited with a square wave triangular wave voltage source, then what is the shape of induced EMF? Similarly, if transformer is excited with a triangular wave current source, then the shape of induced EMF. So these are all possibility of the question based on operating principle of the transformers. Okay, is that clear? This is this is the square wave. Okay, one of the question, square wave voltage source. Okay, square wave current source, triangular wave, okay, voltage source, and triangular wave the current source. So these are all possibility of question. So this waveform, if the transformer is excited with the square wave,
then what is the shape of the induced EMF. So this is a all possibility of question based on the operating principle of the transformers. Okay. So next one we will discuss about. Is that clear, everyone? Screen कैसे बना? Okay. So these are one is if transformer is excited the square wave voltage source, then the shape of induced EMF, and if transformer is excited with the triangular voltage source, shape of the induced EMF. I will solve this question. See. Okay. So first one, we know that EMF induced, the transformer is a pure inductive nature. So that here E is equal to EMF V1 is equal to the L1 EMF induced in the transformer. So that is a di nu by the dt. So where it is a Vs, the pure inductive nature, that's why we can write the Vs is equal to L di nu by dt. So from here we can write, so this is the shape of magnetizing current is equal to 1 by L integration, so Vs dt. Okay, got it? So this is the shape of the magnetizing current, but we required shape of induced EMF. So how do we get shape of induced EMF? The E is equal to the minus N, the di, the minus self inductance, okay, di nu by the dt. So are you clear my point? So initially, if it is excited with a square wave voltage source, then integration of the square, then the integration and then differentiation, so that you can get the square wave only. Now suppose similarly, if the transformer is excited with a triangular wave voltage source, then the shape of induced EMF. Okay. Okay, this one is a EMF induced in the transformer is a N and d I nu by dt. So integration of the triangular wave, then differentiation of the triangular wave, we can get the same triangular wave. So this type of question will ask in competitive exams. Okay. Okay, I will use in the, don't worry. So here we will discuss another concept. Okay. So we know that everybody knows how to derive the EMF equation of the transformer. I don't want to discuss that part today. So I will tell you what are the possible questions from the EMF equation of the transformers. Okay, this is the our intention. So first one, EMF induced in the primary winding of the transformer, E1 is equal to 4.445 maximum Fn1. Okay, this is the EMF induced in the primary winding of transformer. And second one, EMF induced in the secondary winding of transformer, the E2 is equal to 4.445 maximum Fn2. Okay, are you clear? So phi is a flux, F is a supply frequency, and N1 is a number of turns in the primary winding, and whereas N2 is a number of turns in the secondary winding of transformer. So now we will discuss about all possible questions from the EMF injection. So we have a question about shape of magnetizing current, right?
Is that clear? Okay, I will tell you, see that part. So we are in the operating principle, we have a 3 questions. Mostly we can expect the 3 type of the question. One is the question based on the magnitude of the induced EMF, and also question based on the shape of the induced EMF. So there are the 3 questions. One is, if transformer is excited with a square wave voltage source, then what will the shape of induced EMF? And one more possibility of the question, if transformer is excited with a square wave current source, then what is the possibility, what is the shape of induced EMF? Agar transformer square wave supply, we know very well. So if transformer is excited with a sinusoidal voltage source, then what will happen? The shape of induced EMF will be sinusoidal one. The similarly, how do we answer? So transformer, okay. Okay, listen. In transformer is a pure inductive nature. The pure inductive nature. Okay, in case of the pure inductive nature, so what will happen? The supply voltage Vs is equal to the L inductance, okay, D, that is a D I nu by It, the differentiation of the current with respect to the time. Okay, so from here we can write the magnetizing current I nu is equal to the 1 by L, okay, integration of the Vs the dt. Okay, are you clear now? So we know this, the shape of magnetizing current. Okay, next we required shape of the induced EMF. So how do we get shape of induced EMF? So we know the magnetizing current. If we know the magnetizing current, so that is the self inductance, the differentiation of the magnetizing current with respect to the time. So for example point, so we have a question, see, the supply voltage Vs is the square wave voltage source. Okay, all of you clear? This is the square wave voltage source. Now, how do we find out the shape of magnetizing current? The magnetizing current 1 by L, the integration, the Vs is the square wave, okay, square wave with respect to the time. So differentiation of the square wave with respect to the time. So that is a triangular wave. Okay. So next we required shape of the induced EMF. The E is equal to the minus self inductance. So differentiation of the triangular wave. So with respect to the time. So this one, what will happen? So differentiation and integration and also differentiation. So that you will get the square wave. But what about the displacement? So that is the square wave with 180-degree displacement. So what is the reason? Phase displacement between the primary voltage and induced EMF is equal to 180 degrees. So that's why it is the square, shape. If the transformer is exactly the square wave voltage source, then the shape of induced EMF is the square wave voltage, square wave, but with 180-degree displacement. Now similarly, if transformer is excited to the square wave current source, then what will happen? So that means your given waveform is a magnetizing current. So magnetizing current is given in the question. So if the excited the square wave current source, the magnetizing current is the square wave. How do we obtain? Induced EMF is equal to minus the self inductance, the differentiation of the magnetizing current, so with respect to the time. So therefore this is equal to minus L, the differentiation of the square wave, okay, with respect to the time. So here differentiation of the square wave with respect to the time here. So this waveform is a impulse wave. Okay, it is a impulse wave.
But what about the phase displacement between the magnetizing current and this induced EMF? It is a 90-degree phase displacement. So these are the two type of, this is a very important concept. You can expect the question based on this concept also. That's why I'm explaining one more time. So this part. Okay. Yes, that's correct. Impulse wave. Now we can answer any question also, like suppose if transformer is excited with a triangular wave voltage source, then what is the shape of induced EMF? Okay, please text it. What is the shape of induced EMF? If transformer is excited with a square triangular wave voltage source instead of the sinusoidal voltage source. Okay. So now what are the possible questions based on the EMF equation of the induced EMF equation? So we know that E1 is equal to EMF induced in the primary winding, E1 is equal to 4.445 maximum Fn1, and EMF induced in the secondary winding, the 4.445 maximum Fn2. So where phi m is a maximum value of the flux. Okay, this is the maximum value of the flux. Okay, and next one, this maximum value of the flux is equal to the number of turns, the magnetizing current maximum value, okay, phi maximum by reluctance, and F is a supply frequency, and where N1 and N2 is the number of turns in the primary winding and also number of turns in the secondary winding of transformers. Okay, got it? And what are the possibility questions from this concept? The first question is the EMF equation. Okay, this is the EMF equation in terms of the flux density and the number of net cross sectional area of the transformer core. So how do we obtain this equation? See, we know that B maximum is a directly the B maximum is equal to, okay, so where B maximum is equal to phi maximum by net cross sectional area of the core. So from here phi maximum equal to the B maximum into net cross sectional area of the core. Okay, so substitute this equation in this EMF equation of the transformer, so that you can get E1 is equal to 4.44 the B maximum AN Fn1, and EMF induced in the secondary winding E2 is equal to 4.44 B maximum AN Fn2. So this is a one possibility of the question from the EMF equation of the transformer. And let's discuss another possibility of the question. Okay, second one. Okay, second question. So that is a EMF. We have a question based on, so like this is the relation between okay, the size of the transformer and frequency of the transformer. Okay, this is also some question is given which transformer is a small in size. So what is the relation between the size of the transformer and supply frequency of the transformer? So from this equation you can write the E1 the by N1 is equal to 4.44, okay, B maximum AN F, okay, AN F. Now similarly this is also equal to EMF per turns ratio. E2 by N2 is equal to E1 by N1, 4.44 B maximum AN F value.
So some finite value of the flux density. So what will happen? So if the size of the transformer is increases, the frequency of the transformer, the operating frequency of the transformer will be increased in order to maintain V by F ratio constant. Okay. So from this equation, what is the relation between AN and F here? The AN is inversely proportional to the frequency of the frequency of transformer. So here this number net cross sectional area of the transformer core. So that's why the size of the transformer is inversely proportional to the frequency of the transformer. So here also we can ask the question based on this concept. This is also one possibility of the question. And next one, another possibility of the question. So third one is the relation between the KVA rating of transformer, KVA rating, and also frequency of the transformer. So transformer rating, okay. So this is the B maximum. Transformer rating is we know that the rating KVA rating of transformer, okay, direct that is equal to, in terms of the primary terms, E1 I1 is equal to E2 and I2. Okay. So this is the KVA rating of the transformer. So from here we can write the KVA rating is directly proportional to induced EMF, and also it is directly proportional to the frequency. So therefore you can write KVA rating of transformer is directly proportional to the frequency of the transformer. So these are the two possibility questions. The size of the transformer is inversely proportional to the frequency, and KVA rating of the transformer is directly proportional to the frequency. Okay. And next one we will discuss about what is the relation between, another possibility of the question. So what is the relation between the B maximum and V1 by F ratio? Okay. So this is how do we get this relation? So we know that E1 is equal to 4.44, the B maximum N, the B maximum AN F N1. Okay. So B maximum and AN and F1. So this is the number of the some parameters. So that E1 is directly proportional to B maximum. Okay, number of turns is a constant. So this is only during operation of transformers. The E is directly proportional to product of the B maximum and the frequency. So from this equation, B maximum is directly proportional to V1 by the V1, and it is directly proportional to V1 by F ratio. So that finally we can write the B maximum directly proportional to the V1 by F ratio here. So in EMF equation, so these are the possibility of the question. And one more possibility here, so that is the transformation ratio. Okay, about transformation ratio also. So that is it is denoted by the K. So this transformation ratio E2 by E1, so that is N2 by N1 is equal to E2 by E1, it is equal to K. So this is the transformation ratio. Sometimes we have a question based on the turns ratio. How do we get turns ratio here? The turns ratio A is equal to 1 by the K. So this is the turns ratio of the transformer. And the turns ratio. Suppose in any transformer, the 400 upon 200 volts transformer is given. So this is always the primary induced EMF to the secondary induced EMF. So how do we get K value here? Where K is equal to 200 upon 400. So that is equal to 1 by 2. So now how do we get turns ratio? The 1 by K, that is equal to T. So these are all possibility question. I will this is one is the relation between the KVA rating of transformer and frequency, the relation between the maximum flux density and V by F ratio, and also transformation ratio and turns ratio. Another one is a EMF per turns ratio. EMF per turns ratio is the same from the primary winding to secondary winding of transformers. Okay. Any more question? Actually, suppose size of the transformer is directly inversely proportional to the frequency.
Suppose already we have seen size of the electrical transformer in the substation, and in the any electronic device size of the transformer is a very small. So what is the reason here? Electronic frequency the kilohertz and electrical frequency the 50 hertz. Okay, the transformer which is used for high frequency applications, okay, is designed with the size of the transformer is the less. Suppose the transformer which is used for the low frequency application, for example 50 hertz frequency application, and that is a high size. And one more comparison, Indian electrical frequency the 50 hertz and USA electrical frequency the 60 hertz, but USA made transformer is a less in size as compared to Indian made transformer. What is the reason here? Indian electrical operating frequency is a 50 hertz and USA electrical operating frequency is the 60 hertz. So there is a question here like, okay, suppose 100 kVA, okay, there is a question based on concept 100 kVA, the USA made transformers, okay, is operated in India. So then what is the maximum permissible kVA rating of transformer? How do we answer this question? So here if 100 kVA USA made transformer is operated in India, then what is the maximum allowable kVA rating of transformer? So this one we know that size of the transformer is a size of transformer directly proportional to the inversely proportional to the frequency, right? So therefore here the next one, the kVA rating of transformer directly proportional to the frequency. So now kVA rating of transformer in India, okay, divided by kVA rating of transformer in the USA, so is equal to frequency in India divided by frequency in the USA. So therefore kVA rating of transformer in India, so that is equal to, it is USA is the 100 kVA, so 50 divided by 60. So now simplify this, okay, it is equal to how much? So approximately 83.3 kVA here. So what it means, we can operate the USA made transformer up to this, that is a maximum allowable kVA rating of the transformers, okay. So based on this concept. And next one, based on the V by F ratio or the B maximum, the V1 by F ratio. This equation is a very important. How do most of the question in based on the losses comes from this equation. So like by keeping applied voltage constant, frequency is reduced to below its rated value. Then what will happen in case of the magnetizing current, flux density, and these are the possibility questions, okay, right, that's correct, 83.3 kVA, okay, are you clear? Okay. So next concept we will discuss about vector diagrams of transformers. Okay, this is also very important. We can expect the question from this vector diagram of transformers. So initially, at first one is a under no load condition. Okay, so under no load condition, we know that how do we draw the vector diagram under no load condition. Okay, so first take flux is the reference, primary flux of the transformer is a reference, got it, and magnetizing current is the in phase with the flux, okay, another one.
and after that draw applied voltage vector. So always this magnetizing current lags the applied voltage by 90 degrees. Okay, and here is a V1 is equal to Vm the sine omega t plus pi by 2, and whereas I nu is equal to the Im the sine omega t. Okay, this is the magnetizing current. And how do we draw the induced EMFs here? E1 induced, the primary induced EMF E1 the lags the flux by 90 degrees. The EMF induced in the secondary winding E2 lags the flux by 90 degrees. So that is the E1 is equal to E maximum the sine omega t minus pi by 2. The similarly E2 is equal to E2 maximum the sine omega t minus the phi by 2. So this is the two, the E1 I nu EMF induced, and so everybody knows how do we draw the vector diagram, but I don't want to discuss that point here. So I will tell you what are the possibility of the questions. Okay, so iron loss component of the current IW is equal to this is the vector sum of these two current is a no load current I naught. Okay, it is a theta naught. So now I will tell you what are the possibility questions from the vector diagram under no load condition. So first possibility question. So one is a this is the theta naught, about the theta naught, where theta naught is a no load power factors. Okay, and order of the no load power factor, it is a 70 degrees to 75 degrees. Got it? The 70 to 75 degrees, and cos theta naught. So it is a no load power factor angle, and this one is a no load power factor of the transformers. Okay, and order of this no load power factor of the transformer, so that is equal to 0.2 lag. Okay, it is a very small. Okay, this the no load power factor is a very small. So what is the reason? Okay, this is the magnetizing current is a very small as compared to iron loss. Iron loss component of current is a very small as compared to iron loss component of the current. So this is a, for example, suppose so we have a applied voltage and magnetizing current. Okay, like so we have taken this, the flux is the reference, magnetizing current, and this one is a iron loss component of the current. So now initially this is the value of the I naught. Okay, it is the angle theta naught. So now magnetizing current is in the, suppose it is the I nu 1 and I nu 2. So this is the, what will happen, the theta naught will be increased. As the theta naught increases, what will happen here, cos theta naught will be the decrease. So reason is a the iron loss component of the current. Okay, it is a 1 to 2% of the rated current, the rated current of the transformer. So but magnetizing current is a, so this is the 4 to the 6% of the rated current of the transformers. Okay, so that is the reason. So here is a iron loss component of current is a very less as compared to magnetizing component of the current. So this is also one more possibility of the question. Okay. Okay. So next possibility of the question from the from vector diagram of transformers. So that is a magnitude of the magnetizing component of current and iron loss component of the current. So this magnitude is a I nu magnitude, that is equal to I naught magnitude the into the cos theta naught. Okay, so where I naught is a, it is not a maximum value. Okay, it is a the RMS the values. Okay, magnitude is a RMS one. So it is a no load power factor, and similarly magnitude of magnitude of this iron loss component of current. So it is a magnetizing component of current is equal to the I naught, okay, psi into sin theta naught. Got it point? Magnitude of the magnetizing current is I naught into sin theta naught, and magnitude of iron loss component of current, it is I naught into cos theta naught.
So this is the I naught is a RMS value. And next one, how do we obtain this no load current? From here, the no load current is the vector sum of the magnetizing current plus iron loss component of the current. So this by using the parallelogram law, I naught is equal to under root of I nu square plus IW square plus the 2 into I nu IW cos the cos of angle between I naught, I nu and iron loss component of the current. Got it? So from here we can write I naught is equal to under root of, so this is the cos angle between 90 degrees. So that is equal to under root of I nu square plus IW square. So this is a magnitude of I naught. So like this we can answer the questions. And one more possibility of the question based on the no load vector diagrams. So that is a iron losses. The question about iron loss of the transformer. So power drawn by the transformer under no load condition, okay, power drawn by the transformer under no load condition is almost equal to iron losses of the transformer. So that is the no load power P naught, okay, for example. So that is a V naught I naught cos theta naught, right? But how do we write this cos theta naught, I naught cos theta naught is equal to the P naught V naught I iron loss component of the current. So this is equal to V1 IW. So it is a iron losses of transformers, okay. So therefore we can write iron loss of transformer is equal to applied voltage multiplied by iron loss component of the current. So this is also another possibility of the question from the vector diagram of transformers, okay. All of you got in my point? So is that clear, everyone? Okay. Right. So next another part, the B is a vector diagram of transformer under loaded condition. Loaded conditions, okay. So first I will draw the vector diagram under loaded condition, and after that I will tell you what are the possibility of the questions, okay. So same diagram, initially this is the flux phi 1. So let us take the reference phi. So magnetizing current always in the magnetizing current and flux of the transformers are in phase with each other. So transformer is a pure inductive nature, so that applied voltage, this is the applied voltage leads the magnetizing current by 90 degrees. Got it? And EMF induced in the primary winding lags the flux by 90 degrees. So EMF induced in the secondary winding lags the flux by the second. So E1 and E2 are in phase with each other. So next one, iron loss component of current IW. Let us draw the iron loss component of current. These two currents are the here vector sum of these two current. So you will get the I naught. So here theta naught is the no load power factor angle. So now let us draw, so this part, so here, okay. So per lagging power factor or inductive loads, RL loads. So what will happen here? So under no load condition, V2 is either voltage drops are neglected, V2 is equal to V2. So now this V1 here minus V1, why? Because so it according to the Lenz law, here V1 opposes the applied voltage to satisfy the Lenz law, okay. So now current here, load current I2
I2 lags the V2 at an angle of the theta 2. Okay, and this I1 dash is exactly in the opposite direction. I1 dash, it is a mirror image. So next one, vector sum of these two, you will get the primary current, the I1. Okay, it is I1. Angle from here, this is the theta 1. All of you got it point? So this angle is a theta 1. Okay, so it is at inductive load. Same diagram, let us draw one more. Then only you can compare inductive load and capacitive loads. Okay. So here take the reference part. Here I have taken as a phi is a flux, phi is a reference. Got it? And it's the same magnetizing current, and applied voltage leads the magnetizing current because it is a pure inductive nature. So next one, EMF induced in the primary winding, E1. So this E1 opposes applied voltage to satisfy the Lenz's law. So here E2, so E2 also lags the flux by 90 degrees. If voltage drops are neglected, the V2 equal to V2. Okay, and in this case, so what will happen? So magnetizing current IW and vector sum of these two current, you will get the no load current I0. Okay, no load current I0. Okay, so here per capacitive loads, how do we draw the capacitive loads point of view? So I2 leads, okay, this the V2 at an angle of the theta 2. So when I2 I1 dash, this is the I1 dash current. So vector sum of these two current you can get, okay, it is the primary current I1. So this power factor is a theta 1. Okay, power factor angle theta 1. So now we have a question. For example, resistive load, what will happen? I1 dash, okay, here I1 is the I2 is I1 dash and this part. So what are the possible questions from this vector diagram? So we cannot get a question how to draw the vector diagrams, but beyond that, what are the possibility questions from the vector diagram after? So first one, where here is a theta naught is a no load power factor. Okay, and second one, theta the 2 is the load power factor angle, and theta 1 is a primary power factor angle. So this is the no load power factor angle. Okay, it is the angle between the applied voltage V1 and no load current. Okay, and theta 2 is the load angle, okay, load power factor angle. So it is the angle between the V2 and I2. Okay, V2 and I2. So next one, it is the power factor, primary power factor angle. So it is the angle between applied voltage and primary current of the transformer. So the cos theta naught, what is the cos theta naught? The power factor, no load power factor, and cos theta 2 is the load power factor or secondary power factor, and cos theta 1 is a primary power factor of the transformers. All of you got it? So cos theta 1, cos theta 2 and cos theta 2. So there is a question here. One of the questions, see, the first one, what is the relation between the primary power factor and secondary power factors? This is a very important question. Okay. First question is a relation between cos theta 1 and cos theta 2. Okay, relation between the cos theta 1 and cos theta 2. How do we get the relation? So, for lagging power factor, first one, for
lagging power factor loads or per inductive loads. Okay, for L load. Okay, how do we get this relation? The CR per inductive loads. Okay, so it is a theta naught. Okay, this is also theta naught, and theta 1 is a greater than the theta naught. Per capacitive load here, theta 1 is a less as compared to the theta 2. So similarly we can write, so per inductive load the theta, so theta 2 is the theta 1 is a the greater than the theta 2. So when theta 1 is greater than the theta 2, what will happen? The cos theta 1 the less than the cos theta 2. Okay, and next one, cos theta 1. So this is the primary power factor of transformer, and cos theta 2 is a secondary power factor of the transformers. Okay, all of it clear? And second one, per capacitive loads. Okay, how do we get, what is the relation? The theta 1 is a less than the theta 2. All of you got it? The theta 1 less than the theta 2, and cos theta, this is a cos function of the theta 1 is greater than the cos. So it is a power factor. So per inductive load, primary power factor is little bit greater than the load power factor, and per capacitive load, primary power factor is a the little bit greater than the secondary power factor. Here is a little bit less than the primary power factors. Okay, is that clear? And next one, per the resistive load, per R load, the cos theta 2. Okay, cos theta 2 is a unity power factor, but cos theta 1, so that is a lagging power factors. Okay, so this is the relations between the power factors. Also we can ask the question. Next one, magnitude of the primary current. Magnitude of primary current I1. Okay, so how do we get magnitude of the primary current? It is a vector sum of I0 plus load component of the primary current. So by using parallelogram law, we can draw this I1 is equal to under root of, okay, I0 square plus I1 dash square plus the 2 into I0 I1 dash, the cos of the angle between the I0 and I1 dash. Okay, this is the generalized formula. So per the inductive loads, what will happen? See, the I0 I1 dash 2 into I0. What is the angle between I0 and I1 dash per inductive loads? Okay, this is the theta. Okay, this part. Okay, it is a theta 2, and this is the same theta 2, and but we required angle between these two. So from here to here theta naught, and this one is a theta naught minus theta 2. Okay, so therefore magnitude of I1 is equal to, so that is equal to I under root of I0 square plus I1 dash square 2 into I0 I1 dash cos of, okay, this angle is equal to angle between I0 here cos theta minus the theta 2. Okay, so per capacitive loads, okay, I1 is equal to under root of I0 square plus I1 dash square plus 2 into I1 dash the cos of, okay, theta naught plus the theta 1. So similarly per the resistive load is given. So then how do we per resistive load, how do we get magnitude? I1 is equal to under root of,
So that is the I naught square plus I1 dash square, the plus the 2 into I naught I1 dash cos theta naught. So these are all possibility question. So here based on the loaded operation we have a question. So one is a about the power factor, and also another one is about this magnitude of the primary current. It is a very important question in the competitive exam. How do we find out the magnitude of the primary current per inductive loads? How do we find out magnitude of the primary current per capacitive loads? And similarly, how do we find out magnitude of the primary current per the resistive loads? Okay. So we can derive all these things from the vector diagrams. Okay. Sir, please explain cos theta 2 unity power factor for R load. Okay. Okay. See. Okay. Okay. For R load, what will happen here? Flux, okay, मैं क्या किया था, फ्लक्स को रिफरेंस लिया, here flux reference की, and magnetizing current, the magnetizing current in phase with the flux, okay, and always the transformer is a the pure inductive nature, so that applied voltage the leads the magnetizing current by 90 degrees, okay, general, and EMF induced in the primary winding E1 lags the flux by 90 degrees, and EMF induced in the secondary winding E2 the lags the flux by 90 degrees. So per resistive load, and this is the iron loss component of the current, vector sum of, okay, this current is known as a no load current I naught. So how do we draw the per resistive load? So current is a, okay, here V2 is equal to V2, the per resistive load the is a, here drops are neglected, that's why V2 is equal to V2. So I2 in phase with the V2, where I2 is in phase with the V2, I1 dash exactly in the opposite. So vector sum of I1 dash and I naught, okay, vector sum of, okay, these two, okay, here we can write, so it is a primary current I1. So now this angle is a theta 1. So what about the cos theta 2? Okay, theta 2 is equal to 0, and cos theta 1 is a the angle between, okay, V1 and I1, right? So now cos theta 2 is equal to 1, but cos theta the 1 is a cos theta 1. So is it a lagging power factor or leading power factor? So now it is a the lagging power factors. Okay. ओके आप कंटिन्यू वॉच करो, बस आपको लास्ट तक देखो, आपको सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा क्लास में, ये कैसे क्वेश्चन बनता है एक एक कॉन्सेप्ट में. सो मैं क्या किया था, रिवीजन करके एक ऐसे रिवीजन कर रहा हूँ, बस टॉपिक नेम एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस फ्रॉम द ईच टॉपिक्स. आई विल टेल यू द क्वेश्चन, सो क्वेश्चन कैसे बनता है ये टॉपिक में. सो आप लास्ट तक देखो, आपको a session it is a very useful for your exam, especially for the GATE 2021 students. So that point of view I am discussing all these points. Okay, right. And one more concept very important, vector diagram point of view, these are the possibility questions, and another point is a equivalent circuits. Equivalent circuit of the transformers. Okay, so in the equivalent circuit what are the possibility question, and how can we can expect how can we can expect the questions here.
So everybody knows how do we draw the equivalent circuit. So I will take, suppose, so this is a here transformer. So we have a, first let us take the two winding transformers. Okay, this is the N1 number of turns and N2 number of the turns. Suppose here the load is a connected, supply is connected to the N1 V1, and here load, for example, resistive load is a connected. This is a one load. So how do we get the equal? Yeah, one of the possibility question. So they will ask the question based on the input power factor or the input current, primary current of the transformer, that is the magnitude of the primary current, and also input power factor of, this is one of the question. So so by using the two windings, okay, one is a primary winding, another one is a secondary winding. So like this is given, suppose there is a inductive load, capacitive load, or any load, RL load, RC load. So but क्या here क्या पूछा था इधर, primary current or input power factor of the transformer. So what we have to do, so just draw the equivalent circuit refer to the primary side per two winding transformer. So suppose for two winding the transformer, so what we will do, the simply we can write, suppose here the resistance and reactance term is there, so that is the R1, okay, and the X1 parameters, and R2, okay, X2 and X2 and R2 parameters, like. So this is the applied voltage, the V1, okay, it is a I1 current, and here X2 dash and R2 dash, and this one is the I2 dash. So this is the equivalent circuit, the refer to the primary side. And next one, suppose there is a one more winding is given here. Suppose if I place another winding on the same core, so which has number of the turns N3, okay, and which is excited with a, okay, there is another load, let us take inductive load L. So then how do we get equivalent circuit here? So this is the first one, the resistance R1 and reactance X1 parameters. So we have a two secondaries. So these two secondaries, okay, by using MMF balance equation. So now that is a E1, okay, this is the, okay, some impedance, okay, whatever the impedance here there. So that is the inductance L dash. So now this is the inductance, okay, it is a L dash, and suppose resistance is also there. So that is the resistance R dash. So vector sum of this the like. So we will get one more equivalent circuit. So this is the equivalent circuit for three winding transformers. Okay, three winding transformer. And next one, suppose if any question, till now we have a questions based on the two windings and also three windings. But if question is given, you can expand this question. Suppose one more winding is mentioned on the core. One more winding is mentioned on the core. So then how do we get the primary current and also primary power factor of the transformer? So how do we answer this question? So like the first one, primary current I1, okay, applied voltage the V1. So this is the applied voltage. How many secondaries are there? Primary, this one is the secondary winding, this is also secondary winding. So which is connected to the capacitive load, and one is connected to the resistive load, other connected is connected to the inductive load. So that's why all the secondary windings, so this is the resistance, okay, capacitance, and also this is the resistance parameters, okay, induct L dash, the XL dash, the XC dash, and also resistance C dash. So now some of these currents, okay, this is the
the I1, that is the I2 dash, I3 dash and I4 dash. So here we will get, therefore I1 can is equal to, so I2 dash plus I3 dash plus the I4 dash. So this I2 dash in the sense the load component of the primary current refer to the primary side. Okay, this also load component of the primary current refer to the primary side. The load component of primary current refer to the primary side. So like this we can get, where I2 in the sense, what is the I2 value? I2 dash, the K1 and 2, the here multiplied by I2. Okay, and I3 is a, the K, it is a K1, the transformation ratio between the 1 and 3 windings multiplied by I3 dash. Okay, so 1, the like this we can, and also we can draw for any windings, the n windings are mentioned on the core, on the same core. How do we draw the equivalent circuit? Okay, okay, this is the, for example, for n windings, how do we write? See, for n windings are given on the same core, then how do we draw the equivalent circuit? Suppose we know balance MMF balance equation, so that is the primary MMF is equal to the secondary MMF. Primary MMF in the sense, so that is the N1 I1 is equal to N2 I2 plus N3 I3, the plus, okay, N3 I3 and so on, okay, n number of the turns, okay, n n I n, okay, like. So now simplify here, I1 is equal to N2 by N1, okay, and multiplied by I2, the N3 by the N1 multiplied by I3 plus so on, the plus n by N1 multiplied by In. So what about this N2 by N1? So it is a transformation ratio between the first winding and secondary winding. That's why I have written here the 1, 2 and I2, okay, N2 I2. So plus, okay, this is the K13 I3 plus so on, the K, the 1N and In. Okay, so K12 and I2, so that is equal to how much? So it is the I2 dash plus I3 dash plus, okay, so on I times per n winding transformer. So now we can write the, this is a per n winding transformer, how to get write. So this is the primary current primary current of, okay, first one is the primary current I1. So and in the secondary side, how many windings? Okay, it is a, so there is a load 1, so that is a Z impedance 1, okay, Z impedance 2, okay. So current Z2 dash, okay, right, Z, suppose the resistance here R dash, okay, and R1 dash, okay, it is a I1 dash. Similarly I2 dash, okay, here there is another resistance I have connected, R2 dash. So now this is the I3, so now the reactance XL dash, okay. So next one more I4 dash, okay, capacitance, okay, XC dash. So like this we can get the applied voltage V1. So this is also very important concept. So we can expect the question from this concept, okay. So sometimes currents and number of turns are given in the circuit. We can expect the question based on the primary current and also power factor, or sometimes resistances or loads value are mentioned on the secondary side, then the question about the primary current. There are the two possibility of the question. So one is a, the secondary currents are given, okay, secondary currents given. So now this is a, okay, yes, that's correct, it is a parallel only. So why? Because it is the MMB balance equation, that's why I am mentioned here. So how do we draw the MMF?
equivalent circuit per 3 winding transformer, 4 winding transformer. It is a very very important question in the transformer part. Okay, is that clear? Okay, is that clear? So now we will discuss about losses of the transformer. Okay, what are the possible questions from the losses of the transformer? So this is also very very important for problems point of view. I will tell you what are the problems based on the losses of the transformers. Okay, so first one we have it three majorly. We have transformer has two type of the losses. So one is a copper losses of transformer, okay, and second one is iron losses of the transformer. Okay, we have minor losses, the stray load losses and the dielectric losses. That is not, we cannot expect 2 marks question or any problems from the dielectric losses and stray load losses. But in the copper losses you can expect, and also iron losses here. So copper loss is also called I square R losses in the winding. I square R loss in case the winding. Iron losses are the two types. One is the hysteresis loss and another one is the eddy current loss. Got it? The hysteresis loss. So how do we write hysteresis loss formula here? KH, the B maximum power of 1.6, the F into V, and eddy current losses is equal to KE B maximum square, F square and the T square. Okay, hysteresis loss and eddy current loss. Okay. And I square R, first possibility of the question from the copper losses. So one is a copper losses of the transformer at any x of the load. This is the one of the question based on the copper losses. So that is copper loss of transformer at any x of the load. X of load, so that is equal to the x square into full load copper losses, where x is a fraction of the load. Suppose x is equal to 1, it is nothing but it is the fraction of load. So this x is equal to the 1 per full load condition, the x is equal to 1 by 2 for half full load condition, and x is equal to 1 by 4 for 3 by 4th full load condition, and x is equal to 1 by 4 or 3 by 4 for 3 by 4th full loaded condition. So where x is a fraction of the load. This is the one possibility of the question. So from the copper losses. And next the question here. So that is a per unit copper losses. How do we get the per unit copper loss of the copper losses of the transformers? Okay, so per unit copper losses is a actually the per unit value is equal to, okay, per unit value, so that is a actual value in some units divided by the base value should be in the same units. So this is the per generalized formula. So actual value here per unit, actual value in some units and base value should be in the same unit. How do we get per unit copper losses? So this per unit copper losses you can obtain. So this is the copper loss, okay, in copper losses, or sometimes it is also called the copper losses in ohmic copper losses divided by VA rating of the transformer. Okay, so this is equal to I2 square R02. So divide total copper losses referred to the secondary side. So divided by I2, the V2 multiplied by I2. So where I2 is a cancel out. So therefore it is equal to I2 R02 divided by E2. So it means that, so this is the per unit voltage, okay, per unit voltage drop
and also it is also per unit the resistance of the transformers. So we can say the per unit copper losses of the transformer, okay, this per unit copper losses of transformer, so that is equal to per unit resistance of the transformer and also per unit voltage drop, okay, voltage drop of the transformer. So these are all possibility of the question from the copper losses. So these are the only two questions. Sometimes we can ask the question based on the this formula. So that is a copper losses of the transformer at any x of the load. So here x full load copper losses will mention and asking about the copper losses at any x of the load. Sometimes copper losses, okay, given, and I will ask about the full load copper losses. Okay, this is a one of the possibility question from the copper losses. And second possibility question, so that is the per unit copper losses of the transformer at any x of the load, that is the per unit copper losses equal to per unit resistance and also per unit voltage drop of the transformer. And next let us discuss about, so that is a iron losses point of view. Okay, iron losses. So there are the two types of iron losses we know. So that is hysteresis loss and also eddy current loss. So total iron losses is equal to, so that is a hysteresis loss plus eddy current loss. How do we get hysteresis loss here? The where hysteresis loss is equal to some hysteresis constant and B maximum power of 1.6 the F into the V. Got it? And eddy current losses is equal to the KE B maximum square F square, okay, T square. Okay, this is the B maximum square, F square and the T square. So are you clear my point? So this is the two formulas. So total iron loss is equal to hysteresis loss. So we have a question about first possibility of the question from this concept. So that is a find out the hysteresis loss and when B maximum is constant. Suppose the B maximum, okay, maximum flux density B maximum is constant. How do we get the hysteresis loss and eddy current losses? So hysteresis loss when B maximum is a constant, so then what will happen here? Hysteresis loss directly proportional to the frequency, whereas eddy current loss directly proportional to the square of the frequency. Okay, this is, and if this is the about B maximum, eddy hysteresis loss the directly proportional to the frequency, whereas eddy current loss directly proportional to the frequency. Suppose if remove this proportionality constant, WH is equal to A into F, okay, and eddy current losses is equal to B maximum the B into F square. So therefore iron losses is equal to the AF the plus the BF square. So this is also one of the important equation to you can ask the question. So if the two cases, if the B maximum is constant and B maximum is not constant. So next one, if the B maximum is not constant, so then the what will happen in the iron losses? The hysteresis loss is, the B maximum is a not constant means it is a variable. Variable means during operation of the transformer is equal to what will happen? So during operation the B maximum directly proportional to V1 by F ratio. So therefore hysteresis loss directly proportional to the B max V1 by F power of 1.6 multiplied by F. So simplify here, hysteresis loss directly proportional to the V1 power of 1.6 the F power 0.6. So therefore here the hysteresis loss directly proportional to the V1 power of 1.6 the frequency, the inversely proportional to frequency power of 0.6. And eddy current loss, okay, this is the eddy current loss, the directly proportional, just substitute here B maximum square here, so that is equal to V1 square. Now simplify this part, okay. So iron losses
is equal to hysteresis loss plus eddy current losses. So hysteresis loss is a, so this part, suppose if remove this proportionality constant, so A into V1 power of 1.6, the universally proven 0.6, so plus B into the V1 square. So this is the iron losses of the transformer when B maximum is not constant. Okay, these are the possibility question. I will tell you all the questions. See, by keeping applied voltage constant, frequency is reduced below its rated value. What will happen in the hysteresis? What would happen is hysteresis loss and eddy current losses. Okay, and this is one question, and some theoretical question and also problems point out. If you know clearly about this question, we can answer any type of the question. Next, one other possibility of the question, by keeping applied voltage, by reducing the voltage along with the frequency such that V by F ratio the constant, then what will happen in the hysteresis loss and eddy current losses. And one more possibility question, the by keeping voltage constant, frequency is reduced below its rated value, so what will happen in the hysteresis and eddy current loss, iron loss of the transformer. Okay, हम क्या कर रहा है इधर, पहले वोल्टेज को कांस्टेंट रखा, ओके, फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया था, द क्या होगा हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉसेस. ओके, एंड सेकंड केस में, पहले केस में क्या किया था, द वोल्टेज को कांस्टेंट रखा ट्रांसफार्मर का, फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी में रिड्यूस किया था, सो देन हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉसेस को क्या होगा. एंड सेकंड केस में द वोल्टेज को कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी क्या किया था, रिड्यूस किया था, द क्या होगा हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉसेस. ओके, एंड थर्ड केस में, सो दोनों को रिड्यूस किया था, रेटेड वैल्यू से कम किया था, सो रेटेड वैल्यू से कम किया था, लेकिन द अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी रेशियो है ना, वो द ए रेशियो कांस्टेंट है, तो तभी द हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉसेस क्या होगा. So these are the three possibility of the question. So nothing to worry and nothing difficulty here. So very easy concept. So we cannot expect any question more than this concept. Okay. Any more doubt? Any more question do you want to ask? You can ask. Yes, I will discuss all the formulas and also I will discuss all the formulas and also possibility of the question based on that formula. Okay. So now we will discuss about efficiency of the transformer. Okay, I don't want to derive the formula here, so just I will tell you what by taking the formula and what are the questions. Okay, so percentage efficiency. So sometimes we have a question, order of the percentage efficiency of the transformer. So it is a 95 to 98%. The transformer has highest efficiency. Okay, highest efficiency among all electrical machine. The reason क्या है, द ट्रांसफार्मर में मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है, इसलिए क्या है, तो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी अदर मशीन से ज़्यादा रहेगा. सो ईयर एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी फार्मूला ईयर, सो परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, सो दैट इज अ बेसिक रिफ्लेक्शन इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर. Okay, it is expressed in the percentages here. So how do we write this formula, percentage efficiency of the transformer? So that is equal to E2 I2, okay, cos theta 2. Okay, so this input we can write, output is the output plus losses, right? So now this is a V2 I2 cos theta 2, okay, cos theta 2 plus the I2 square R02, the full load copper losses,
the plus okay iron losses multiplied by 100. So now we have a one term, so that is a, so this is only percentage efficiency at full load condition, okay, full load condition. So but percentage efficiency at half load condition, how do we derive that one? And percentage efficiency at 3/4 full load condition, percentage efficiency at half full load condition. So these are all possibility of the question. So generally, how do we derive the percentage efficiency of the transformer at any x of the load? So this is the percentage efficiency of the transformer, okay, transformer at any x of the load. Okay, this is the x of the load. So that is equal to, so generalized formula, suppose it is the full load current, right, I2, and if it is reduced percentage efficiency at half load condition, that means it is the reduced by 50%, and percentage efficiency at 3/4 load condition. So what it means, it is reduced by 3/4 load condition. So now this is we can write x into the s, okay, x, the s cos theta, the cos theta 2 divided by x into s cos theta 2, the s cos theta 2 plus, so here x square, the full load copper losses, the plus iron losses of the transformers. So this is the generalized formula to get the efficiency of the transformers, okay. So where x is the fraction of the load, okay, this x we can say that, so it is a fraction of the load, the s is the VA rating or, so there is a question here, so अगर आप ये s को KVA मान लो, अगर इसका है ना लॉसेस का भी KVA लेना है, अगर इसका है VA का apparent power, that is if it is in the VA, so losses should be in the VA. Suppose if it is in the KVA, the losses should be in the KV, the kilowatts. And next one, if it is in the MVA, the losses should be in the megawatts. So don't take here, suppose if I take this KVA and here is only losses in the watts, you will get a wrong answer. Very careful here. So both should be the same, either in the VA or watts or KVA and the kilowatts, okay, right. So now this is the one of the formula here. And next one, maximum efficiency conditions, there is a one more question, the condition to get the maximum efficiency, to get maximum efficiency here. How do we get condition to get maximum efficiency? So just differentiate, here is the efficiency of the transformer is a function of the two variables. So one is a power factor, the one is the I2 and the theta 2. So efficiency of the transformer is a double valued function. So double valued function means, so here it is a variable, two variables are there, either load power factor or the load current. Suppose by keeping the power factor constant, okay, by keeping power factor constant and load current is only varied, okay, only varied, then what is the condition to get the maximum efficiency? This is the one of the question. And similarly, by keeping the load current constant and power factor is only varied, so what is the condition to get the maximum efficiency of the transformer? So these are the efficiency of the transformer is a double valued function. So it has a two conditions to get the maximum efficiency. So one is by keeping the power factor constant, the frequency, this is the load current is by keeping power factor constant, load current is a varied. So then what is the condition to get the maximum efficiency? So that is the condition. So that is the first condition. So by keeping the I2 is a variable, okay, variable, and power factor is a constant. So at this condition, so condition to get the maximum efficiency, that is the copper losses, okay, copper loss, the equal to the constant loss, constant, or copper loss equal to iron losses of the transformer. And second case, so by keeping this is the
power factor, by keeping the power factor variable and the this is the power factor is a variable and load current is a constant. So then, so what is the condition to get the maximum efficiency? So that condition is a cos theta 2 is equal to 1. Okay, power factor A. So that's why we can say that the transformer is a double valued function. So it has two conditions to get the maximum efficiency. One is by keeping power factor constant and load is a variable. Then what will happen? The copper losses are equal to iron loss. So this is the copper losses are equal to iron losses, but not iron losses are equal to copper losses. Okay. So this is the one of the question. So I will tell you that question. See. Okay, all possibility questions here. First question number 1. Okay, question number 1. Good afternoon, dear. Okay, I will teach full machine course on YouTube definitely. Okay, but this is only for exclusively GATE 2021 students. So my point of view, okay, take one formula wise, okay, chapters and formulas. Based on the formula, how we can expect the question. So this is a very best thing to revise the complete subjects within the 3 or 4 hours. Okay, very good. Right. So what is the possibility of the question? One is a copper losses, okay, in this case. Okay, rating, the rating of the transformer, okay, that is the kVA rating of transformer is given. Okay, given in the any question, kVA rating, okay, kVA rating is mentioned. Okay, one possibility of the problem, and also losses are given, that is the copper losses and iron losses. Okay, and this is the losses and copper. So asking about the efficiency. Okay, what is the question? Efficiency at full load, power factor also mention here, full load, half full load, or any load. This is a one possibility of the question. And second one, sometimes two efficiencies are given. For example, percentage efficiency of the transformer, okay, at 0.8 power factor, okay, 0.8 power factor, and full load, so that is the 98%. The percentage efficiency of the transformer, okay, at the 0.8 power factor, 0.68, this is the unity power factor, the at half full load, so that is the 96%. So now by using these two data, so question is the asking about what are the iron loss and copper losses. Okay, this is the another possibility of the question. Are clear point? So losses and ratings are mentioned, and find out the full load copper losses and also the copper losses. Okay, and next one, two efficiencies are mentioned here. Okay, one case 1 efficiency of the transformer, the one case, and another case 2 is a efficiency of the transformer at unity power factor and half full load 96%. So then what about iron losses and cars? This is a one model of the problem. And next another model, suppose percentage resistance, okay, percentage reactance or percentage resistance, the percentage copper losses, percentage iron losses, okay, iron losses are here given, and asking about the percentage efficiency of the transformer. Okay, this is also. So क्या करते हैं इधर, the percentage losses को देते एग्जाम में, ओके, पेपर है ना, एक क्वेश्चन में परसेंटेज लॉसेस, परसेंटाइल आयरन लॉसेस को आयरन लॉस को दिया था, लेकिन पूछा था एक परसेंटेज एफिशिएंसी को. सो इसमें क्या है,
द दो केसेस में परसेंटेज एफिशिएंसी का दिया एट वन कंडीशन में, परसेंटेज एफिशिएंसी को और एक कंडीशन में दिया था, लेकिन पूछा क्या है द आयरन लॉसेस एंड व्हाट आर द कितने आयरन लॉसेस है, कितने कॉपर लॉसेस है। एंड और एक केस में और एक क्वेश्चन है ना, एक लॉसेस दिया था ईयर, सो देन आस्किंग अबाउट द परसेंटेज एफिशिएंसी एट पुल लोड, हाफ पुल लोड, at 3/4 pull load at any x of the load. Okay, this is also one more question. And next year percentage का, so we have a question, how do we get the percent efficiency if the losses are made, losses are given in the percentage copper losses and percent per unit values. Okay, so percentage efficiency of the transformer, so that is equal to, so percentage efficiency of the transformer is equal to, so we know that is a the x into s cos theta, the divided by x into s cos theta, the plus x square copper losses plus iron losses multiplied by 100. Okay, are all of it clear point? Okay, x into the percentage efficiency of the transformer is equal to plus into x cos theta plus into multiplied by 100. So we required the, if losses are given in the per unit values, then how do we find out percentage efficiency of the transformer? So therefore percentage efficiency of the transformer, okay, efficiency of transformer, so that is equal to x, this value the x here, so just we have taken divide and multiplied, so this is the x cos theta, the divided by x cos theta, so the plus the x square copper losses divided by rating of the transformer, iron losses divided by rating of the transformer. So what will happen, copper losses in the watts divided by VA rating, so that here percentage efficiency of the transformer the is equal to x cos theta, the divided by x cos theta, the plus x square, so this is the per unit copper losses, okay, plus the per unit iron losses of the transformer into 100. So this is a one possibility of the questions. Okay, and next another possibility, okay, suppose one more question is a, in this case percentage efficiency of the transformer, percentage efficiency of transformer is equal to 98%, percent efficiency of transformer 98% at power factor, the at 0.8 power factor lagging. Okay, lagging. So now percentage efficiency of the transformer, okay, at the 0.8 power factor leading, okay, leading here. So options are mentioned, suppose option A, so that is a 98%, okay, and option B the 96%, and option C 99%, and option D 100%. Okay, like so this is the one set of the questions. Okay, I'll keep in mind the if the transformer has the efficiency of 98% at 0.8 power factor lagging, so then the efficiency of the transformer at 0.8 power factor lead. Okay, so now anyone can answer this question? Anyone can answer this question? Please mention in the comment box. It's a very beautiful question. I will explain very clear all the cases. Okay, 98%, 96%, 99% and 100%. Option here, this is a 98%. So that is the, what is the answer for this question? Sir, is there any relation between the number of turns and no load current and full load current of the transformer? Option B is not correct. Option B is not correct. Then
try another way. Efficiency of the transformer is a practically efficiency of in this case theoretically efficiency of the transformer is independent of the nature of the power factors. Okay, so that's why the at 0.8 power factor lagging efficiency of the transformer is a 98%. So now at 0.8 power factor leading efficiency of the transformer is also 98%. But there is a same question. So if the options are given like option A 98%, option B the 98.2%, and option C 97.8%, and option C, so that is a 100%. Like suppose if options given like this, that is the difficulty. Okay, efficiency of the transformer is a independent of the nature of the power factor, but it is the only theoretical part, but practically it depends on the magnitude also, and magnitude as well as a nature of the power factor little bit. So that part is a this one is a difficult one. So now in this case we need a concept to answer this question. Okay, in this second case anyone can answer, so that's correct, 98% is the correct. But what about the second? Options are given like this. Okay, so I will tell you. So this part, if options are mentioned like this, then what is the correct answer? So we know that per lagging power factor, okay, lagging power factor, so what will happen? Theta 1 is a greater than the theta 2. I already mentioned this point. The primary power factor is a greater than the secondary power factor angle. So let us take cos theta 1 is a less than the cos theta 2. Okay, cos theta 2, and let us take both sides. The voltage V1, the transformer is a constant power device. So V1 cos theta 1 less than, so V2 cos theta 2. Okay, cos opponent power is the same. So by using this, what will happen? The input power little bit less than the output power for lagging power factors. Okay, so therefore, okay, in this case, so what is the percentage efficiency in this? The percentage efficiency is equal to ratio of the output power divided by input power multiplied by 100. So now in this, the output power is a output power the little bit more, okay, little bit more as compared to the input. So that's why here this is the percentage efficiency, the in this case the little bit high, so that is the 98.2%. This is the one way to explain this question, and also we can explain another way also. So another way also we can answer this question by using the flux concept. Okay, clear point? So that what is the answer for this question here? So this is the 98% to not 97.2, 98% to 2. It's okay. So are little bit greater than the 98% per lagging power factors. So another way also we can answer this question. See here, all of you. So we have a 3 fluxes. One is a primary flux pi 1 and secondary flux pi 2 and also pi 1 dash. Okay, load component of the primary flux. So this primary flux, okay, and it is also called the mutual flux of the transformer, and this is the secondary flux or load flux of the transformer, right? And this is the load component of
load component of the primary flux of transformers. All of it clear? Fine. So the primary flux, the secondary flux, and also load component of the primary flux. So in case of okay here, these two fluxes are actually what will happen, these two fluxes are equal and opposite, okay, nullify each other, okay, दोनों oppose करता है, equal है लेकिन oppose है, so that's why what will happen, cancel each other, the transformer is treated as a constant flux device. So but okay, in this case here these two fluxes are equal and opposite. So when transformer, suppose we have a transformer, so we have transformer windings, okay, this is the primary winding of transformer excited with the supply AC, okay, and this one is a secondary winding of the transformer excited with the inductive load, okay. We already studied till now only operation of the transformer under loaded condition, but not specify particularly operation of the transformer with inductive load, operation of the transformer with capacitive load, operation of the transformer with resistive load. So it's based on this question here, this concept only. Suppose if it is an inductive load, what will happen? So initially under loaded condition only one flux is there, but under no load condition. So whenever load is connected, it draws some extra amount of the current from the source. So that's we call, okay, we call I1 dash amount of the current. So here there is a what is the nature of this inductive load? So it absorbs the active power, okay, and also absorbs the reactive powers, okay, Q power, the 2 1. So in order to supply the active power from the source, it draws some amount of the current. So that current is the load component of the primary current. The similar way, in order to supply the reactive component of the current, reactive component of power to the load, it draws some extra amount of the current. So therefore, due to which what will happen, so pi 1 dash, okay, so pi 1 dash, the place, okay, pi 1, the initially with we neglect this point, pi 1 dash and pi 2, pi 1 dash, and this is the with respect to only active power. So what will happen? So this pi 1 dash, okay, the pi 1 dash, the equal and opposite. But with respect to this, so this pi 1 dash, so pi 1 dash plus pi 1 double dash, so this is the net power, the flux is greater than here. So now this is the phi 1 net is the little bit greater than the pi 2. So for example, it is the 101% and this is the 100%. So that means 100% of the pi 1 dash opposes the 100% of pi 2 to satisfy the Lenz's law. The remaining 1%, so then what will happen? 1% of pi 1, the in phase with the pi 1 dash in phase with the pi 1. So due to which here the net flux in the machine, the net flux will be increases, the net flux increases, the EMF will be increased. When EMF increases, so increased in the EMF increases the efficiency of the transformer. So very little bit, okay, little bit here. So that's why we can say that here 98.2%, okay. Suppose exactly operation of the transformer. So if any question given, if the transformer efficiency at leading power factor, so options are given, so depends upon the option we have to select it. So here for lagging power factor, it is a efficiency of the transformer is a practically little bit greater than, for leading power factor it is a practically it is little bit less than. So that's why I have already mentioned, theoretically efficiency of the transformer is the independent of the nature of the power factor, but practically efficiency of the transformer depends on the nature of the power factor also, okay. Is that clear? Like this we have to answer this question, very important question, okay. This is our question.
Okay, we can answer by using the two methods. Very good. Okay, so now let us discuss about voltage regulation point of view. Okay. So let us discuss about the voltage regulation point of view. What are the formulas to get the voltage regulation, and also what are the possible questions from the voltage regulation of the transformers. So we know that it is a change in the secondary terminal voltage from the no load to the full load. So how do we get voltage regulation? The percentage voltage regulation of the transformer, okay, percentage the voltage regulation of the transformer, that is equal to the VNL minus the V full load. So divided by, okay, this is the VNL, the multiplied by 100. So order of the voltage regulation, practically it is the ideally, so order of voltage regulation, it is equal to 0%, and practically order of the voltage regulation in the transformer, so that is a 5 to 10%. Okay, fine. So that's why we have to take voltage regulation, okay, down. We have a two regulations, voltage regulation, the up, voltage regulation down. So if it is expressed in the percentage fraction of the no loaded voltage, so that is the voltage regulation down. Suppose if it is expressed in the percentage fraction of the full loaded voltage, so that type of voltage regulation is treated as a voltage regulation up. So in case of the rotating electrical machine, we have considered as a voltage regulation up. But in the starting electrical machine, okay, without any moving parts, so we have taken as the voltage regulation down. So this is the basic formula to get the voltage regulation. So next one from this formula, and another one is a the percentage voltage regulation. Okay, this is the another one, and percentage voltage regulation of transformer, the at any x of the load, okay, x of the load, so that is equal to, okay, it is a x into the per unit resistance or percentage, okay, this is equal to percentage resistance the into cos theta 2 the plus or minus the percentage x reactance the sin theta 2. Okay, this is the percentage voltage regulation of the transformer at any x of the load. Okay, so where x is a fraction of the load, okay, this x we can say that, so it is a fraction of the load, fraction of the load, and percentage resistance. Okay, how do we get percentage resistance value? So that is the I2 R2 0, this is R02 divided by the V2. So next percentage reactance, so that is equal to I2 X02 divided by the E2. So there is a conditions also there, the condition to get the 0 voltage regulation, the next one condition to get the voltage regulation, and also power factors cos theta SC, the power factor here, so that is equal to always the percentage R divided by percentage the X, percentage impedance. So these three formulas are very important to solve the questions based on voltage regulation of the transformer. So any question, percentage or percentage X are given, so asking about the voltage regulation, that is the one formation of the question. Another one is a, so sometimes with short circuit test data we can ask the question based on this concept. Okay, so these are the all possibility questions, voltage regulation of the transformer. And next we will discuss about the three phase transformer point of view. ब्रेक लेना है क्या?
कंटिन्यूएशन ओके कितना टाइम हो ओके टाइम है ना okay. So we will discuss about what are the possible questions from the three phase transformers. So this is also okay, listen. Three phase transformer are basically two types. One is a bank of three single phase transformer and second one is a single unit of the three phase transformers. Okay. Based on the construction point of view, so we have classified into the three types. One is the bank of three single phase transformers, okay, transformers, and second one is a single unit of the three phase transformers, got it. So in bank of three phase transformer, so there are the three single phase transformers are there, and second one in single unit of three phase transformer a single unit of structure is designed. So that is how do we design this single unit structure. So one is the three limbed core type three phase transformer, okay, core type three phase transformer, and next one is a the five limbed shell type, okay, five limbed the shell type the three phase transformers. There are the two types, the three limbed core type three phase transformer and also five limbed shell type the three phase transformers, okay. And in this case comparisons, that is the only theoretical part, but EMF equations point of view very important. So here EMF is equal to E1, the E1 per phase, okay, it is equal to the 4.44 5 maximum the F, okay, tons per phase, okay, the tons per phase one. The similarly E2 per phase is equal to, so 4.44 5 maximum the F tons per phase, okay. We can take here N1 tons per N1 per phase and N2 number of the tons per phase. So EMF equation of the three phase transformer similar to the EMF equation of the single phase transformer. So but somewhat difficult here to answer the questions. So see here first question number 1. Okay, so we have a two turns ratios, okay, we have a two. So one is the phase turns ratio of the three phase transformer and second one is a line turns ratio of the three phase transformer. So that is a first we will discuss about phase the turns ratio of three phase transformer. So phase turns ratio of three phase transformer is it is denoted by A. So that is equal to N1 phase divided by N2 phase. So it is equal to E1 phase divided by E2 phase, EMF induced in the print. And what about the line turns ratio? So second one is a line the turns ratio, okay, of three phase transformer. So line turns ratio in the sense, so it is the V1L divided by the V2L. So that is equal to, so this V1L divided by V2L. Suppose in the any question there is a question, अगर question में turns ratio गया था, simply the which is not mentioned about phase turns ratio or line turns ratio, which one we have to take? Is it a line turns ratio or phase turns ratio? Can you answer this? अगर क्वेश्चन में टर्न्स रेशियो ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू द 10, नाउ विच वन वी हैव टू कंसीडर, द इज इट ए फेज और लाइन? I will take one more session based on the question. This is the only part, the revision. Then we will discuss the questions very clear tomorrow or day after tomorrow. Phase turns ratio, phase, no, sorry, someone given line, Sandeep, phase, okay,
listen, unless otherwise specially mentioned, turns ratio of the turns ratio of three phase transformer in the sense phase turns ratio only. Okay, so don't confuse this one. It is a very important note to answer the question or to solve the problems on three phase transformer. So turns ratio in the sense, okay, this is the turns ratio. So it means that always the phase turns ratio of the transformer, but not the line turns ratio. Okay, and this is the one note we have to consider, right. So next, another is a types of three phase transformers. So basically there are the three types of the three phase transformer. Connections point of view, so one is the delta three phase transformer, and second one star three phase transformer, and third one delta star three phase transformer. Okay, and fourth one the star delta three phase transformers. Okay, and fifth one is a special connection, that is the open delta three phase transformers here. Okay, so these are the we have to discuss about all these connections one by one. So one is the delta, the star delta star delta, and also open delta three phase transformer. So in delta, okay, in any transformer connection, so what are the possibility question? Primary voltage, okay, here V1L or okay E1L and I1L, okay, will given in the question. Okay, the E1L and I1L mentioned in the question, and asking about the V2L and I2L. This is the one formation of the question. Okay, and second formation of the question, okay, here V2L secondary line voltage and the secondary line current mentioned in the question will ask about the primary line voltage, okay, and secondary the primary line current. Okay, these are the another possibility of the question. Okay, and next case, so all primary side parameters, okay, primary side parameters question में देता है, और also secondary side parameters भी देते हैं. So then the asking about the turns ratio, okay, concentrate. So it is a very important turns ratio of the three phase transformers. Okay, so these are the all possibility question. And one more question about the vector group. Okay, vector group, that is a, so what is the vector groups here? There are the three vector groups. One is a the 0 degree connection, okay, 180 degree connection, and also the plus or minus 30 degree connection, and fourth one is a 180 degree plus or minus 30 degree connections. Okay, so this 0 degree connection is a possible by using the delta three phase transformer or the star three phase transformers, and 180 degree connection also possible by using delta three phase or the star the three phase transformers, and plus or minus 30 degree by using, so yeah, this delta star or the star delta three phase transformer. Okay, and 180 degree plus or minus 30, this is a possible by using the delta star or star delta three phase transformer. Okay, so this is about. And one more possibility of the question based on the three phase transformer, so that is the question about the per unit impedance of the three phase transformer. So these are all possibility of the question. So one is a the voltage, the equations, current equations,
voltage equations, current equation and power equation. Another one is on about the turns ratio, and one more is a vector group analysis of the three-phase transformer, and another one is a per unit impedance of the three-phase transformers. Okay, are you got it? So this is the about, we will discuss all the question formation one by one. So but I'm explaining complete revision, like, so there are the three, basically four types: delta delta, star star, delta star, star delta, and also open delta connection. So one side, okay, एक क्वेश्चन में क्या करते हैं, here the voltage and current values को क्वेश्चन में मेंशन करते, और द पूछा था वोल्टेज एंड करंट वैल्यू सेकेंडरी साइड का, एंड द प्राइमरी साइड का वोल्टेज करंट देते हैं, और पूछा था इधर सेकेंडरी साइड का वोल्टेज एंड करंट. एंड नेक्स्ट वन, वोल्टेज एंड करंट दोनों का, द दोनों तरफ आप ट्रांसफार्मर को, यार द प्राइमरी साइड वोल्टेज एंड सेकेंडरी साइड वोल्टेज. देन पूछा था क्या है, the turns ratio. Another one is a vector groups. So this is a very important question. So how do we find out vector groups? But possibility connection is there, the 0 degree connection, 180 degree connection, plus or minus 30 degree connection, and 180 degree connection. And one more possibility question, that is the parallel operation. Parallel operations point of parallel operation of the single phase transformer, parallel operation of the three phase transformers part. Okay. So per delta delta connections, okay, this is the, let us discuss the first one, delta delta, the three phase transformer. Okay, three phase transformer. So how do we get voltage and current equations here? Suppose here let V1 is a supply, the V1 is a, let V is a supply voltage, assume as V is a supply voltage, okay, in case of the delta delta three phase transformer. So primary windings are connected in the delta, and also secondary windings are connected in the delta. So V is a supply voltage. So primary line voltage, how do we get primary line voltage? So V1L is equal to the V, and secondary line, the primary phase voltage V1 phase is equal to, so V1L. What is the reason? These two are connected in the delta, so that is equal to V, and V2 phase is equal to, so this is a, what is about V2 phase? V1 phase divided by A. So where A is a turns ratio, so now this is equal to V by A. And next one, V2L is equal to V2L. How do we get V2L? So V2L is equal to V1 phase, so both are connected in the delta, so that is a V2 phase. So in this case the V2 phase value also the V by A, okay, V by A. So now this is a, what about the phase turns ratio here? Phase turns ratio, so now it is equal to, so V2 phase, the V1 phase divided by the V2 phase. The V1 phase is equal to V, and this is the V2 phase is equal to V by A. So that is A. And what about the line turns ratio? Okay, turns ratio of the transformer. So that is a V1L divided by the V2L. So V1L is a V, and V2L is equal to V by A. So here, so what we conclude? So in case of the delta delta three phase transformer, phase turns ratio equal to line turns ratio. But suppose if you want to find out the KVA rating or KVA rating of the transformer, so how do we get KVA rating? Always for any three phase transformer, the root 3 times of the V2L, I2L, or in terms of the primary, the root 3L. Okay, this is the root 3 V1L, the V1L and I1L. Okay, so KVA rating of three phase transformer, any transformer connection. Suppose the same question, the star star or delta star. Another example I am taking. This one is a delta star question, the delta star point of view. Okay, so delta star three phase transformer connection. So how do we get all the voltage and current equations? Okay, so here similarly you can get current also. For delta delta transformer, here I is a supply current. So now this supply current, okay, and I1 primary line current, I1L is equal to I. The I1 phase also equal to, what will happen? It is a connected in the delta.
So what is the relation here? I1 pace is equal to, so in case of the delta connection, I1 L divided by root 3. So that is the I by root 3, right? And I2 pace is equal to, so I2 pace the A times of the I1 pace. So this is the A times of I1 pace means AI by the root 3. So I2L is equal to, so this one is a AI by, okay, it is a connection is a delta, the root 3 times of AI by root 3. So root 3 will cancelled out, it is equal to AI. So it is about current equation and voltage equation per delta. So another example you can find out, no need to buy at the formulas, just you can derive easily. Suppose here the for delta, so initially the V is a supply voltage, so primary line voltage V1L is equal to, so what will happen? So V1L is equal to V and V2L is equal to, okay, sorry, it is not V2L. So this is the V1 pace. So here V1 pace is equal to, it is a connection is a delta, that's why V1L, so it is equal to V. So this is a V2 pace is equal to V1 pace divided by A. So this V1 pace is a V by A and V2L is equal to, which connection it is in the secondary side? Primary is connected in the delta, whereas secondary is connected in the star. So that's why it is a root 3 times of the V by A. Okay, V by A. Suppose in case of, how do we get current equation? So let the supply current, I is a supply current. So now V1L is equal, the I1L is equal to I amount of the current, and I12, this is the I1 pace is equal to, so I by the root 3. So next one, I2 pace is equal to AI by root 3. So next one, this is a AI by root 3 and I2L is equal to AI by root 3. So now here we can verify pace turns ratio, line turns ratio, KVA rating of transformer and everything, okay, like this. But there is a conclusion here. So in case of delta 3 phase, sometimes we have a questions, one more question point of view, very important. So that is a, which transformer produce highest secondary voltage, okay, which transformer connection produce lowest secondary terminal voltage. And one more possibility question, so which transformer gives lowest secondary current, which transformer produces the highest secondary current or load current. So this is also one more possibility current. And like turns ratios you can get, okay, like this we will discuss all these condition. Suppose the delta, I will tell you all, see here. So type of the connection, so first connection is a delta 3 phase transformer, okay, this is the type of connection. And second one, the in the type of the connections, okay, and V2L line voltage, the V2L, okay, and suppose if turns ratio A is equal to 1, then what is the V2L? So next, and I2L, and if A is equal to turns ratio is equal to 1. So then what are the applications or any remarks about all these connections, okay? So see here, let us take first connection. First one is a delta 3 phase ट्रांसफार्मर को मैं ले लिया था. So इस ट्रांसफार्मर का the secondary line voltage formula क्या है? The how do we get the secondary line voltage? So where E2L is equal to, so V by A, right? Suppose A is equal to 1 and here supply voltage is equal to 100 volts, okay, per example. So now what about this value? Okay, V2L is equal to, so this is equal to 100 volts, okay, and here also we have taken 100 amps of the current, okay. What is the formula to get this I2L? So A into I, and A is equal to,
Suppose supply current Is is equal to 100 amps of the current. So then how do we get this? Is a I2L, so it is equal to 100 amps. Similarly, let us take one more connection. So that is a star-star three-phase transformer connection. So in case of star-star three-phase transformer connection, what is the formula here to get the secondary line voltage? So that is a V by A, okay, V by A. And next one, what about the current formula? Okay, that is equal to AI. So in case of delta star three-phase transformer, so what is the formula? Root 3 times of V by A. And in case of the star delta three-phase transformer, so what is the formula here? The V by the root 3 times of the A. And by using this example point we have taken. So now this is the example point we have taken. So here is a V2L is equal to 100 volts. In this condition also, the V2L is equal to the root 3 into 100 volts. Okay, this one is the V2L is equal to the 100 volts divided by the root 3. So in current point of view, this one is the AI by root 3. Okay, here the AI root 3 times of the AI. So now let's take this example, calculate. The AI is equal to I2L is equal to how much? 100 amps of the current, and I2L is equal to the I2L. So it is equal to 100 divided by the root 3, and this is a I2L is equal to 100 the root 3 into multiplied by 100. Okay, this one is a. So now compare the which transformer connection gives highest secondary terminal voltage among all. Okay, which one is a produces highest secondary terminal voltage? मैं बता दूंगा डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रांसफार्मर का, एप्लीकेशंस थ्री फेज ट्रांसफार्मर का पूरा एप्लीकेशन मैं बता दूंगा. पहले मेरा क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या विच कनेक्शन गिव्स द हाईएस्ट सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज? नहीं Okay, which one? Delta star, delta star, delta star, star delta, highest voltage, star delta star, highest current, star delta. Very good. Okay, very good, very good. Okay, see here, by using the delta, we can produce the voltage of the 100 volts, 100%, and it is the 100%. So this is the one that is equal to 173.373 the volts. Okay, 57.7. Okay, so 1 by root 3 means that is equal to 57.7. Okay, like here it can produce extra voltage. How much? 73.3% extra highest voltage. Here is a less voltage. So here we can say that, so delta star three phase transformer gives highest secondary terminal voltage, so that it is the best suitable for the step up transformer used as a step up transformer application. So exactly at what point we need a step up transformer?
So exactly we need a transformer at the beginning end of the transmission system. But here step down, this is a at beginning the end of the transmission system. So a clear point. So that means actually in India the 11 kV generated voltage power is generated at 11 kV voltage. So initially it is a step up to the 400 kV or 220 kV. So that's why. So delta star 3-phase transformer produces highest secondary terminal voltage at same turns ratio and voltage rating. So that it is the best suitable for step up voltage transformer at the beginning end of the applications. And coming to the star delta 3-phase transformer. So this star delta 3-phase transformer that gives lowest secondary terminal voltage among all 3-phase transformer connection. So which one is this is used as the step down, step down 3-phase transformer, step down 3-phase transformer. So at the finishing end of the transmission system, but not in the distribution system. Why? Because here, so your secondary delta connection cannot provide the neutral point to supply the single phase loads. But in that point of view, so delta star 3-phase transformer only use, delta 3-phase transformer is used in the distribution system. So to supply the single phase load satisfactory. Why? Because the secondary star connection produces provides the neutral point to supply the single phase loads. And coming to the here, so in this case delta the 3-phase transformer. So what about turns ratio? So in order to design the delta 3-phase transformer, the insulation requirement is a more, insulation requirement is a more, and copper requirement is the less. So in order to design the star 3-phase transformer, so copper requirement is a more and insulation requirement is a less. So what is the reason? The copper is a copper wire designed based on the current carrying capacitor. So in case of the star 3-phase transformer, the primary star connection in case of any star transformer, the phase currents are equal to the line currents. So that's why very high amount of the copper is required to design the star 3-phase transformer. But in case of delta 3-phase transformer, so the insulation requirement is a more, here insulation requirement is a more, and whereas copper requirement is a less. But application point of view, economically, so wherever requirement is a more, where suppose, so just assume here, this is the insulation requirement is a more, and this one is the insulation copper requirement is a more. So if this transformer used for high voltage application, what will happen? Very more amount of the insulation is required. So that cost of the designing cost of the transformer will be increased. So which is desirable? No. And similarly, suppose if the copper requirement is a more, the insulation requirement is a less. Suppose if this transformer is used for high current application, so what will happen? So the designing cost of the transformer will be increases. So are clear point? So that in order to reduce the cost, wherever design wherever requirement is a more, so used for low rating application. For example, copper requirement is a more, so used for less current application. So for example, the insulation requirement is a more, so used for the low voltage requirement application. So that's the reason. So this transformer is used for, in this case. So the delta 3-phase transformer used for this is a low voltage and high current applications, high current application. But in case of star 3-phase transformer, so this is the used for high voltage and low current. So this is the low current applications here. Applications point of view, the delta 3-phase transformer used for low voltage and high current, and star 3-phase transformer used for high voltage and low current. And next one, delta star 3-phase transformer used as a step up transformer, and it is the best suitable for the step up transformer, and star delta 3-phase transformer is the best suitable for step down transformers. But in the distribution system, the only this which is the preferable here, delta star 3-phase transformer.
And what about star delta? There is a one more, the point we have to be discussed. So that is the shape of the induced EMF in star delta 3-phase transformer is not sinusoidal nature. What is the reason? This star connection doesn't provide the closed path to flow the third harmonic nature of the current. So that's why shape of the magnetizing current is a non-sinusoidal, shape of the flux is a non-sinusoidal nature to satisfy the non-linearities of the transformer core. As a flux is a non-sinusoidal nature, therefore shape of induced EMF will become non-sinusoidal. Then how do we rectify this problem? So by this can be rectified, or this can be overcome by using one more transform, one more winding. So that is a call the tertiary winding. Okay, tertiary the winding. So which is the placed on the same core but connected in the delta. Okay, which is placed on the same core but connected in the delta only. So this delta connection provide the closed path within the phases to flow the third harmonic nature of the current. So that's why what will happen? So shape of the magnetizing, there is a one more questions here. So shape of, okay, this is a questions like the shape of, okay, induced EMF, okay, induced EMF in the delta 3-phase transformer, the in the star 3-phase transformer, the in case of the delta star 3-phase transformer, and also the star delta 3-phase transformer. The primary delta connection provide the closed path within the phases to flow the third harmonic nature of the current. So that's why here the sinusoidal nature. Here this one is a non-sinusoidal, but if it is a provide the delta, another the tertiary winding, then you can get the sinusoidal nature. And delta connection, any one of the delta provide the closed path within the phases to flow the third harmonic nature of the current. So that shape of induced EMF is a sinusoidal nature of the induced EMF. Okay. So next another part, the parallel, okay, parallel operation of the transformers. Okay, so we know the conditions. First one is the polarity of the two transformers remain same. Okay, one, the first condition one is okay, polarity of the two transformers should be the same, and second one, the phase sequence, okay, phase frequency of the transformer same, and also the phase displacement, okay, this is the phase displacement between the two transformer must be equal to the 0. Okay, phase displacement between the two transformer must be equal to the 0. So this the condition is a very important, we can expect the question from this condition. And these are the desirable, the another one, the voltage, okay, voltage rating of the two transformer. Okay, the desirable conditions, voltage rating of the two transformers should be the same. And next the another, the one is this is a kVA, the shared by the transformer directly proportional to, so this is the its capacity. Okay, that means how do we get this one? The here, in order to get the kVA shared by the transformers, so directly proportional to the its a rating. That means high kVA rating of the transformer. Okay, high kVA rating of transformer will share high amount of the load power. Low kVA rating of the transformer will share low amount of the power. But how can we achieve that point? So that is the per unit impedance. This is the ohmic, the per unit impedance of the two transformers. So per unit impedance of the transformer A, per unit impedance of the transformer B, that should be the same, or otherwise the ohmic impedance is inversely proportional to its kVA rating. So any one of the conditions should be satisfied to get kVA directly proportional to its rating. Okay, and next one more condition, so that is the X by R ratios of the two transformers. Okay, two transformers should be the same. So if not, then what will happen? So if X by R ratios of the two transformers should be same to operate the transformers at one power factor. So for example, so load power factor is equal to the load power factors, that is equal to 0.8 power factor lagging. So transformer A, okay, this is the transformer A.
So it has a transformer A, so which has the X by R ratios of the transformer A. So next one, transformer B, the which has the X by R ratios of the transformer B values here. Suppose X by R ratios of the transformer A is equal to X by R ratios of the transformer B. So then what will happen, see, take the tan inverse both sides, the tan inverse of X by R ratios of the transformer A equal to the tan inverse of X by R ratios of the transformer B. So now this part, so here is a, you can take theta A, okay, this one is a theta A is equal to theta B. So now take cos function both sides, cos theta A is equal to cos theta B. So all of you got it. So cos theta A is equal to cos theta B. So in this case, okay, what it means here? So in the power factor of the transformer A is equal to power factor of the transformer. Suppose, okay, in the reverse case, then what will happen? So X by R ratios of the transformer A, the greater than the X by R ratios of the transformer B. Okay. So X by R ratio of the transformer A greater than the X by R ratios of the transformer B. So this is equal to the take tan inverse on both sides, tan inverse of X by R ratios of the transformer A is the greater than X by R ratios of the transformer B. Okay. So this is a theta A greater than the theta B. So therefore cos theta A less than the cos theta B. So what we conclude from this equation, so we can take, so what we conclude from these two equations here, so if X by R ratios of the two transformers are equal, then so two transformer will operate at one power factors, at that power factor is called, so that is a load power factors. So if X by R ratios are not equal, so then what will happen? The transformer which has IX by R ratio will be operated at low power factor. Okay, that is the inferior power factor of the load. So if the transformer which has the operate at superior power factor of the load. Okay, so that's why we can say that. So this is not a desirable condition. The desirable is what? The X by R ratios of the two transformers should be equal. Okay, this is about. And one more point, this is the, we can expect the question from here. Okay, phase displacement of the three phase transform, the base displacement of the two transformers should be equal. So how do we expect, how do we get question based on that thing? See, listen. Okay. So first one, we have a connection. Okay, this is a delta delta. Okay, this is a transformer A, and this one is the transformer B. Okay. So now let us discuss whether parallel phase displacement, and next one, whether parallel operation is a possible or not. So transformer A connection, so that is a, the transformer A connection, it is a delta delta three phase transformer. Transformer B also delta delta three phase transformer. Now what about the phase displacement here? So it is a 0 degree, already mentioned, delta delta means it is belongs to 0 degree group. So 0 degree connection minus 0 degree, that is equal to 0 degree connection. So now it is equal to, that's why parallel operation is a possible by using this trans. And next one, the delta delta three phase transformer and star star. The transformer B is a delta delta connection, transformer B is a star star three phase transformer connection. What is the phase displacement? 0 degree connection minus 0 degree, that is equal to 0 degree connection. So now the parallel operation is a possible. So similarly, the delta star three phase transformer, and this is the delta star, and this is the delta delta three phase transformer. So delta star three phase transformer is nothing but plus or minus 30 degree group. So now it is a minus 0, it is equal to 30 degrees, the minus plus or minus 30 degree group. So it means that there is a phase displacement is not equal to 0. So that by using these two transformer cannot be connected in the parallel. And next one, so it is a star star three phase transformer and delta delta. So this is the 0 degree connection, delta star is a plus or minus 30 degree connection. So this is the plus or minus 30 degree. So parallel operation is not possible. Similar way, so there is a one more connection like the delta
star 3-phase transformer. So now star delta 3-phase transformer. So if delta star, for example, if the delta star is a plus 30-degree connection and star, then the star delta connection, so that is a minus 30-degree connection. There is a possibility is there, if delta star is a plus 30 degrees, if interchange without interchange outer terminals, if only connections are interchanged, then it will become minus 30 degrees. So that's why here plus 30 degrees, the plus 30 degrees, minus 30 degrees, minus of the minus 30 degrees here. So minus 30 degrees, so that it is equal to 60 degrees. So now it is also not possible. Suppose here delta star, okay, this is also delta star. So then what will happen here? Okay, this is equal to plus 30 degrees minus the minus plus 30 degrees. So it is equal to 0. Okay. So one more connection. So dy1, okay, dy1 and dy11. dy1 means it is a capital D and capital D here. Primary windings are mentioned with the primary winding connection is mentioned with the capital letters. The secondary winding connections are mentioned with the small letters. So dy1 is the dy1 and dy11. So dy1 in the sense, okay, dy1. So 0, okay, 0 here, the plus 30 degrees. Okay, this one is the 0, the minus 30 degrees. So now this is equal to how much? Plus 30 degrees and minus 30 degrees. So it is equal to 60-degree connection. So like this we can answer. So this is a possible and this connection is not possible. Okay. So this is a one of the question based on the parallel operation connection, especially in the phase displacement point of view. Okay. Okay, is that clear, all of you? So next, problems point of view, there is a very important. Okay, so problem point of view, see problems on parallel operation. Okay, there are the two types of the problems I will tell you. So one is a transformer A point of view. There is a two transformers, transformer A. In this case, here the rating of the transformer A is given and also impedance of the transformer A, which is mentioned. And secondly, the transformer B, okay, transformer B. For transformer B, this is the SB is a kVA rating of the transformer B and this is the impedance of the transformer B values here. So now the question is a kVA shared by. So for example, the load kVA, the load power or sometimes the load power, so which is mentioned in the kilowatts or kVA, okay, mentioned in the kilowatt. So if mentioned in the kilowatts, they will also mention about the power factors. So suppose if we want to get kVA, so how do we get convert into the kVA? So that is equal to kilowatts, okay, divided by power factor. Okay, this is the load kVA is equal to the load kilowatts divided by given power factors. So this is the data which already mentioned in the question. Okay. Now what about the question here? The load shared by, okay, this is the load, the shared by the two transformers, the load shared by the two transformers, the each. So that means the load shared by the transformer A, load shared by the transformer B. So this is the one problematic, but some variations are there. Sometimes the ZA, ZB are given in the per unit, in the ohmic values, or in the per unit, in the ohmic value or per unit values. Now similarly here also, which is given in the per unit value or the ohmic values. Okay, this is a very important one. So how do we get? We know that the kVA or the kVA shared by the transformer. Okay, kVA shared by or load shared by the kVA shared by the transformer A. So what is the formula here? So that is equal to load kVA
the into, okay, just like apply, just remember the current division principles, okay. So just apply the current division principle here. So transformer A, so that's the total load KVA. So it is the impedance of the transformer B, so that is the ZA plus the ZB values. Now similarly the KVA shared by the transformer B, okay, transformer B, so that is equal to load KVA, okay, that is the total power. So this is the multiplied by the ZA by ZA plus the ZB value. But there is a only one thing. So in the in any problem or in any question, okay, in the any question, okay, got it. So in the any question, in this case the ZA and ZB, okay, अगर ZA ZB यूनिट्स में दिया था ना तभी क्या करेंगे. सो अगर ZA ZB पर यूनिट में है तो क्या करेंगे, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर ZA and ZB sometimes given in the ohms, okay, given in the ohm, and the ZA and ZB, okay, the ZA and ZB are given in the ohm per unit values. There are the two variations of the question. So if ZA ZB given in the per unit values, so you don't want to do anything, just substitute all the given values in these formulas, okay. But if a ZA ZB are given in the per unit values, so don't substitute directly into the formula, there is some modifications are required. So suppose the ZA, the per unit is equal to, so 10, the this is equal to 1 per unit value, and ZB is equal to 2 per unit value. So this is the ZA is a per unit value corresponding to base value of the transformer A. So ZB is a per unit value corresponding to base value of the transformer B. All of it clear point. So ZA is a the per unit value corresponding to the transformer A, and ZB is the per unit value corresponding to the transformer B, okay. So that we cannot substitute the directly. So that's why what we have to do here, so take new per unit value, that is a common base value, then the convert into the new per unit values, after that you will get. So how do we convert here? Suppose in this case we have to convert the new per unit. So in the here the ZA per unit is equal to, so let us consider the new base value, new base KVA, so that is equal to the KVA rating of transformer A, or you can take KVA rating of the transformer B also, there is no problem at all. But how do we get new per unit value? So ZA per unit new is equal to, so ZA per unit volt, okay, old value multiplied by, so this is the KVA, the new KVA new divided by KVA volt, okay, KVA volt, and ZBA the new ZB new per unit values, okay, new per unit values, the is equal to ZB old per unit values, the into KVA new the divided by KVA old values here, okay. This the new per unit value in the sense the new base value, okay, new. So this is a KVA of the transformer A volt and KVA of the transformer B volt. So like this, after getting this new per unit value, substitute the in same formula. After that, so then you can substitute directly KVA shared by the transformer A is equal to the here this is the KVA rating load KVA, okay, load KVA the into the impedance of the transformer B by impedance of the transformer A, impedance of the transformer B. So now KVA rating shared by load shared by the transformer B is equal to the load KVA, the total power, the impedance of the transformer A by impedance of the transformer plus transformer B value. So like this you can calculate any question. So it is a very very important. There are the 4-5 questions based on this concept. One is a questions about the conditions, desirable condition and also necessary conditions, okay. And one more possibility of the question about
about the voltage rating, the power KVA shared by the transformer A, KVA shared by the transformer B values. Okay. So next one, so we will discuss about auto transformer point of view. Auto transformer point of view, we will discuss. This is also very important concept. I will tell you all the possibility question and also all type of formulas based on the auto transformer. So I am sure you can't do anything after listening my class. Okay. Any doubt? So listen. So we know that auto transformer is a single winding transformer. Okay. So in which power transferred from the power transferred by using the two ways. One is a induction process as well as a conduction process. So power transferred through electrical connected part of the winding from source to the load is known as a conduction power, and power transferred through electrical isolated part of the winding as like two winding transformer by using the mutual induction principle, that power is known as a induction power. So that we can say directly the input power of auto transformer, input power of the auto transformer, so that is equal to output power of, okay, that is the output power of auto transformer, ideally power of the auto transformer. So this output power in the sense that is the conduction power and also conduction power of auto transformer plus, so that is the induction power of the auto transformer. Okay, induction power. So what about the conduction power? What is the mean by conduction power and what is the mean by induction power? So power transferred through electrical isolated part of the winding. Electrical, this is a electrical connected part of the winding. See here, power transferred through electrical connected part of the winding. Electrical connected part of the winding is from the part of the winding is known as a conduction power. Power transferred through electrical isolated part of the winding, so that is a induction power. So there is only a question here based on the conduction power in terms of the input power and induction power in terms of the input power. So how do we get that one in terms of this value? So induction power of, okay, don't write, listen. So induction power of the induction power or induction KVA, so that is equal to 1 minus K into input power of auto transformers. Okay, input power of what? And next one, the conduction power of auto transformer, so that is equal to the K into input power of auto transformers. So what about the K here? So always the K in the sense, okay, K is the transformation ratio, okay, ratio of auto transformer, or sometimes it is also called the tapping position of the auto transformer. Tapping the position of auto transformers. All of you got it point? So K is the transformation ratio of auto transformer, tapping position of auto transformer. So now in this case, the transformation ratio of auto transformer in the sense, so we can say that, so it is always low voltage, okay, low voltage of auto transformer, so divided by high voltage of auto transformers, okay. So formula point of view, always the low voltage of auto transformer divided by high voltage of auto transformer, but not the low voltage of two winding transformer or high voltage of. So I mentioned here, so the only with respect to the auto transformer. So K in the sense low voltage of auto transformer divided by
high voltage of auto transformers. Got it? So, but we have a questions, okay, based on this. So, how do we the K here? So, always the K is a, okay, note this point, very important. So, about the K, okay, listen. So, in this case, okay, K is the always less than the 1, less than the 1. So, but we have a question, the economically, okay, K is the less than the 1, or sometimes the range of the K, range of the K here. So, it is a K is less than the 1 and greater than equal to 0.33% or 33%. So, this is the range of the K, but we have a question, the desirable value of the K, desirable value of the K. How do we take desirable value of the K? So, this one we have to take K is equal to, so it is a nearer to the 1, nearer to 1, this is the desirable. But we have a question, economical point of view, economically, so value of the K is equal to, okay, in value of K, that is a 0.5, okay. Suppose in the any question, there are some previous questions also there, K was not given, that time what we have to take, so we have to consider economical, but desirable is a, the desirable value of the K is a nearer to the 1, but range of the K is, the K is the greater than or equal to 33.3% and less than the 1, very very important. So, what is the reason why it is the desirable here? So, to get high disadvantage, high advantage as compared to the two winding transformers, okay, are clear? Okay, now we have a question about comparisons point of view, comparisons of auto transformer from the two winding transformers, what we can compare, okay, this is. So, there are the some formulas point of view. So, first comparison, so here is a, in this case, percentage, okay, percentage losses of auto transformer is equal to 1 minus K times of the percentage losses of the two winding transformers. There is a note here, so these are only percentage losses, okay. Suppose the here losses in the watts, okay, losses of auto transformer is equal to, okay, auto transformer is equal to the losses of the two winding transformer, okay. Exactly in this case, the in conversion of the auto transformer, conversion of auto transformer from two winding transformer. So, that is a, if auto transformer is the obtained from the two winding transformer, so losses of the auto transformer is equal to the losses of the two winding transformer. But any question about the percentage losses point of view, the percentage loss of auto transformer is equal to percentage of percentage 1 minus K times of percentage losses of the two winding transformer. So, what is the reason? The KVA rating of auto transformer, so it is equal to 1 by 1 minus K times of the KVA rating of the two winding transformers, okay. This is another formula. And next one, KVA rating of two winding transformer. And similarly, the one more formula here, so that is the percentage impedance of the auto transformer, so that is equal to 1 minus K times of the percentage impedance of the two winding transformer. This also we can expect the question based on this one. And next one, the percentage voltage regulation of auto transformer, the is equal to 1 minus K times of the percentage voltage regulation of the two winding transformer.
and another one is the percentage of the copper, the percentage of weight of the copper, or sorry, not percentage, the weight of the copper in the auto transformer. So that is equal to 1 minus k times of the weight of the copper in the two winding transformer. The saving is a multiplied by k. So to get all the advantages, okay, in two winding transformer, so what is the k value here? K is nearer to the 1, but economically k is equal to 0.5. Is that clear, all of you? So next one, so conversion of auto transformer from the two winding transformer. Okay, it is a very important exam point of view. Conversion of auto transformer from the two winding transformers. So there are the two conversions. One is the series additive polarity connection. Additive polarity connection, polarity of auto transformer, and second one is the series subtractive polarity of auto transformers. Okay, in case of series additive polarity of auto transformer, so how do we connect? So that means here the windings, that is the LV winding of LV winding and HV winding of the auto two winding transformers are connected in the series additive polarity nature, and this one is in case of these two are connected in the series subtractive polarity of the nature. So for example point, let us take, suppose we have a transformer, two winding transformer. So it is a primary winding, okay, and this is the secondary winding, primary winding. So let us assume here A terminal and the B terminal. So assume as A is a dotted with respect to the B, and this is a C and D. So C is a dotted with respect to with respect to C is a dotted with respect to. Suppose supply is a connected here, then what will happen here? So this is the supply is a connected, then current flows here. So this winding assume as a LV winding, and this is the LV winding or HV winding, and it is a LV winding. So LV winding of the two winding transformer. So EHV in the sense, okay, here is a EHV, okay, current passes through, in this case IHV current, and here this is the ELV, and current passes in this winding, it is a ILV current. So how do we get the ILV current? So ILV is equal to the KVA rating of two winding transformer divided by the EHV value, okay, ELV values, and IHV is equal to KVA rating of the two winding transformer, so divided by EHV value. So this is the data of the two winding transformer. So in series additive polarity connection, so what will happen here? So these two windings are connected in the series in such a way that flux produced by these two windings are in the same direction, so that your net EMF is will be added up. So in series subtractive polarity of auto transformer, here these two windings are connected in the series in such a way that the fluxes produced by these two windings are in the opposite direction, so that net EMF induced in the windings, combined winding, is a subtractive nature. So per series additive polarity connection, so what are the formulas? Okay, how do we get? Listen, I will compare only taking, okay, it's a very easy, don't get confused here. Okay, in case of the series additive polarity connection, assume as suppose we have a auto transformer like, so this is a windings are connected, okay, like this manner. So here this one is the V1, I1, and this is the load is connected here. So load terminal V2 and I2.
but there is a one condition to be satisfied to conversion of auto transformer from the two winding transformer. What is the condition here? The current flows in the LV winding and HV winding should remain same, that to avoid the overloading capacity. Okay, otherwise there is a chance to get the damage of the transformer. That's why the current should be LV winding and HV winding remain same. So per series I2 polarity connection, so what will happen here? So in this case, if I connect like, okay, this is the HV winding, suppose it is a dotted, okay, A is a dotted and with respect to the B, and in this case, okay, in the air, like this is the C, but D point and this is the A point. So this is the C point. So here load is a connected like, load is a connected. So it is the applied voltage the V1 and load terminal voltage V2. Current passes through here I2 current, and this is the I1 amount of the current. So here current in this is the ELV, okay, and this is the EHV, and current in this case what will happen here? So current, this current is the ILV current, HV, and this current is a IHV current, okay, ILV current here. So then let us discuss all the parameters one by one. So first one, what will happen in the V1, input voltage of the auto transformer. So that is equal to similar to the EHV, okay, input voltage of auto transformer, and the output voltage of auto transformer, okay, V2 is equal to, just add, this is the dot, right? So just apply the by KVL, you can get EHV the plus the ELV values, and input current of auto transformer I1. How do we get I1 current? So that is the, both are connected here. This current away from the node, just assume as a node, current away from the node, away from the node. So now this I1 is equal to ILV plus the IHV, right? So next one, the current, the I2 current. So this LV winding and load are connected in the series. So that is equal to ILV. So current here, this ILV you can write obtained by using KV rating of two winding transformer. And after that, turns ratio, or sorry, the K value, how do we get the K? So always the K is a low voltage of auto transformer divided by high voltage of auto transformers. And next one, induction KVA. So how do we get induction KVA? 1 minus K times of, so input KVA of auto transformer. And the conduction KVA of auto transformer is equal to the K times of the input KVA of auto transformers, okay. And similarly, this is for the series additive polarity connection, Suppose if it is the series subtractive polarity connection. Subtractive polarity connection means, so these two windings are connected like, suppose here is a connected, this is the D point, okay, C point, and this one is the D point, and here is a point, okay, A, and this one is the B point. So to get the series I2 polarity, A and D are connected, the common is a B point, okay, common. And to get the series subtractive polarity, A and C are connected, common is a B point. So common is a B between the load and the source, okay. This is also one of the question in the competitive exam. So how do we get series I2 polarity connection here? So A and D points are connected, common point is a common, B is a common point between the source and the load. But to get the series subtractive polarity connection, so here A and C are connected, common is the D is a common point between the source and the load. So therefore, how do we get all these equations? So it is a only simple the technique. So that is V1 is equal to, okay, this value is equal to, so V1, so that is the EHV, right, the excited with the high voltage. Suppose if it is excited with the high voltage only, so here the note is the excited with high voltage,
high rated voltage, that's why we have taken. So high rated voltage. So now the V2 is equal to the here EHV minus okay ELV values, and I1 is equal to, so that is a ILV minus IHV. So I2 is equal to ILV values, right? The ILV one. So therefore transformation ratio K is equal to the low voltage of auto transformer divided by high voltage of auto transformer. And next the induction KVA is equal to 1 minus K times of the input KVA of auto transformer, and conduction KVA is equal to, that is a 1 the K times of the input KVA of auto transformers. So like this you can answer the question. Any problem is given, these are the possibilities. Sometimes you can get a question based on the connection. So to get this rated voltage, what are the polarity connection? So here I already mentioned that in order to get the series R2 polarity connection, A and D are connected, B is the common point. So in order to get at the series subtractive polarity connection, A and C are connected and D is the common point. So therefore what we conclude here, so series R2 polarity means the LV and HV windings of the two winding transformers are connected in the series in such a way that flux produced by these two windings are in the same direction. How do we get series subtractive polarity of auto transformer? LV winding and HV winding of the two winding transformers are connected in the series in such a way that the flux produced by these two windings are in the opposite direction. That is the series R2 polarity connection and series subtractive polarity connections. Okay, got it? Right. Okay. So this is the discussion revision, complete revision. We will discuss the problems also very soon. This is the complete part, the revision of the transformers one. Next one, in the next session I will discuss remaining parts also very clear about complete revision class. Okay, this first already I have taken formulas and also possible questions, and we will discuss all the questions also based on this concept very soon. Okay, thank you. All of you like it this session, is it okay? Like it and share it all of you. कैसे लगा सबको? Okay. Do you have any question? You can ask it. Okay, thank you very much.
Hello. So, good evening, dear. Yes, tell me everything fine? Fast. Yes, everyone, dear, tell me. यस डियर, फटाक से बोलिए सभी लोग, आवाज आ रही है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। एवरीवन टेल मी, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर? वीडियो ऑडियो? काफी लॉन्ग टाइम के बाद, एक लॉन्ग डिले के बाद हम लोग मिल रहे हैं। या गुड आफ्टरनून डियर। ओके, यस, टेल मी सभी लोग फटाक से बोलिए, एवरीथिंग फाइन? या आफ्टर ए लॉन्ग टाइम गौरव। देखिए, ये सेशन नहीं है, ओके ये एक ऐसा, आप समझ लीजिए, ऐसी कहानी है जहां पे आपको सारी बातों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। ओके, यस, वेरी नाइस, गुड। So now we are going to discuss power tonics, but before discussing power tonics, I would like to discuss something. Okay? तो सबसे पहली बात, तैयारी कैसी हो रही है? आप लोगों ने बोला सर ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। मैं एक्चुअली यार मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, समय कम था, लेकिन आज आप जो भी क्वेश्चन है वो एक एक करके पूछते रहिएगा। इन 4-4.5 घंटों में हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक पहलू को समझा जाए, एंड एनी हाउ ओके वी मस्ट बी कैपेबल टू हैंडल ईच एंड एवरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू अवर पावर टॉनिक्स इन गेट 21। ओके, हमें कुछ ऐसा अब इतिहास लिखना है और ऐसी एक कहानी बनानी है जिसमें कम से कम हम पावर टॉनिक्स को बेहतरीन तरीके से समझ पाएं। बाकी सब्जेक्ट की अभी मैं बात नहीं करूंगा। ओके, खासतौर से ये सब्जेक्ट कुछ ट्रिकी हो जाता है एग्जाम में। कभी कभी बहुत अच्छे स्टूडेंट भी पावर टॉनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ 70% से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट भी। ओके, कभी कभी बहुत छोटी सी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, स्पेशली इन द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज, आरएमएस पावर फैक्टर, लोड पावर, जो मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, खासतौर से इफिशिएंसी की बात करें तो थोड़ा इजी रहता है, और दूसरे टर्म्स की बात करें इजी रहता है, जैसे फोरियर सीरीज हो गया, थोड़ा टफ हो जाएगा, तो हमें समझना है। ओके, तो इन 4 घंटों में मैं फिर से, आप जानते हो मैं थोड़ा ऑनेस्ट रहता हूं अपने प्रति भी और आपके प्रति भी, तो मेरा अभी यही एक आपको अगर मैं सजेशन देना चाहूं इन द बिगिनिंग कि अगर आप पावर टॉनिक्स से अवेयर नहीं है तो इसी मोमेंट आप सेशन छोड़ सकते हैं, आप अपने दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड इफ यू हैव लाइक एवरेज प्लस नॉलेज ऑफ पावर टॉनिक्स, देन डेफिनेटली यू मस्ट अटेंड दिस सेशन to understand all the concept, brush up all the concept, okay, in short time period। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है सारी बातों को। ओके, यस, चलिए जल्दी बोलिए डियर, स्टार्ट किया जाए फिर। या सो एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। देखिए, एग्जाम जिंदगी में जितने भी होते हैं सभी टफ है और सभी आसान है, पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं। ओके, कभी कभी आप लोग समझते होंगे किसी के लिए कोई क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है और किसी के लिए कोई क्वेश्चन साल भर नहीं लग पाता है, तो इट डिपेंड्स। तो हमें प्रिपरेशन या हमें तैयारी इस मोड में करनी है जैसे नहीं होता कि यार अब सब कुछ हो चुका है, ओके, सारे हथियारों पे जितनी धार लगानी थी वो लगा चुके हैं, अब सिर्फ एक ये है कि यार हाँ 4-5 घंटे में मोटा मोटी एक आइडिया मिल जाए, अच्छा ये होता था, अच्छा ये मिस हो गया था, ये भी आ गया, चलो अब ये कंसेप्ट भी हम दिमाग में रखेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सुनिएगा, जहां भी मन लगे कि यार नहीं हो रहा है डाइजेस्ट, तुरंत छोड़ दीजिएगा, दूसरे सब्जेक्ट और भी हैं उनकी तैयारी करो, समय बर्बाद नहीं करना है। ओके, बार बार मैं ये कहूँगा। थोड़ा सा पॉइंट मैं ये भी रखूंगा कि हर एक डिस्कशन के बाद एक छोटा मोटा एग्जाम्पल ले सकूं, ताकि उन एग्जाम्पल के थ्रू वी कैन डिस्कस बेटर, और आपको मैं फील करवा सकूं कि कहाँ पे इन जनरल मिस्टेक्स होती हैं, उनको ध्यान से समझना है, कोई गड़बड़ जल्दीबाजी में नहीं करनी है। ओके, वेन एवर आई विल आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट टू यू, definitely all of you have to reply at the same moment without any delay।
ओके, बिकॉज अब आप ये नहीं कह सकते सर जी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अब सब जो होना था वो हो गया है। ओके, तो थोड़ा मुस्कुराहट के साथ और एक नहीं होता एक अंदाज, ये जो बयां करने का एक तरीका होता है, उसके साथ बोलिए शुड बी स्टार्ट। यस एवरीवन फास्ट, शुड बी स्टार्ट। या सो दीप्तांशु सर थैंक यू। क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा बालक, क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। और मैं इस तरीके से आपके साथ डिस्कशन करूंगा सभी के साथ कि आपको मैं ये समझा पाऊं कि एक्चुअली जड़ क्या है। अगर जड़ पकड़ लिए तो फिर आप हिला दोगे पेड़ को। ओके चलिए, तो समय बर्बाद ना करते हुए वी आर गोइंग टू डिस्कस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट, हाउ मेनी टोटल टॉपिक्स। ओके, टोटल टॉपिक्स, मैं ये नहीं कहूंगा यहां पे कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन लेस इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट आई वांट टू टेल यू पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज द फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, एसी टू डीसी कन्वर्टर। थर्ड टॉपिक माय डियर फ्रेंड इज नथिंग बट डीसी टू डीसी ले लेते हैं विद कम्यूटेशन। एंड फोर्थ टॉपिक इज डीसी टू एसी एंड देन फिफ्थ टॉपिक इज एसी टू एसी। तो एसी टू एसी अपने सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता होगा लास्ट ईयर इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, अगला पढ़ते हैं डीसी टू एसी, डीसी टू डीसी, एसी टू डीसी। ये जान है आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, यहां से 80% प्लस क्वेश्चन होंगे। ओके, और यहां से बेटा जी वन क्वेश्चन एटलीस्ट। ओके, सो एटलीस्ट वन क्वेश्चन, एटलीस्ट इन जनरल वन क्वेश्चन मैंडेटरी। ओके, तो ये कुछ कहानी है, एटलीस्ट वन क्वेश्चन विल बी मैंडेटरी। आई नो यू आर फ्रॉम एस एकेडमी, या थैंक यू सर। सारे टॉपिक रिवाइज करवाना, सारे टॉपिक रिवाइज करेंगे बेटा, सारे टॉपिक का रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट आई वांट टू स्टार्ट दिस सेशन विथ एसी टू डीसी कन्वर्टर। ओके, दिस वन। चलिए आप फटाक से बोलिए, स्टार्ट किया जाए जल्दी से बालक। एवरीवन एवरीवन टेल मी फास्ट। सो वी वांट टू स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज, okay, first topic is AC to DC converter। उत्साह नहीं दिख रहा है। ओके, उत्साह नहीं दिख रहा है बेटा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। फर्स्ट टॉपिक AC टू DC कन्वर्टर। देखो मैं फिर से बता दूं यार, ये जो मोमेंट है, ये जो पल है, इसमें सुनना बेहतर है, रिस्पॉन्स करते रहना है ताकि मैं उसी स्पीड को फॉलो कर पाऊं। ओके चलिए, ओके, सो एसी टू डीसी कन्वर्टर। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, इस पूरे कन्वर्टर में थोड़ा ध्यान से देना, समझना, मैं आपके टाइम की वैल्यू आपसे ज्यादा समझता हूं, इतना ध्यान रखना है। सो फर्स्ट बेटा एसी टू डीसी कन्वर्टर आई वांट राइट हियर। अच्छा, सप्लाई क्या होगा, सप्लाई होगा इन जनरल बेटा सिंगल फेज एसी स्टैंडर्ड 1 और 3 फेज एसी स्टैंडर्ड 1। यानी कि ये जो सप्लाई है इन जनरल, हर शब्द पे ध्यान देना, इन जनरल माय डियर फ्रेंड दिस सप्लाई विल बी साइनोसॉइडल और कोसाइन फंक्शन। ये थोड़ा एग्जाम में ध्यान रखना। ओके, साइनोसॉइडल और कोसाइन फंक्शन। कभी कभी क्या होता है, वो जल्दबाजी में बोलने या कंफ्यूज करने के लिए कोई रेक्टेंगुलर सप्लाई दे सकते हैं, ट्रायंगुलर सप्लाई दे सकते हैं, तो वहां पे उसको विशेष तौर पे पढ़ लेना कि स्टैंडर्ड सप्लाई साइन और कोसाइन है या कुछ और है। ओके, उसके हिसाब से डील करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पे लोड की बात करते हैं। लोड हमेशा क्या होगा एसी टू डीसी कन्वर्टर में, लोड विल बी डीसी। अच्छा, डीसी में सिंगल फेज 3 फेज का कोई मतलब नहीं है। ओके, सिंगल वायर विद ग्राउंड, ऐसे टर्म्स आपने पढ़े होंगे पावर सिस्टम में, वो सब कहानी है। तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड वे से जाए, सो आई वांट टू टेल यू हियर सम लोड वोल्टेज बी नॉट एंड आई नॉट। ये कहानी हो गई आपके लोड साइड की। फटाक से बोलिए, अभी तक क्लियर है कहानी सारी? अरे यार बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल बोलिए, फटाक से बोलो। ये हो गया सिंगल फेज, ये स्टैंडर्ड है। अगला पॉइंट, स्टैंडर्ड में आपको क्या ध्यान रखना है? स्टैंडर्ड में ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड, ओके, सिंपल वे ध्यान देना, जो इसमें सप्लाई वोल्टेज होगा Vs, एग्जाम में देखना है आपको, ये जो इसमें Vs होगा इन जनरल दैट Vs विल बी हार्मोनिक फ्री। ये ध्यान रखना, अगर उसने हार्मोनिक दे दिए और पावर फैक्टर पूछ लिया तो गलत हो जाएगा फिर आपका। अगर आपने सिंगल फंडामेंटल कंपोनेंट लिया तो 99.99% केस में प्रोफेसर आपको हार्मोनिक फ्री Vs देगा, फिर भी आपको चेक करना है। अगर उसने कह दिया सप्लाई वोल्टेज में हार्मोनिक है, then we have to consider those harmonics। दूसरा पॉइंट, जो यहां से करंट फ्लो होगी सप्लाई साइड से, उसको हम नाम देते हैं IS इन जनरल वे से। IS में 99.99% हार्मोनिक्स होंगे। वर्डिंग, IS में 99
99.99% हार्मोनिक्स होंगे और VS में 99.99% हार्मोनिक्स नहीं होंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अगला पॉइंट समझते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। AC टू DC कन्वर्टर में इन जनरल बातों को समझो, दो ही टाइप के होंगे, या तो अनकंट्रोल्ड होगा या कंट्रोल्ड होगा, या तो अनकंट्रोल्ड होगा या फिर कंट्रोल्ड होगा। धीरे धीरे फ्लो बना दो। अनकंट्रोल्ड हुआ तो गारंटेड एक ही डिवाइस होगा आपके पास, वो होगा डायोड। कौन सा डायोड? पावर डायोड। और कंट्रोल्ड हुआ, बहुत जोर से कंटा बैठ जाए अगर इस बात को नहीं समझे, कंट्रोल्ड हुआ तो SCR की पनौती नहीं है, SCR की क्या बोलते, विरासत नहीं है कि SCR ही AC टू DC कंट्रोल कन्वर्टर में यूज होगा। SCR की जगह बेटा दे कैन गिव यू MOSFET, दे कैन गिव यू IGBT, दे कैन गिव यू BJT, जो उनकी इच्छा होगी वो डिवाइस आपको देंगे। अब उसके बाद आपको ट्रिगरिंग देखनी है या कंट्रोलिंग एक्शन देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंट्रोल कन्वर्टर का क्वेश्चन हैंडल करना है। तो यहां पे बिल्कुल फिक्स मत करो SCR होगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे मान सकते हैं मोर देन 90% केसेस दे विल प्रोवाइड यू डिवाइस SCR, बट इन रेयरेस्ट टू रेयर केसेस दे कैन प्रोवाइड यू MOSFET, IGBT, BJT और एनी अदर कंट्रोल डिवाइस। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जो भी डिवाइस यहां यूज होगा उसमें एक बारीकता पे आपको ध्यान देना है। क्या बारीकता होनी चाहिए? AC टू DC कन्वर्टर है, आपको लोड साइड माय डियर फ्रेंड V0 और I0 यूनिडायरेक्शनल और यूनिपोलर चाहिए। उसके लिए जो भी डिवाइस यहां पे यूज होगा, गारंटेड, वर्डिंग देखा करो, गारंटेड दैट डिवाइस मस्ट बी यूनिडायरेक्शनल बाइपोलर। मतलब SCR हो, MOSFET हो, IGBT हो, BJT हो, SCR तो अपने आप में यूनिडायरेक्शनल बाइपोलर है, बट MOSFET, IGBT और BJT तो नहीं है ना, तो इन्हें आपको बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वन सीरीज डायोड। तो कुल मिला के AC टू DC कन्वर्टर में जो स्टैंडर्ड स्विच होता है वो क्या होगा बेटा? यूनिडायरेक्शनल। एक एक बात को समझो, यूनिडायरेक्शनल एंड बाइपोलर स्विच। कौन सा स्विच यूज होता है इन जनरल? यूनिडायरेक्शनल बाइपोलर स्विच। What is the meaning of unidirectional bipolar switch? My dear friend, it is really again very easy. Unidirectional bipolar switch means the switch can pass current only in single direction, whereas it can block voltage of either polarity. तो कुछ इस टाइप का आपको स्विच डिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप AC टू DC कन्वर्टर डिजाइन कर सकते हैं। फटाक से बोलो, यहां तक क्लियर है कि नहीं बेटा जी? अरे यार बिल्कुल फटाक से बोलिए, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ओके, मन ना लगे छोड़ के भाग जाइएगा। ओके, दो को मैं पढ़ा लूंगा, बट वो दो सीरियस होने चाहिए। ओके, चलो फटाक से बोलो, इतनी बात क्लियर है? तो अब आपको रटना नहीं है, ध्यान रखना। MOSFET हो सकता है, IGBT हो सकता है, BJT हो सकता है। कार्यक्रम कुछ ऐसा रहेगा, अगर किसी ने BJT AC टू DC कन्वर्टर में यूज किया तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको BJT, और अगर IGBT यूज किया तो बेटा IGBT कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ओके, ध्यान देना हर बात पे। एक सीरीज डायोड मैंडेटरी है। ये सारे डिवाइसेस या ये सारे स्विच मॉड्यूल क्या है? यूनिडायरेक्शनल और बाइपोलर। खत्म करो, आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं फिर से बेटा इसी कहानी की। ओके, प्लीज बी सीरियस, इसी कहानी की। वेरी नाइस। देखो, ये हो गया सिंगल फेज और थ्री फेज। अब क्वेश्चन बनते हैं आपके सिंगल फेज से या फिर थ्री फेज से, या दोनों से आ सकते हैं। ओके, नाउ एट दिस मोमेंट वी हैव टू लाइक लिसन केयरफुली, ध्यान से समझना। सिंगल फेज मींस टू पार्ट्स, सिंगल फेज हाफ वेव, सिंगल फेज फुल वेव। वैसे ही बेटा थ्री फेज हाफ वेव, थ्री फेज फुल वेव। तो यानी कि ये पूरा कन्वर्टर अगर हम एनालिसिस वाइज देखें तो चार पार्ट में डिवाइड हो सकता है। सिंगल फेज हाफ वेव, सिंगल फेज फुल वेव, थ्री फेज हाफ वेव, थ्री फेज फुल वेव। खत्म करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंगल फेज हाफ वेव का इन जनरल डोमेस्टिक फील्ड में या इंडस्ट्री में या पावर प्लांट्स वगैरह में कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयर यूज होते हैं। तो इनके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है, लेस देन 5%, लेस देन 10%। हाई पॉसिबिलिटी डोमेस्टिक फील्ड में जाके सिंगल फेज फुल वेव की होती है, जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी रहेगी, मोर देन 50%। उसके बाद का जो परसेंटेज बचा हुआ है वो कवर करेगा थ्री फेज फुल वेव को या फिर थ्री फेज हाफ वेव को। सिमिलरली इन जनरल वी डोंट वांट टू यूज थ्री फेज हाफ वेव, तो फोकस को किसको करना है? थ्री फेज फुल वेव को इधर से फोकस करो, सिंगल फेज फुल वेव को उधर से फोकस करो। यानी कि इन दो टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अगला पॉइंट समझते हैं बेटा। जब भी हम सप्लाई की बात करेंगे, मेन फोकस आपको करना है सप्लाई वोल्टेज वेवफॉर्म, सप्लाई करंट वेवफॉर्म। उसके साथ साथ आपको फोकस करना है सप्लाई पावर फैक्टर cos फाई। ओके, अगली बात, अगर कोई आपसे AC टू DC कन्वर्टर की बात कर रहा है तो हमेशा इसको एग्जाम में बहुत केयरफुली रीड करना है। वेदर, ध्यान से समझो, वेदर दिस कन्वर्टर इज आइडियल और इट इज प्रैक्टिकल।
कहानी को समझो। आइदर दिस कन्वर्टर इज आइडियल और प्रैक्टिकल। उसके बाद आते हैं लोड पे। लोड पे आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, विथ और विदाउट इंडक्टेंस, बस खत्म, विथ और विदाउट इंडक्टेंस। सारी बातें क्लियर हो गई? जल्दी बोलो यार, सारी बातें क्लियर हो गई? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, चलिए ध्यान से समझना। व्हाट इज द पावर फैक्टर? सिंपल वे, व्हाट इज द पावर फैक्टर? बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हर एक पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं उसका एक मीनिंग है। सो पावर फैक्टर के लिए हम यार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, P इज इक्वल टू VRMS IRMS इंटू cos फाई इज द रियल पावर और एवरेज रियल पावर ऑफ सिंगल फेज। सिमिलरली एपरेंट पावर, वर्डिंग देखा करो, मैग्नीट्यूड बाइज VRMS इंटू IRMS। तो यहां से बेटा cos फाई हम लोग निकाल सकते हैं, VI वी कैन रिप्लेस बाई S, so cos phi is equal to P by S, so this one is equal to बेटा P by S। लेकिन हमारे कन्वर्टर में आपको ये डायरेक्टली यूज नहीं करना है। क्या करना है? वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखो, कन्वर्टर की कहानी करें तो स्पीड थोड़ी मैं स्लो रखूंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की भी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होगी। और ये रहा अपना AC to DC कन्वर्टर, जिसमें मैं मान लेता हूं ये हो गई अपनी सिंगल फेज सप्लाई। ध्यान देना हर बात पे, बाद में रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको डाउट हो तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस। अब देखो, ये बेटा AC to DC कन्वर्टर है, तो एक बात कंफर्म है कि अगर ये VS नो डाउट इंडिपेंडेंट है, नो डाउट इंडिपेंडेंट है, यहां कहानी में कुछ भी चेंज होता रहे VS पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये IS इस पूरे सिस्टम से डिसाइड होने जा रही है। सो IS विल बी डिपेंडेंट क्वांटिटी, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, टाइम इतना नहीं है। IS विल बी डिपेंडेंट एंड VS विल बी इंडिपेंडेंट इन जनरल 99.99% केसेस। ये सब ध्यान रखो, ऐसा कोई नहीं है कि ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स कुछ नहीं होता है वर्ड में। ओके, हटाइए इसको। अब देखो, अगर हम यहां से बेटा रियल पावर की कैलकुलेशन करें तो क्या ये नहीं लिख सकते हैं कि पावर डिलीवर्ड बाय दिस सप्लाई इज VS इंटू IS। डन। नाउ दिस सप्लाई इज AC, तो क्या आना चाहिए बेटा? पावर फैक्टर cos फाई। अब ये सब सप्लाई की कहानी है तो मैं इसको S लिख देता हूं। ये सारी वैल्यूज हमेशा RMS होंगी बिकॉज एवरेज वैल्यूज। आगे बढ़ते हैं। देखो, यहीं से अगर हम S के मैग्नीट्यूड की बात करें, सप्लाई अपरेंट पावर, देन इट इज नथिंग बट फॉर सिंगल फेज VS IS RMS समथिंग। इसको इससे रिप्लेस कर दें बेटा फटाक से। तो देखो, cos फाई S, वर्डिंग देखा करो, इज नथिंग बट P by S इन जनरल, बट मैं लिखना चाह रहा हूं PS SS। ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहां पे, जिसको आपको भूलना नहीं है। अब PS और SS क्या होते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस। फटाक से बोलो, इतनी बात क्लियर है? वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। नाउ वेयर, वर्डिंग देखो, वेयर PS इज रियल, वर्डिंग देखा करो, रियल पावर सप्लाइड और एब्जॉर्ब, सप्लाई और एब्जॉर्ब बाय सप्लाई। ओके, सप्लाई, या तो वो पावर एब्जॉर्ब होगी या सप्लाई होगी, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, इन्वर्टिंग मोड होगा तो अपना सप्लाई पावर क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अपने AC सोर्स ने कितनी पावर डिलीवर की, खत्म, या AC सोर्स ने कितनी पावर एब्जॉर्ब की, खत्म। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। जैसे मैं आपको थोड़ा यहां पे परेशान करने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, माय डियर फ्रेंड, सपोज वी हैव सम कन्वर्टर इन दिस फैशन। सिंपल, रेक्टिफायर ये हो गया। अब जरा समझना कैसे कैसे निकालेंगे पावर फैक्टर। ये R हो गया, ये V0 हो गया, ये I0 हो गया, ये VS हुआ, खत्म। अब हमें निकालना है मान लो सप्लाई पावर फैक्टर। तो मैंने ये कहा आपसे इन जनरल वे में कि भैया ये जो लोड है ना, ये P0 पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, और ये जो डायोड या कन्वर्टर है, इसके 2 केसेस लेंगे, और ये जो सप्लाई है बेटा, वो कोई पावर PS डिलीवर कर रहा है, यही होगा। सो दिस सप्लाई विल डिलीवर पावर एंड दिस लोड विल कंज्यूम पावर। खत्म करें। अब मैं आपको केसेस देना चाह रहा हूं बेटा। आई वांट टू से दिस डायोड इज आइडियल इन फर्स्ट केस। तो देखो, जितनी पावर डिलीवर हुई उतनी ही पावर कंज्यूम हुई, क्लियर है? उतनी ही पावर कंज्यूम हुई। सो डिलीवरिंग पावर इज इक्वल टू एब्सॉर्बिंग पावर व्हेन दिस डिवाइस इज आइडियल। In this case, what will be the power factor? So cos phi is nothing but बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसे ही लिखना, SS मैंडेटरी है, SS मैंडेटरी है। अब देखो, ये जो PS है वो P0 के इक्वल होगा बिकॉज दिस डिवाइस इज आइडियल। तो मैंने यहां लिखा P0 डिवाइडेड बाय SS, खत्म। आगे क्या होगा वो बाद में देखेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर मुझसे कोई कह देता बेटा कि ये डिवाइस प्रैक्टिकल है, अगर ये डिवाइस प्रैक्टिकल होता तो इसमें कोई लॉस होता कंडक्शन मोड में?
एंड दिस पीडी डायोड कंडक्शन लॉस आई वांट टू रिप्रेजेंट बेटा बाई पीडी, तो उस केस में पावर फैक्टर क्या होता? सोचो भैया, ये डायोड पावर जनरेट तो करेगा नहीं, लोड में रेजिस्टेंस है वो पावर जनरेट तो करेगा नहीं, यानी कि इन दोनों में जो पावर कंज्यूम हुई होगी वो किससे आएगी बेटा? सप्लाई से। तो अब कहानी ये हुई कि पीएस भैया पीडी या पी नॉट के अलग अलग इक्वल नहीं है, दोनों के एडिशन वाइज इक्वल है। तो इस पॉइंट पे आपका पावर फैक्टर क्या होगा? फटाक से देखो, सो cos phi s is nothing but again ps by ss my dear friend, and ps this time is pd plus p naught. So pd plus p naught, अगर इतनी गलती से आप बच गए, I assure you nobody can fail you in the calculation of power factor, in the calculation of power factor. फटाक से बोलिए क्लियर है डियर? जल्दी से बेटा, क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये एसएस जो है दैट इज नथिंग बट वीएस आरएमएस इनटू आईएस आरएमएस। ऐसे ही ये जो पीडी और पी नॉट होंगे, these like term we can calculate with the help of current and resistance values और current and voltage values। तो यहां पे जो कैलकुलेशन ये वाली है, ये डिपेंड करेगी सिस्टम में कि लोड में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, डायोड का क्या पैरामीटर्स दिए हुए हैं, बट ये जो टर्म है ये फिक्स है। तो यहां पे एसएस का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? एसएस का मैग्नीट्यूड हमेशा वीएस इंटू आईएस होगा, जहां पे कि वीएस हमेशा बेटा इंडिपेंडेंट होगा और आईएस डिपेंडेंट होगा इन जनरल। सो नाउ टेल मी दिस थिंग इज क्लियर? ओके, थैंक यू। नाउ वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। नाउ बेटा जी प्लीज लिसन टू मी केयरफुली अगेन। I want to tell you what about the conduction losses। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं। यहीं पे मैं रुक जाता हूं। एक बात और हमेशा ध्यान रखना, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट अल्टरनेट ईयर में या 3 साल के गैप पे हम लोगों से वो क्वेश्चन कर देते हैं कि व्हाट विल बी द फंडामेंटल पावर फैक्टर। प्लीज कीप इन माइंड, फंडामेंटल पावर फैक्टर और टू कैलकुलेट फंडामेंटल पावर फैक्टर वी ऑलवेज रिक्वायर Fourier सीरीज। विदाउट Fourier सीरीज द कैलकुलेशन ऑफ फंडामेंटल पावर फैक्टर इज इम्पॉसिबल। अदरवाइज दे विल गिव यू another type information or any other information, for example displacement factor, fundamental current and so on। तो इनकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन को वो थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, मोल्ड करते हैं, देन उस केस में भी हमें रेडी रहना है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट आवर पावर फैक्टर। सो हियर द नेक्स्ट थिंग इन जनरल बेटा आपको ध्यान रखना है, द Fourier सीरीज ऑफ आईएस, द Fourier सीरीज ऑफ आईएस इज मैंडेटरी टू ऑल। आईएस इज मैंडेटरी टू ऑल, भूलना नहीं है बालक, मैंडेटरी टू ऑल। जो भी सिग्नल दिया है उसके हिसाब से आप उसकी Fourier सीरीज निकालेंगे। काफी अच्छा डिस्कशन हुआ है सिग्नल सिस्टम का, Fourier सीरीज निकालने में आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो भी स्टैंडर्ड Fourier सीरीज है वी विल डिस्कस। ओके, तो इतना ध्यान रखना है कि भैया किसी भी करंट की Fourier सीरीज पूछी जा सकती है, आप रेडी रहिए उसके लिए। अगला पॉइंट ध्यान देना बेटा, जब भी हम फंडामेंटल पावर फैक्टर की बात करते हैं, फंडामेंटल पावर फैक्टर इज नथिंग बट एंगल बिटवीन बेटा Vs एंड Is। और हमेशा ध्यान रखना, ये Vs फंडामेंटल वोल्टेज होगा, ये Is फंडामेंटल करंट होगा और इसके बीच का एंगल φ1। डन, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल पावर फैक्टर। कोई पूछे व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ फंडामेंटल पावर फैक्टर, तुरंत बोलना है इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल पावर फैक्टर एट विच वी वांट टू ऑपरेट आवर सिस्टम। ये वो पावर फैक्टर है जिस पावर फैक्टर पे हम अपने सिस्टम को ऑपरेट करना चाह रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट अचीविंग दिस पावर फैक्टर इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। ओके, तो खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर हम लोग फंडामेंटल पावर फैक्टर को सिंपली इस वे से लिखें तो cos φ1 हो जाता है। φ1 की वैल्यू आपको Fourier सीरीज से फाइंड आउट करनी पड़ेगी एंड दैट इज नथिंग बट एंगल बिटवीन दिस वन। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी तरीके से अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट फैक्टर की बात करें या फंडामेंटल पावर फैक्टर की बात करें, बोथ आर सेम टर्म, तो वहां जाके कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई आपसे बोले व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर और फंडामेंटल पावर फैक्टर, बोथ आर सेम थिंग एंड टू कैलकुलेट ऑल दोस टर्म्स वी रिक्वायर ऑलवेज Fourier सीरीज। उसके बाद की बात करें बेटा तो फंडामेंटल पावर फैक्टर वी कैन आल्सो कैलकुलेट बाय द डिस्प्लेसमेंट फैक्टर इनटू दिस बेटा, सॉरी, पावर फैक्टर इक्वल टू फंडामेंटल पावर फैक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, तो सॉरी डिस्टॉर्शन फैक्टर। तो डिस्टॉर्शन फैक्टर इनटू लिसन टू मी केयरफुली, distortion factor into fundamental power factor is equal to our power factor is the another formula of the power factor. So I want to write here power factor is equal to, my dear friend, fundamental power factor into distortion factor. And what is the distortion factor in AC to DC converter is nothing but IS1 RMS by IS RMS। इसको भी थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है कि दूसरे तरीके से वो पूछे तो आपको वहां पे परेशान नहीं होना है। ओके बॉस? यस यस, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। तो आगे बढ़े, इतनी कहानी क्लियर है।
अब आते हैं बेटा हम लोग इसमें कन्वर्टर में। तो कन्वर्टर में आपसे इन जनरल जब भी एसी टू डीसी कन्वर्टर की बात होगी दो ही बातें करेगा, ध्यान से समझना। या तो इन जनरल वो बात करेगा बेटा व्हाट विल बी द वोल्टेज वेवफॉर्म ऑफ डिवाइस, व्हाट विल बी द करंट वेवफॉर्म ऑफ डिवाइस, इन अदर वर्ड्स व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यूज ऑफ करंट और आरएमएस वैल्यूज ऑफ करंट थ्रू द डिवाइसेस, what will be the average and RMS voltage across the devices, and what will be the commutation time, and also they can ask conduction losses। तो कितने पॉइंट पे बात करनी है आपको ये ध्यान रखना है। तो कन्वर्टर में अगर हम लोग जाएं जो मिडिल पार्ट है कन्वर्टर में अपने पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा what will be the current और वोल्टेज वेवफॉर्म, मैं डिवाइसेस लिख देता हूं, सो आईडी एंड वीडी वेवफॉर्म्स पूछी जा सकती हैं। साथ में आपसे पूछा जा सकता है एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज ऑफ ऑल। साथ में बेटा अगला पॉइंट पूछा जा सकता है व्हाट विल बी द कम्यूटेशन टाइम, इज द अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कम्यूटेशन टाइम। और एक लास्ट टर्म जो आपको ध्यान रखना है व्हाट विल बी द कंडक्शन लॉसेस। तो कम्यूटेशन टाइम और ये सारी बातें तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट कंडक्शन लॉसेस पे आते हैं। व्हाट विल बी द कंडक्शन लॉसेस, हमेशा ध्यान रखो जो भी डिवाइस की वीआई कैरेक्टरिस्टिक गिवन होगी उस वीआई कैरेक्टरिस्टिक से हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक टर्न ऑन रेजिस्टेंस एंड टर्न ऑन वोल्टेज। सो टू कैलकुलेट कंडक्शन लॉसेस वी रिक्वायर टू थिंग्स माय डियर फ्रेंड। क्या क्या है बेटा, वो दोनों थिंग्स हैं, एक तो आपको पता करना है आर ऑन रेजिस्टेंस और एक पता करना है बेटा कट इन वोल्टेज। इन अदर वर्ड्स वी कैन से वी ऑन वोल्टेज। तो देखो आर ऑन और वी गामा हो सकते हैं दोनों प्रेजेंट हो सकता है एक प्रेजेंट हो, तो वो आपको क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना है। लेकिन जैसे ही आपको ये दोनों पता चल जाते हैं आपको उस डिवाइस के थ्रू करंट निकालनी है। ओके, सो आई वांट टू से कि ये कोई अपना पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है and I want to say beta here some current ID is flowing, roughly ID, not diode current, any current, okay? तो उस केस में अपना जो कंडक्शन लॉस होगा उसको मैं PC से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। What will be the power loss is nothing but ID RMS square into R on plus V gamma into ID average। बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। Now tell me, till now it is clear boss? Yes बेटा, या जल्दी बोलिए बेटा, इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो देखो ये नहीं होता यार कि अब इतने जो लिमिटेड टाइम है इसमें हम डेप्थ को समझ पाएं और ये समझ पाएं कि हमने जो पढ़ा है वो कितना सही है कितना नहीं है, फिल्टर आउट करना मतलब आसान रहेगा इन 3-4 घंटों में। जिन मुद्दों पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उन मुद्दों को मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं और यकीन मानिए ओके कि क्वेश्चन कितना भी मोल्ड हो जाए बट कभी भी अपने कंसेप्ट से बाहर नहीं होता है। ये एक सुंदरता होती है आईआईटीएन प्रोफेसर्स के, कभी भी वो ऐसा क्वेश्चन नहीं रखेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस हो। इन जनरल मोर देन 99% केसेस में वो क्वेश्चन वही रखेंगे जिसमें सिलेबस आपके पास जो प्रोवाइडेड है उसी में उसको घुमाना, ये उनकी एक आर्ट है। तो अब वो कितना घुमाते हैं और कितना हम उनके घुमाने के स्टाइल को समझ पाते हैं ये हम पे डिपेंड करता है, ये हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ये हमने कितना सब्जेक्ट को समझा है, कितना उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, उस पे डिपेंड करता है। तो कुल मिला के ये सारी बातें आपके दिमाग में आपके जहन में रहनी चाहिए बॉस। अगर यहां पे आप हल्का भी वीक पड़े तो अनफॉर्चुनेटली हो सकता है आपको एसी टू डीसी कन्वर्टर छोड़ना पड़ जाए। ओके, सो प्लीज बी सीरियस एट दिस मोमेंट। आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं हम लोग लोड की। तो देखो कन्वर्टर हो गया, अब आते हैं लोड पे। लोड की 3 ही वैरायटी हैं जो आपको फिर से ध्यान से समझनी है। एक बार लोड खत्म सब कुछ खत्म। फिर तो लोड या तो बेटा प्योर रेजिस्टिव होगा या आपका लोड इन जनरल आरई होगा भाई, या तो आपका लास्ट लोड बेटा आरएल और आरएलई, फिर वो सब एक ही कहानी है, कोई खास फर्क नहीं है किसी में भी। तो कुल मिला के आपके पास 2 कैटेगरी आएंगी, एक विदाउट एल, ध्यान देना हर बात पे, एक विदाउट एल एंड सेकेंड वन माय डियर फ्रेंड विथ एल। एक विदाउट एल और एक विथ एल, यही है जहां से प्राण निकलने शुरू होते हैं। सो विथ एल ऐसे भी बोल सकते हैं कि फिर से हाई पॉसिबिलिटी होगी विथ एल से क्वेश्चन आने की, विदाउट एल से लेस प्रोबेबिलिटी होगी। ओके अगला ध्यान रखना बेटा, हमेशा जब भी हम आर और आर ई लोड की बात करेंगे यानी कि विदाउट एल की बात करेंगे, कभी भी कोई भी फोर्सफुली कंडक्शन नहीं होगा, कभी भी कोई भी फोर्सफुली कंडक्शन नहीं होगा सिंगल फेज की अगर हम बात करें। इन अदर वर्ड्स इन सिंगल फेज कन्वर्टर डजंट मैटर इट इज हाफ वेव और फुल वेव, एक एक शब्द को
in single phase half wave or in single phase full wave, if load is free from inductive properties, it is impossible to conduct any device more than pi. It is impossible. But whenever load has inductance, then conduction possible more than pi. This is the most important term here at this moment. So my dear friend, here no forcefully conduction. So no forcefully conduction, वहां जाके कोई बकलोली नहीं कर देनी है. नो फोर्सफुली कंडक्शन. जैसा कि आप मुझसे अवेयर हैं, ऐसा कोई नहीं है जो मुझे ना जानता हो इस प्लेटफॉर्म पे. तो इतना ध्यान रखना, मैं राइटिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं अभी दे सकता हूं, ये मेरे में आर्ट नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा. तो जो भी मैं बोल रहा हूं उसको अगर कहीं बाद में लिखना चाहो तो लिख लेना, अभी मैं समय नहीं इतना. सो नो फोर्सफुली कंडक्शन इन दिस केसेस. इन अदर वर्ड्स इट इज इम्पॉसिबल टू से लाइक कंडक्शन विल बी मोर देन पाई बाई ओमेगा. ये कहना इम्पॉसिबल हो जाएगा. किसी भी कॉस्ट पे बेटा कंडक्शन कभी भी पाई बाई ओमेगा से ज्यादा नहीं होगा. ये सब ट्रिक्स होती है क्वेश्चन के आंसर को रिप्लाई करने के लिए. यहां पे आ जाए बेटा, फोर्सफुली कंडक्शन मैंडेटरी. What is the meaning of forcefully conduction? Many times we have already discussed beta in the classes. So forcefully conduction means in general it is guaranteed that our devices will conduct more than pi in general, okay? In other words, we can say our devices are not going to commutate at omega t equal to pi. किसी भी कॉस्ट पे devices omega t equal to pi पे commutate नहीं होंगे. प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, ओके? चलिए आइडियली ले लें तो भी भैया पाई पे टर्न ऑफ नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडक्टर को डिस्चार्ज होने के लिए थोड़ा समय चाहिए. और जब तक बेटा इंडक्टर में एनर्जी रहेगी तब तक वो किसी ना किसी एक डिवाइस को ऑन रखेगा, चाहे वो डिवाइस आपका मेन डिवाइस हो या फिर आपका वो फ्री व्हीलिंग डायोड हो, ओके? सो यहां पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ही इंडक्टर पिक्चर में आता है, पूरी कहानी ऐसे आप समझ लीजिए, एक देहाती बंदा है जो मिथुन चक्रवर्ती जी की मूवी देखता है, उसको सारी कहानी समझ में आती है. ये हो गए आर लोड और आर ई लोड, इन अदर वर्ड्स विदाउट इंडक्टिव. और जब भी बात करते हैं हम लोग ऐसे कि मैं ही हूं देहाती बंदा हूं काइंड ऑफ, और जब बात करेंगे हम लोग यहां पे कि यार एक हॉलीवुड की ऐसी मूवी है जिसमें कोई डायनासोर टाइप की नहीं है, जिसमें पूरा लाइक एक नॉर्मल मूवी है जिसमें अंग्रेजी माशाअल्लाह लेवल की है और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, ओके? कुछ कहानी ऐसी होती है एक एवरेज इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए, खासतौर से जब AC टू DC कन्वर्टर में इंडक्टर प्रेजेंट होता है या फिर क्वेश्चन को इंडक्टर की वजह से थोड़ा मोल्ड कर दिया जाता है, तो क्वेश्चन के समझने का जो वे है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, उसके रिप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स हमें अपनी पूरी इन्वॉल्वमेंट दिखानी होगी व्हेन एवर आवर लोड हैव सम इंडक्टिव प्रॉपर्टीज. अगर लोड में इंडक्टर नहीं है, बिंदास खोपड़ी खोलिए, लिख दीजिए. 99% अगर आप थोड़े भी अवेयर होंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ओके? ये बात है. बात करते हैं बेटा आगे हाफ वेव और फुल वेव में. फिर से जब भी हम बात करते हैं हाफ वेव सिंगल फेज या 3 फेज फुल वेव या कोई भी हाफ वेव और फुल वेव की बात करते हैं, तो फिर क्वेश्चन चलता है आपके पास लोड पावर का. फिर बात करेंगे वो लोग इफिशिएंसी की, फिर बात करेंगे वो व्हाट विल बी द पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस, और व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड बाय बैटरी, और व्हाट विल बी द पावर डिलीवर्ड बाय द लोड. सो माय डियर फ्रेंड, after around 1 hour we will discuss the inverting mode also, okay? तो आपको क्या ध्यान रखना है, खोपड़ी खोलो पूरी. आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि सर जी मतलब एग्जाम से जस्ट 2-3 दिन पहले इतना समझाए थे कि जब तक अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री नहीं होगी सिंगल फेज फुल वेव और सिंगल फेज थ्री फेज फुल वेव में, जब तक अल्फा की यानी ट्रिगरिंग एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 90 नहीं होगी और लोड में बैटरी ई पावर डिलीवर करने में कैपेबल नहीं होगी, तब तक इन्वर्टिंग मोड नहीं आएगा. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्वर्टिंग मोड अल्फा ग्रेटर देन 90 पे आ जाता है तुरंत कंटाप मार देना किसी को भी नहीं. साथ में एक कंडीशन लगाओ कि भैया जो लोड में बैटरी लगी हुई है या जो लोड है वो काइंड ऑफ जनरेटर वर्क करे या फिर जो लोड की बैटरी है वो पावर डिलीवर करने में कैपेबल हो, ओके? तो अगर इन मुद्दों पे हम बात करें तो हम लोग यहां पे 2-4 कंक्लूजन अपने दिमाग में ला सकते हैं कि दे कैन आस्क कंटिन्यूअस कंडक्शन, दे कैन आस्क डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन, दे कैन आस्क रेक्टिफिकेशन मोड, दे कैन आस्क इन्वर्टिंग मोड, दे कैन आस्क लोड पावर, दे कैन आस्क पावर डिलीवर और एब्सॉर्ब बाय बैटरी ई, दे कैन आस्क पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस, एंड ऑल्सो दे कैन आस्क एफिशिएंसी ऑफ द कन्वर्टर. तो इन सारे मुद्दों को समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके? नाउ टेल मी, इट इज क्लियर बालक? यस. सो वेरी नाइस बेटा. फायरिंग एंगल क्या होता है? नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, ओके? सो थैंक यू डियर. नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा. सो प्लीज इस मोमेंट मुझे बहुत ध्यान से समझना. जब भी हमारे पास लोड बेटा आर
या आर ई टाइप का कुछ भी हो, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आर हो, आर ही हो, और ये वी नॉट मान लिया, ये मैंने आई नॉट मान लिया, कुछ स्टैंडर्ड वोल्टेज एंड करंट। माय डियर फ्रेंड, हमेशा ध्यान रखो पी नॉट लोड पावर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे हम लिखेंगे सिंपल आई नॉट आरएमएस स्क्वायर इंटू आर एंड आई नॉट एवरेज इंटू ई, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे सर जी लेकिन आर एल ई हुआ या कुछ और हुआ, आर एल हुआ ना, परेशान नहीं होना। चाहे लोड बेटा आर ई हो, चाहे लोड आर एल ई हो, चाहे और कुछ हो, आपको फॉर्मूला यही यूज करना है। काहे को ये यूज करना है? क्योंकि बेटा जी इंडक्टर एवरेज पावर विल ऑलवेज बी जीरो, बस इतना ध्यान रखना। मेरे दोस्त भाई सुनो मेरी बात को, डजंट मैटर आई नॉट यानी कि लोड करंट इज कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, कांस्टेंट विथ रिपल, कुछ भी कहानी हो, एक कहानी फिक्स है। क्या कहानी फिक्स है? कि भैया इंडक्टर की एवरेज पावर जीरो होगी। और इंडक्टर की एवरेज पावर जीरो होने के पीछे कारण क्या है? कारण यह है बेटा, बिकॉज वाई दिस इंडक्टर पावर एवरेज पावर इज जीरो, बिकॉज एवरेज वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इज ऑल्सो जीरो। इतनी बात क्लियर है? कब जीरो होगा ये और ये? कभी भी ये ध्यान रखना, फॉर ऑल केसेस doesn't matter my dear friend, I not discontinuous, I not continuous, I not constant, मतलब कहानी कुछ भी हो निष्कर्ष यही होगा। कहानी कुछ भी हो निष्कर्ष यही होगा। बिल्कुल परेशान नहीं हुआ वहां होके जाना कि अरे यार पता नहीं सर बोलते थे कांस्टेंट करंट में वीएल एवरेज जीरो। नहीं, वीएल एवरेज को जीरो होना है अगर उन्होंने एक तंदुरुस्त मोड में अपने रेक्टिफायर को डिजाइन किया है। बस कहानी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडक्टर हमेशा चार्ज इस टाइप का नहीं होना चाहिए कुछ भी। ओके, अगर चार्जिंग हो रही है तो फिर वीएल एवरेज जीरो होने का मतलब ही नहीं है। ओके, अगर एक प्रैक्टिकल सिस्टम की बात करें जिसमें हम डीसी लोड को ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि वीएल एवरेज को जीरो होना पड़ेगा, एवरेज इंडक्टर पावर को भी जीरो होना पड़ेगा। सो डजंट मैटर द लोड इज आर ई और आर एल ई, इन एनी केस द लोड पावर विल बी दिस वन। अब आप में से कोई कह दिया सर जी हाथ उठा रहे हैं भैया ये बताओ ई नहीं हुआ तो? अरे वे ई नहीं हुआ तो ई को जीरो रख देना ना, ई नहीं हुआ तो ई को जीरो रख देना। सो दिस इज स्टैंडर्ड पावर इक्वेशन। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बस इसको ध्यान रखो, ई जीरो है, ई नहीं दिया है तो ई जीरो रख देना, एल के बारे में चिंता नहीं करनी, आर बच गया, खत्म बात। ओके, नाउ टेल मी इट इज क्लियर और नॉट? फटाक से बोलो बेटा, इट इज क्लियर और नॉट? ओके, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, चलिए थोड़ा सा एक डीप ब्रेथ लीजिए एंड लिसन टू मी केयरफुली अगेन। ओके, देखो मुझे भी सोच के बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं उन पॉइंट को मेनली फोकस करना चाह रहा हूं जहां पे इन जनरल हम लोग फंसते हैं। तो अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा, जरा प्लीज बी सीरियस, थोड़ा ध्यान समझना। जब भी आपसे बात करें, ओके, आपको प्रॉमिस करना होगा मुझे इस मोमेंट कि सर मैं आपके इस सेंटेंस को कभी नहीं भूलूंगा, एटलीस्ट मैं 7 तारीख की मॉर्निंग तक या 2 बजे तक तो बिल्कुल नहीं भूलूंगा, इतना प्रॉमिस करना है। ओके, क्या प्रॉमिस करना है? ध्यान देना बेटा, जब भी आपके पास लोड में एक एलिमेंट हो, यानी कि लोड आपका आर हो और ये हो, प्योर, खत्म, एसी टू डीसी कन्वर्टर है, लोड इज प्योर रेजिस्टिव वी नॉट एंड आई नॉट। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सर जी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वी नॉट प्रोपोर्शनल टू आई नॉट, खत्म करो। यानी कि भैया हम लिख सकते हैं बेटा वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर, यहां पे भी खत्म करो। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर हम लोग इस इक्वेशन को फॉलो करें तो क्या ये नहीं लिख सकते हैं, ध्यान दो, तो क्या ये नहीं लिख सकते हैं बेटा कि लोड पावर वी नॉट इज नथिंग बट आई नॉट आरएमएस स्क्वायर इंटू आर? डन। और देखो आई नॉट प्रोपोर्शनल टू वी नॉट है तो वी नॉट आरएमएस स्क्वायर बाई आर ऑल्सो वी कैन राइट। और अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल है तो भैया ये लिखने में क्या बुराई है? तो ये लिखने में क्या बुराई है? वी नॉट आरएमएस इंटू आई नॉट आरएमएस, खत्म। लेकिन देखो ध्यान से, एक एक बात को शालीनता से समझ लो, तसल्ली के साथ समझो कि ये सारे टर्म्स इक्वल होंगे ओनली फॉर प्योर रेजिस्टिव लोड। आई वॉन्ट टू राइट माई डियर फ्रेंड ओनली फॉर, वर्डिंग देखो, ओनली फॉर प्योर रेजिस्टिव लोड, ओनली फॉर प्योर रेजिस्टिव लोड, डन। लेकिन इन जनरल आपको भी पता है बालक, वो आपसे रेजिस्टिव लोड नहीं पूछने वाले हैं, आपकी अच्छा दिन रहेगा वो अगर आपसे रेजिस्टिव लोड पूछा जाता है। इसके अलावा बेटा चाहे वो लोड आरएल हो या आरएलई हो या दुनिया का कोई भी लोड हो, बस इतना ध्यान रखना है लोड में एक से ज्यादा एलिमेंट हो, लोड में एक से ज्यादा एलिमेंट हो। एक से ज्यादा एलिमेंट हुआ तो बेटा आप यहां लिखने जा रहे हो वी नॉट और ये लिखने जा रहे हो आई नॉट, खत्म करो। इसकी एवरेज पावर हमेशा क्या होगी?
जीरो होगी। आप कहेंगे मास्टर जी इतनी बात क्लियर है। अब बचे क्या बेटा, आर और ई। ये क्या है, अपनी बैटरी है ई। तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है बेटा, आई नॉट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, आई नॉट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वी नॉट। दिस रिलेशनशिप इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस रिलेशनशिप इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। आप कहेंगे सर जी नहीं होती होंगी, मैं आपको पेपर पे लिख के दे रहा हूं बेटा, आप में से जितने लोग प्रेजेंट अभी है ना, इनमें से 2-4 लोग गलती करके आएंगे। तो इस पे ध्यान रखो, आई नॉट नॉट प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, भैया कैसे हो जाएगा, 2-3 एलिमेंट है ना। अब अगली कहानी समझो, आई वांट टू राइट हियर बेटा सम वी आर रेजिस्टिव वोल्टेज एंड दिस इज बैटरी ई। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, अब लिखेंगे हम लोग आई नॉट प्रोपोर्शनल टू वी आर, दिस इज द टर्म। ओम्स लॉ इसके लिए है, ओम्स लॉ एंटायर के लिए नहीं था। आगे बढ़ते हैं बेटा, जब भी इस केस की बात की जाए, सो यू कैन राइट लोड पावर इज इक्वल टू आई नॉट आरएमएस स्क्वायर इंटू आर प्लस ई इंटू आई नॉट एवरेज। डन करो, आगे बढ़ गए। बट माय डियर फ्रेंड, नेवर राइट वी नॉट आरएमएस इंटू आई नॉट आरएमएस। अगर ये लिख दिए तो समझ लो आपने एक मर्डर कर दिया। ओके, ये बिल्कुल नहीं लिखना है। ऐसे ही चलो, ना तो आप ये लिख सकते हो और ना ही बेटा आप इस टाइप की कोई लाइक बकलोली करिएगा, ये वाली, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बेटा वी नॉट आरएमएस बाई आर भी रॉन्ग है। तो ऐसे कोई टर्म नहीं आने वाले, ना तो ये आएगा ना ये आएगा, सिर्फ एक ही टर्म सही है और वो ये है। नाउ टेल मी डियर, टिल नाउ इट इज क्लियर? फटाक से बोलो बेटा, टिल नाउ इट इज क्लियर? या टेल मी फास्ट बॉस। ओके, वेरी नाइस। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए ध्यान देना अगले पॉइंट पे। जब भी आपको आरएलई या इस टाइप की बातें कही हो, उसमें एक बात को और हमेशा ध्यान रखना, प्लीज बी सीरियस बेटा। इफ कन्वर्टर आइडियल, इफ कन्वर्टर इज आइडियल, ओके, ओनली देन पी नॉट इज इक्वल टू पी एस, सप्लाई पावर इज इक्वल टू दिस वन। यानी कि बेटा आप ऐसे लिख सकते हो, आई नॉट आरएमएस स्क्वायर इंटू आर प्लस बेटा ई इंटू आई नॉट एवरेज is equal to single phase power Vs Is cos phi, और you can write बेटा 3 phase power, जैसा क्वेश्चन हो उस हिसाब से I phase RMS into cos phi। बट कब, जब आपका कन्वर्टर क्या हो, आइडियल हो। अगर कन्वर्टर आइडियल नहीं है, कन्वर्टर प्रैक्टिकल है, देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। फटाक से बोलो, इतनी बात क्लियर है? वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ वी वांट टू डिस्कस बेटा अवर कन्वर्टर। अभी तक पहले यहां तक बोलो, अभी तक यहां तक बोलो सभी लोग, बालक इतनी बातें क्लियर हैं? ओके, वेरी नाइस कृष्णा, अभी तक बोलो सभी लोग बेटा, अभी तक की सारी बातें क्लियर हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर। ओके एवरीवन, समय का थोड़ा अभाव है। सिंगल फेज हाफ वेव, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, या वेरी नाइस। चलो, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। कुछ फार्मूले की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इतना समय नहीं है, मुद्दों पे बात करते हैं। ओके, तो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में वी वांट टू डिवाइड अवर दिस थिंग, या नमस्कार, थैंक यू। नाउ ध्यान देना बेटा, सिंगल फेज हाफ वेव को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं, एक विथ इंडक्टेंस और सेकेंड वन विदाउट इंडक्टेंस। मैं क्षमा चाहूंगा, यहां पे मैं सारे फॉर्मूले ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। ओके, सो फर्स्ट केस आई वांट टू टेक सम अनकंट्रोल्ड रेजिस्टिव लोड। ओके, अनकंट्रोल्ड रेजिस्टिव लोड, पूरा कंसंट्रेशन रखिएगा बालक, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। अगर कहीं से भी आप अभी ना गेन कर पा रहे हो, तुरंत प्लेटफॉर्म छोड़ दीजिएगा, और अगर आप गेन कर रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेशन रखना है इस मोमेंट। देखो, जब भी बात आपसे करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर विद प्योर रेजिस्टिव लोड, ओके, क्वेश्चन क्या बनेगा, कहां से बनना चाहिए, ध्यान देना। दे विल नॉट आस्क यू आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, आउटपुट करंट वेवफॉर्म, एनी डिवाइस वोल्टेज वेवफॉर्म और करंट वेवफॉर्म। आप कहोगे सर जी समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जो भी कन्वर्टर आसान होगा उसकी वेवफॉर्म नहीं पूछी जाती हैं इन जनरल, उसकी वेवफॉर्म नहीं पूछी जाती। वेवफॉर्म कब पूछी जाएगी? जब कन्वर्टर में कंट्रोवर्सी आए, जब कन्वर्टर में कुछ ऐसा हो रहा हो जहां पे 90% जनता फेल हो रही हो, वहां पे वेवफॉर्म की बात पूछी जाती है बालक। ओके, हमेशा क्वेश्चन थोड़ा सा
हटके होगा, थोड़ा सा हटके होगा। नोबडी विल आस्क यू व्हाट विल बी द वी नॉट वेवफॉर्म, आई नॉट वेवफॉर्म, इन जनरल आई वांट टू से रेजिस्टिव पावर, सप्लाई पावर। ना भाई, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला। क्वेश्चन इस टाइप के कन्वर्टर में क्या बन सकते हैं हमें पता है बेटा, इट इज अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर। सो दे कैन आस्क यू व्हाट विल बी द कम्यूटेशन टाइम। ओके, जैसे यहां पे एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन छोटे से मोटे बन सकते हैं, व्हाट विल बी द कम्यूटेशन टाइम, व्हाट विल बी द नेचुरल कम्यूटेशन टाइम, एक क्वेश्चन। अगला समझिए, व्हाट विल बी द सप्लाई पावर फैक्टर, व्हाट विल बी द रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी। तो दो बातें जरा समझो, एक तो बेटा ये सप्लाई हो गया और एक ये लोड हो गया। सप्लाई साइड इन जनरल जो बात कही जाएगी वो cos फाई की कही जा सकती है बेटा, फोरियर सीरीज ऑफ आई एस पूछा जा सकता है, खत्म। यहां पे आओ तो इफिशिएंसी की बात पूछी जा सकती है, और यहां पे आओ तो बेटा या तो कंडक्शन लॉसेस पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे कंडक्शन और कम्यूटेशन टाइम पूछा जा सकता है। कंडक्शन और कम्यूटेशन टाइम, जितना इजी क्वेश्चन दिखे सर्किट वाइज, उसमें आपको इन मुद्दों पे वर्क करना है। किस पे? सप्लाई पावर फैक्टर, फोरियर सीरीज, कंडक्शन टाइम, इफिशिएंसी एंड सॉरी समवेयर हियर इफिशिएंसी, हियर कंडक्शन और कम्यूटेशन टाइम। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक। नाउ फटाक से बोलो, इतनी बात क्लियर है बेटा? समय बहुत ले रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलिए। अब देखो, जब भी बेटा वो अनकंट्रोल्ड की बात करेंगे तो अनकंट्रोल्ड में हमें भी पता है यार कि उतनी बारीकी नहीं ला पाते हैं, तो अनकंट्रोल्ड की जगह वो इस डिवाइस को क्या किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एससीआर से। और अगर एससीआर से रिप्लेस कर दिया तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ा दी ना उसने। अगला पॉइंट बेटा, अगर यहीं पे हम लोग थोड़ा चेंज करें इसको, सो नाउ आई वांट टू रिप्लेस दिस एससीआर, सॉरी दिस डायोड बाय एन एससीआर, खत्म करो। अब ध्यान दो, जब भी हम बात करते हैं बेटा प्योर रेजिस्टिव लोड की सिंगल फेज हाफ वेव में, क्वेश्चन बहुत लिमिटेड रहते हैं। यही क्वेश्चन है, अगर नहीं होता है, अगर थोड़ा भी मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस को यूज करता हूं तो इससे बाहर इस सर्किट से क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। ओके, अब जरा ध्यान से समझो, जब भी हम बात करते हैं एससीआर की, हमें यार पता है कि अगर डायोड होगा तो 0+ पे डायोड ऑन हो जाएगा इस कन्वर्टर में, और अगर एससीआर हुआ तो तब ऑन होगा भैया जब हमें जरूरत होगी, जब हमें जरूरत होगी। तो अगर हम अल्फा को 0 करें, फटाक से समझो, कोई ऐसा नहीं कि मैं पूरी वेवफॉर्म बनाने जा रहा हूं, अगर हम बेटा अल्फा को 0 करें तो आउटपुट कुछ ऐसा बनेगा, 0 पाई एंड 2 पाई एंड समवेयर हियर वी कैन राइट बेटा V0 एंड दिस वन, ये हो गया V0। अब देखो तसल्ली से, अगर ये लोड प्योर रेजिस्टिव है तो I0 की वेवफॉर्म क्या होगी बालक? I0 की वेवफॉर्म वही होगी बेटा, ओम्स लॉ, I0 प्रोपोर्शनल टू V0, सिंगल एलिमेंट इन लोड। सर जी ने बताया था, याद है मुझे, कि जो भी V0 का नेचर होगा वही I0 का नेचर होगा। सपोज बेटा कोई आपसे ऐसे पूछता, इस क्वेश्चन को मोल्ड करके, इस क्वेश्चन को मोल्ड करके ऐसे पूछता कि एक लोड है जिसका V0 ये है, एक लोड है जिसका V0 ये है, एंड इंटायर लोड इज फॉलोइंग ओम्स लॉ, देन व्हाट विल बी द करंट वेवफॉर्म? गारंटेड दिस वन, गारंटेड सेम वन, थोड़ा अंतर होता Vm/R और इसको लिख देते I0, खत्म। तो जब भी आपको डायरेक्ट ओम्स लॉ मिले, आपको I0 की वेवफॉर्म पे फोकस ही नहीं करना है, कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे ही आपको ये कहानी मिली, आपको बस यहां से 2-3 बातें मेरी याद रखनी है कि अब सर जी ने जो कहा था कि अगर V0 ऐसा कुछ है अल्फा 0 पे, तो I0 भी बेटा ऐसे ही कुछ होना चाहिए, और I0 प्रोपोर्शनल टू V0 है, तो एक बात कंफर्म हो गई कि बेटा I0 एवरेज हमेशा V0 एवरेज बाई R होगा, और I0 RMS हमेशा V0 RMS बाई R होगा। बट ये ध्यान रखना, ओनली फॉर प्योर रेजिस्टिव लोड, ओनली फॉर प्योर रेजिस्टिव लोड, ओनली फॉर प्योर रेजिस्टिव लोड, अदरवाइज नॉट वैलिड, अदरवाइज नॉट वैलिड। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा। अगला पॉइंट ये है कि अगर हमारा डायोड नहीं होता और एससीआर होता तो हम किसी एक एंगल पे ट्रिगर कर रहे होते, और किस एंगल पे ट्रिगर करेंगे? इन जनरल हम उसे अल्फा मान लेते हैं बेटा, हमने मान लिया अल्फा, यानी कि अल्फा से लेके पाई तक V0 Vs के बराबर होता, इक्वल होता। इसके बाद आगे बढ़ते तो फिर ऐसे इसको साइकिल रिपीट हो जाती, यानी कि ये हो गया पाई बेटा, समवेयर हियर वी कैन राइट 2 पाई एंड समवेयर हियर वी कैन राइट 2 पाई प्लस अल्फा ओमेगा टी, ऐसे करके कुछ V0। और जो बालक
और जो बेटा जी पूत जो नेचर V नॉट का होता डेफिनेटली वही नेचर I नॉट का होता। तो ऐसा क्वेश्चन 2016 में आया, आई थिंक 2012 में आया, ईयर तो बहुत प्रॉपर नहीं याद है मुझे, बट क्वेश्चन तो रिसेंटली अभी आया था 2-3 साल पहले, जब उसने पूछा था व्हाट विल बी द पावर फैक्टर फॉर दिस गिवन कन्वर्टर इन सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर, आई थिंक विद प्योर रेजिस्टिव लोड। तो क्या उस क्वेश्चन को हमें छोड़ के आना चाहिए था? नहीं। क्या उस क्वेश्चन को इंडिया के सभी लोगों ने सही किया होगा? ऑब्वियसली नहीं। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बनाना छोटे सर्किट से कॉम्प्लेक्स इजी होगा, नहीं, कॉम्प्लेक्स होता है क्वेश्चन बनाना, क्योंकि क्वेश्चन का एक लेवल रखा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल 2008 या 9 में जो क्वेश्चन आया था, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर समथिंग आउटपुट मैक्सिमम वोल्टेज वाज गिवन। ओके, तो उस टाइप के क्वेश्चन हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। नाउ टेल मी एवरीवन, इट इज क्लियर और नॉट? जल्दी बोलो बात बेटा जी प्लीज। अब देखो ध्यान देना, जब भी हम बात करेंगे बेटा, अच्छा ये बताओ अभी तक सही चल रहा है, इतना समझ में आ रहा है ना ये सब वेवफॉर्म कैसे आ रही हैं? सभी लोग यार एक बार बोलिए फटाक से, ये सब कुछ क्लियर हो रहा है? क्योंकि देखो यार अब इतना टाइम नहीं कि मैं आपको ये बताऊं कि ये ऑन होगा ये ऑफ होगा, वो आप समझो अपने हिसाब से। तो अब जब भी हम बात करेंगे इस टाइप की, तो आपको ध्यान रखना है खास तौर से यहां V नॉट की वेवफॉर्म में, V नॉट की वेवफॉर्म में आपको इस मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है, दिस मैग्नीट्यूड माय डियर फ्रेंड Vm sin अल्फा। आपको यह ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, जिस एंगल पे आप ट्रिगर करोगे उस पे प्योर रेजिस्टिव लोड में जो पीक वैल्यू मिलेगी आउटपुट वोल्टेज की, वो क्या होगी? Vm sin अल्फा। फॉर एग्जांपल बेटा अगर अल्फा 90 डिग्री है तो ये पीक वैल्यू Vm हो जाएगी, और अल्फा लेस देन और ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली पीक वैल्यू लेस देन Vm होगी। सो टोटली डिपेंड्स अपॉन द सर्किट। ओके, दिस मींस ट्रिगरिंग वैल्यू ऑफ अल्फा। अगला ये जो पीक वैल्यू है बेटा दैट विल बी Vm ओनली, बट Vm कब होगा ये पीक आउटपुट वोल्टेज? ओनली व्हेन अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर यहीं पे अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री कर दी जाए तो बेटा जी आउटपुट मैक्सिमम वोल्टेज हमेशा के लिए क्या हो जाता है? Vm sin अल्फा। हमेशा के लिए क्या हो जाता है? Vm sin अल्फा। ओके, पक्का क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड, आर लोड इज कंप्लीटेड, आर लोड इज कंप्लीटेड, कोई फोर्सफुली कंडक्शन नहीं होगा, नेचुरल कम्यूटेशन विल टेक प्लेस, द जोन इन विच आवर एससीआर विल फेस नेगेटिव वोल्टेज, that period is called natural commutation period. In other words my dear friend, अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि अपने पास एक साइनोसॉइडल वोल्टेज सप्लाई ये है इसी कन्वर्टर के लिए, सेम कन्वर्टर के लिए, और मैं यहां अल्फा लेना चाह रहा हूं, यहां बेटा पाई और 2 पाई लेना चाह रहा हूं, यहां पे 2 पाई प्लस अल्फा लेना चाह रहा हूं, तो we have finalized that alpha to pi our device SCR is on, and we know that my dear friend when SCR is on the voltage across SCR will be 0. So I want to make this reference 0. In this period our SCR is on, and when SCR is off, according to the circuit configuration, see here beta, according to this circuit configuration we can say here Vs and R and V नॉट। एक बात क्लियर हो गई सर जी, समझ गए हम लोग कि अगर I नॉट 0 होगा तो ये जो थायरिस्टर और SCR वोल्टेज है वो VT किसके इक्वल हो जाएगा? VS के इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये सारा का सारा VS क्या बन जाएगा बेटा? VT। किस रेंज में बनेगा VT? इस रेंज में बनेगा भैया, अल्फा देन 0 देन ये, और ये खत्म। अब देखो यहां पे SCR का जो वोल्टेज है बेटा VT, वो वोल्टेज क्या है? पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है? पॉजिटिव है, और जब SCR का एनोड बेटा कैथोड से हाई होता है तो कौन सा मोड होता है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। पढ़े हैं मास्टर जी, याद है मास्टर जी हमें? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का मतलब बेटा जी नेचुरल कम्यूटेशन नहीं है, हमारी नीड है, इसलिए हम ट्रिगर नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द नेचुरल कम्यूटेशन पीरियड? द नेचुरल कम्यूटेशन पीरियड इन विच नोबडी कैन ट्रिगर अवर SCR and guaranteed that SCR will be in reverse mode at any cost. Okay, like with the help of any signal, doesn't matter that is dV by dt triggering or any other type of triggering, we can't turn on this device SCR in reverse mode. Okay, so entire reverse mode will come into the category of natural commutation. Never consider forward blocking time period in the natural commutation period, my dear friend. So 0 to alpha, here this VAK is positive, so it is forward blocking mode, but where is pi to 2 pi, this period is called natural commutation period. So in this natural commutation period, guaranteed our device cannot turn on, and this period is called, my dear friend, commutation period. अब आपको पता है सर जी, अब याद आ गया, ये ओमेगा टी होता था, ये पाई है, सो व्हाट विल बी द कम्यूटेशन पीरियड? ओमेगा टी इक्वल टू पाई, सो टीसी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा सेकेंड्स। नाउ माय डियर फ्रेंड टेल मी, इट इज क्लियर और नॉट? सर वन क्वेश्चन ऑन पावर फैक्टर प्लीज। याद है
ओके वेरी नाइस बेटा, कुछ कहना चाह रहे हैं सर, रजिस्टिव लोड के अक्रॉस आरएमएस पावर निकालना है हाफ वेव में। आरएमएस पावर नहीं बोलना चाहिए बेटा, पावर हमेशा एवरेज बोलो। जब भी रेजिस्टेंस की पावर निकालनी है तो आपको आरएमएस करंट और वोल्टेज यूज करने हैं, और जब भी बैटरी की पावर निकालनी है तो आपको हमेशा एवरेज करंट यूज करनी है। दैट इज द ओनली ट्रिक। ओके, ट्रिक भी नहीं बोलेंगे, दिस इज द ओनली वे। आगे बढ़े। ओके, so now till now we have completed pure resistive load, half wave rectifier, controlled और uncontrolled both things। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूं। everyone बेटा जी अगर हल्के भी सीरियस है, हल्के भी अपने गेट से आने वाले गेट से मोहब्बत है, पेन और कैलकुलेटर उठा लीजिए तुरंत। ओके, एंड आई वांट टू गिव यू सम टाइम। ओके, अराउंड 3 मिनट्स। सो 3 मिनट्स तक के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, स्क्रीन पे अपीयर नहीं होगा, आप अपने हिसाब से हैंडल कीजिए। सो दिस इज द टाइम। ओके, सिंगल फेज हाफ वेव controlled rectifier as shown in figure, okay, has the following data, okay, has the following data. Vs is 400 volts 50 hertz, okay, load is pure R 50 ohm, okay, and your converter will look like something. This one supply is this, so plus minus Vs R, and here alpha is, my dear friend, 270 degree. Okay, alpha is 270 degree. So calculate supply power factor and efficiency, फटाक से। समय बहुत कीमती है, मुझे बार बार ये नहीं कहना चाहिए, आप खुद ही समझदार हैं। ओके, सो दिस इज योर टोटल इंफॉर्मेशन। सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर as shown in figure has the following data: Vs 400 volt 50 hertz, load is pure resistive, alpha 270 degree, and we have to calculate supply power factor and efficiency. Time is 3 minutes. Okay, so 3 मिनट है आपके पास, फटाक से स्टार्ट करिए। ओके, जो भी डाउट आ रहा है यू कैन आस्क टू मी। सप्लाई दिया है, एससीआर दिया है, लोड इज प्योर रेजिस्टिव। ओके, यस। मीनवाइल जब तक है एससीआर ऑफ है तब तक एससीआर ऑफ है, जब तक एससीआर ऑफ है या जब तक एससीआर मैं समझ नहीं पा रहा हूं आजम, बट आई वांट टू से और टेल यू, आई थिंक यू आर आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू कम्यूटेशन टाइम। तो देखो, कम्यूटेशन टाइम में बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी हम बात करेंगे कम्यूटेशन टाइम कैलकुलेशन की, तो आपको वो पीरियड फाइंड आउट करना है जिसमें VA क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। इसके अलावा जो भी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का टाइम है उसको कंसीडर नहीं करना है। दैट इज द लाइक अनदर पार्ट। ओके, यस, एनी अदर बेटा? या सो सी आराम से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आई एम हियर ओनली। यस यस, आराम से कैलकुलेटर उठाओ, थोड़ा सोचो, कोशिश करो, हल्की सी कोशिश करो, या हल्की सी कोशिश करो। देखो, अब आपके स्टेप मैच करो, देखो अगर एज ए प्लस स्टूडेंट की बात करें, एवरेज प्लस स्टूडेंट की बात करें, तो उसको दो बातें ध्यान पे रहेंगी यहां पे कि भैया एक पूछा है कॉस पाई और एक पूछा है एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं बेटा, साथ में कॉस पाई फॉर्मूला इज, वे देखा करो लिखने का, PSSS, एंड इफिशिएंसी फॉर्मूला इज बेटा P0 DC बाय P0 AC। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। दिस डायोड इज दिस एससीआर इज आइडियल और प्रैक्टिकल। आप कहेंगे सर जी कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं दी है जिसमें ये बोला गया हो कि एससीआर प्रैक्टिकल है, तो इसका मतलब एससीआर क्या हो गया बेटा? आइडियल। ये प्रैक्टिकल कब होता? जब कोई हमसे बोलता, ध्यान से समझो बेटा, जब कोई हमसे बोलता कि एससीआर का टर्न ऑन रेजिस्टेंस ये है या कट इन वोल्टेज ये है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सो दैट मींस दिस एससीआर इज आइडियल। आपका दिमाग खनका और आपको ध्यान आया कि सर जी ये बोला करते थे कि व्हेनेवर आवर कन्वर्टर इज आइडियल, इट मींस दिस सप्लाई पावर विल ऑलवेज इक्वल टू लोड पावर। So here my dear friend we can write some V0 voltage, some current I0 and this current IS। और आपको ध्यान आ गया तो आपने कहा सर जी अच्छा पावर फैक्टर ही तो कैलकुलेट करना है। आसान है भाई। आसान कैसे है कि अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो लोड पावर क्या होगा बेटा? लोड पावर सर जी आपने समझाया था, फॉर प्योर रेजिस्टिव लोड ये भी लिख सकते हैं,
ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑल टर्म्स आर इक्वल। और सप्लाई पावर तो बड़ा स्टैंडर्ड है, उसमें कोई चेंजेस होने ही नहीं है। VS RMS IS RMS इंटू cos फाई, डन। अब देखो बेटा, अगर कन्वर्टर आइडियल है तो काफी बार सर हम लोग आपस में डिस्कस किए हैं कि P0 इज इक्वल टू PS, खत्म। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, ये पावर फैक्टर। तो देखो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा फाइनली, पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू PS। PS मतलब VS RMS IS RMS इंटू cos फाई डिवाइडेड बाई बालक VS RMS इंटू IS RMS इज द एपरेंट पावर। आप कहेंगे सर जी इस टर्म को लिखने से cos फाई कैंसिल हो जाएगा, तो फायदा क्या है, तो इसको चेंज करते हैं। तो अब हमें पता है बेटा, फॉर आइडियल कन्वर्टर दिस टर्म इज ऑल्सो इक्वल टू V0 RMS इंटू I0 RMS डिवाइडेड बाई माई डियर फ्रेंड VS RMS IS RMS, खत्म। अब आप कहेंगे सर जी I0 और IS ये कैसे कैलकुलेट करेंगे और V0 RMS कैसे कैलकुलेट करेंगे। VS RMS का तो आइडिया है, बिकॉज सप्लाई इज ऑलवेज सिंगल फेज इन दिस क्वेश्चन। तो अगर हम लोग बेटा सप्लाई वोल्टेज VS की बात करें, सो स्टैंडर्ड वोल्टेज इज नथिंग बट VM sin omega t, where this VM value according to given question, how much this value information is there beta, I think yeah 400 volts. So 400 volt 50 hertz. So 400 volts is the RMS value. Okay, you can understand here. So this 400 volts RMS value. So total supply voltage will be this one. खत्म बात, ये हो गया बेटा सप्लाई वोल्टेज 400 रूट 2 साइन 314 t। बताओ यहां तक बात क्लियर है, क्लियर, जल्दी बोलो यार। या वेरी नाइस। सो बेटा 400 साइन ओमेगा टी, डन करो, आगे बढ़ो। तो देखो ये हो गया स्टैंडर्ड, इसका मतलब VS RMS विल बी VM बाई रूट 2 ऑलवेज। ओके, वर्डिंग देखो, ऑलवेज, और इट इज फैक्ट, और इट इज फैक्ट, बट only for pure sine और cosine सप्लाई। इसके अलावा कोई दूसरी सप्लाई दे दी और आपने VM बाई रूट 2 लिख दिया, तो ये समझ लीजिए दुनिया का नहीं पता, मैं कूट दूंगा के आपको। ओके, ध्यान से समझो, ओनली फॉर प्योर साइन और cosine सप्लाई वी कैन राइट VM बाई रूट 2। तो इसको तो कभी कैलकुलेट करना ही नहीं है। कैलकुलेट किसको करना है बेटा, V0 I0 और IS को। अब चलते हैं कन्वर्टर पे, एग्जाम में कैसे हैंडल करेंगे वैसे ही मैं चल रहा हूं आपके साथ। देखो ये रहा कन्वर्टर, एक बात क्लियर है बेटा, या तो SCR ऑफ होगा या SCR ऑन होगा। अगर ऑफ हुआ तो ओपन सर्किट सारी करंट जीरो, खत्म करो। और अगर शॉर्ट हुआ तो I0 और IS इक्वल है, यानी कि एक बात कंफर्म हो गई बेटा, इट इज काइंड ऑफ सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। सो हियर माय डियर फ्रेंड वी कैन राइट I0 इक्वल टू IS फॉर ऑल टाइम। एग्री हो कि नहीं, जल्दी बोलो, एग्री हो कि नहीं, फॉर ऑल टाइम I0 इक्वल टू IS। इफ I0 इक्वल टू IS फॉर ऑल टाइम, हमने पावर फैक्टर निकाला बेटा V0 RMS इंटू I0 RMS डिवाइडेड बाई बेटा VS RMS इंटू, ऐसे ही एग्जाम में करना, कैंसिल भैया, ऑल टाइम के लिए इक्वल है, कैंसिल, खत्म करो। यानी कि आप बचा बेटा V0 और VS RMS स्टैंडर्ड VM बाई रूट 2, आप क्या बचा बेटा V0 RMS, बस। अब यहां पे बात फंस गई, यानी कि अब हमें चलना पड़ेगा कन्वर्टर पे। किस एंगल पे बेटा SCR को ट्रिगर कर रहे हैं, मान लो अल्फा इक्वल टू 270 पे, मान लो अल्फा इक्वल टू 270 पे। तो कुल मिला के बेटा अगर हम V0 की वेवफॉर्म देखें, नॉट फॉर 270 डिग्री, फॉर इन जनरल वैल्यू ऑफ अल्फा, कुछ भी इस टाइप से, तो आपको ध्यान आ रहा होगा 0 अल्फा पाई एंड 2 पाई प्लस अल्फा एंड सो ऑन, समवेयर हियर वी कैन राइट 2 पाई। क्या आता था बेटा V0 RMS का फॉर्मूला, कुछ याद है हल्का सा, बोलिए, VM बाई 2 रूट पाई ब्रेकेट पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा। आप कहेंगे मास्टर जी आप तो पढ़ा रहे हैं इसलिए आपको मगफ हो गया, हम क्या करेंगे एग्जाम में, कुछ नहीं करना है। आओ एग्जाम में अगर भूल जाओ तो इतना तो कर ही सकते हो ना, वरना पेपर देने क्यों जा रहे हो, एग्जाम देने फिर मत जाना अगर इतना काम नहीं कर सकते हो तो। देखो 0 से लेकर अल्फा बेटा 0 है, अल्फा से पाई बेटा VM sin ओमेगा t है, और पाई से लेकर 2 पाई तक 0 है सिग्नल। क्या इसकी आरएमएस वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? आप कहेंगे सर जी अरे बहुत आसान है, ये फंक्शन है VM sin ओमेगा t एंड दिस पीक वैल्यू इज VM, खत्म करो। यानी कि V0 RMS बेटा कैसे निकालते थे, 1 बाई टाइम पीरियड इंटीग्रेशन लिमिट अल्फा टू पाई, व्हाट इज दिस फंक्शन बेटा, VM sin ओमेगा t होल स्क्वायर d ओमेगा t टू पावर हाफ। ये लो आ गया, ऐसे आरएमएस वैल्यू निकालते थे, और इस आरएमएस वैल्यू सॉरी इस इंटीग्रेशन को अगर हैंडल करोगे देन योर आरएमएस वैल्यू विल बी दिस वन, खत्म। अब इसमें आप अल्फा 270 रखो, 180 रखो, 90 रखो, जो दिया है वो,
सॉरी अल्फा 270 है, 270 तो बेटा गलत हो जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इज नथिंग बट 180 डिग्री. सो हियर माय डियर फ्रेंड अल्फा इज नॉट 270 डिग्री. और अगर कोई 270 डिग्री दे देता तो आंसर क्या होता? 0 and 0. अगर कोई 270 डिग्री दे देता बेटा तो इफिशिएंसी और पावर फैक्टर दोनों क्या होते हैं? 0. यानी कि अल्फा की वैल्यू अगर 180 डिग्री से ज्यादा इस केस में दिया है तो आपको क्वेश्चन हैंडल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भैया हम तो ट्रिगर नहीं कर सकते. सो अगर मैं क्वेश्चन पे जाऊं बेटा, जब मैंने 270 डिग्री लिखा है तो उस केस पे आपका आंसर होना चाहिए था पावर फैक्टर 0, इफिशिएंसी 0. बट आई डोंट वांट टू गिव यू अल्फा 270 क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है बेटा. सो हियर आई वांट टू राइट अल्फा लाइक 90 डिग्री, 120 डिग्री, व्हाटएवर. ये सारी वैल्यूज जो अल्फा की गिवन होगी वो आपको यहां पे पुट करनी है. नाउ माय डियर फ्रेंड वी कैन कैलकुलेट अवर पावर फैक्टर. एक बात. दूसरा पॉइंट देखो बेटा, अगर V नॉट RMS आ गया और हमें पावर फैक्टर निकालना है तो क्या cos phi इज इक्वल टू ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, Vm/2 √pi. समझ लो एक ही क्वेश्चन में बार बार इस टाइप के क्वेश्चन नहीं उठाएंगे हम लोग. sin 2 α/2 2 पावर हाफ डिवाइडेड बाय बेटा Vs RMS इज Vm/√2. So Vm cancel, √2 something cancel. So what will be the power factor formula? Here we can try 1/√2 pi bracket pi minus alpha plus sin 2 alpha divided by 2 power half. बोलो आया? क्लियर हुआ बेटा? डन. यस बोलिए everyone tell me. Alpha should be yeah, very nice. Yeah, Pallav, it is clear बेटा to everyone. फटाक से बोलिए. ओके तो थोड़ी स्पीड दिखानी पड़ेगी. नाउ बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर दिस इफिशिएंसी. अच्छा, इफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टर क्या होगा? AC to DC only. So this efficiency we can write for uncontrolled or controlled, for both one are always same. P naught AC something, and this value we can write बेटा V naught average into I naught average divided by my dear friend V naught RMS into I naught RMS. अब आप कहेंगे सर जी अब दिक्कत हो गई, क्योंकि आप कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होगा. ओके, बिकॉज I naught average is not equal to I naught RMS and V naught average is not equal to V naught RMS. ये सारे टर्म आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने हैं, and by this approach you can find the efficiency of the converter. Okay, hopefully this thing is clear. बोलो बालक बोलो. Yes, everyone tell me fast. आगे बढ़े. So this is the first case of AC to DC converter. Now my dear friend, I want to tell you another example, और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने की और. So it is the case 2 or example 2. Now I want to give you simple question somewhere here. Okay, तो ये हो गया RE load and somewhere here one supply is given Vs is equal to Vm sin omega t RE and I want to V naught and I naught. मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को खुद ही हैंडल करेंगे. ओके, खुद ही हैंडल करेंगे. चलो पहला मैं क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना. V naught I naught क्वेश्चन, दिस सर्किट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, प्लीज टेल मी एवरीवन, IS IT and I naught all are equal. Is correct or not? Is correct or not? Yeah, everyone tell me. Is correct or not? Second term I want to say you beta, load power P naught equal to V naught RMS into I naught RMS and supply power PS is equal to VS and IS into cos phi. फटाक से बोलो बेटा, तीनों इक्वेशन लिखी गई सही हैं कि नहीं? ओके, सो यस टेल मी प्लीज एवरीवन, ऑल इक्वेशंस आर करेक्ट और नॉट? यस, ऑल इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल इक्वेशंस आर करेक्ट और नॉट? जल्दी से बोलते रहिए बीच में. या वेरी नाइस. P naught इज रॉन्ग. सो माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट देखो ध्यान से समझो. आपको पढ़ा नहीं सकता इस टाइम पे, लेकिन हाँ इतना है कि बेटा मैं समझा सकता हूं कि कहां पे इन जनरल मिस्टेक होंगी. सो नाउ हियर दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट बिकॉज एट दिस मोमेंट वी हैव 2 एलिमेंट्स इन अवर लोड. सो इस तरीके से कुछ कहानी है. अगले पॉइंट पे समझते हैं बेटा. व्हाट विल बी द लोड पावर फिर? तो आप कहेंगे सर जी आसान है, कितने एलिमेंट लोड में बेटा? 2 हैं और दोनों की कुछ ना कुछ पावर होगी. तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, I naught RMS स्क्वायर इंटू R प्लस E इंटू I naught एवरेज. खत्म करो. बताओ क्लियर है? समझते रहिए, क्लियर है? अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं बेटा, क्या बता सकते हो कि इस SCR का कंडक्शन पीरियड कितना होगा? व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्शन पीरियड ऑफ दिस SCR? मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्शन पीरियड. तो देखिए क्वेश्चन समझते रहिए और रिप्लाई करते रहिए. तो अगला मेरा इसी में क्वेश्चन आ रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल
conduction period of SCR. Maximum possible conduction period of an SCR for this particular circuit. Okay, I want to give you few option बेटा. A option है आपका pi by omega seconds. B option है बेटा pi plus 2 theta by omega seconds. एक्टिव रहिए यार, वरना बात नहीं बन पाएगी. सी ऑप्शन है बेटा जी पाई प्लस 2 थीटा पाई माइनस 2 थीटा बाई ओमेगा सेकेंड्स. एंड लास्ट ऑप्शन है डी बेटा 2 पाई बाई ओमेगा सेकेंड्स. ओके, नाउ वेयर थीटा इज नथिंग बट साइन इनवर्स ई बाय वी एम. Now tell me beta, what will be the maximum possible conduction period of an SCR for the particular given converter? Yes, tell me. Here you have some options. Yeah, सभी लोग बोलिए बेटा, सभी लोग. Depending on the value of E. Yeah, E is not zero. R and E both are not zero. R and E बेटा both are not zero. कम से कम जीरो नहीं है. या वेरी नाइस, कम से कम जीरो नहीं है. ओके, बेहतरीन. सो मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्शन पीरियड इज दिस वन. जबकि अर्लियर कितना था बेटा मैक्सिमम पॉसिबल पाई, बट इन आर ई दिस इज लेस देन पाई. देखो आप समझ रहे हो. और इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में आ चुके हैं, तो आपको कोई सिली मिस्टेक नहीं करनी है. खत्म करो. सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन बेटा? दिस वन. व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट? सी प्रॉपरली. ओके, छोड़िए उस कन्वर्टर को. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, किसी भी सिस्टम को ये पता करने के लिए कि कितने टाइम के लिए डिवाइस ऑन रह सकता है, आपको सिर्फ रेफरेंस लेना है ये. सो दैट इज अवर सप्लाई वोल्टेज. अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, चाहे यहां पे एससीआर हो, चाहे यहां पे डायोड हो बेटा, और अगर कोई भी सप्लाई दी गई है वीएस, एंड हियर आई वांट टू राइट सम आर ई. ओके, सो सम आर ई, वेट अ मिनट. या सो सम आर ई. So this one. Now take some ground. अगर एग्जाम में कहीं भी कंफ्यूजन हो, आपको यही अप्रोच रखनी है. डिवाइस को ऑफ करना एग्जाम में. VS लेना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा. हियर हाउ मच वोल्टेज विल अपीयर बेटा? VS. और यहां से कितना आएगा? E आएगा. ये कौन सा डिवाइस होगा? SCR होगा, डायोड होगा, बीजेटी हो सकता है, मॉसफेट हो सकता है. तो मैं इसको अगर एससीआर और डायोड के रिस्पेक्ट में लिखे तो इसको VA लिख सकते हैं, इसको बेटा VK ले सकते हैं. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VAK? सो VAK ऑफ एससीआर और डायोड आर नथिंग बट VS माइनस E. डन. VS माइनस E. जब तक ये वोल्टेज पॉजिटिव होगा बेटा, अगर एससीआर है तो ऑन रहेगा, सॉरी अगर डायोड है तो ऑन रहेगा, और अगर एससीआर है तो आइदर एससीआर विल बी इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और इट विल बी इन कंडक्शन मोड. इट इज अवर चॉइस ओनली. तो ये ध्यान रखना है बेटा, जब भी हम VAK ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, अगर डायोड है तो इंटायर पीरियड में ऑन होगा, और अगर एससीआर है तो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली ऑन होगा. लेकिन एक बात कंफर्म है बेटा कि ये वो पीरियड होगा जहां पे एससीआर या डायोड पॉजिटिव वोल्टेज ब्लॉक करने जा रहे हैं. तो आप कहेंगे सर जी डायोड तो नहीं करेगा. हाँ नहीं करेगा, जस्ट बोलने के लहजे से समझो. जैसे ही डायोड पे बेटा पॉजिटिव वोल्टेज जाता है वो ऑन हो जाएगा, बट एससीआर में ऐसा नहीं है. तो अगर हम लोग यहां पे एक मोटा मोटी बात समझें, एंड आई वांट टू टेल यू कि ये कोई अपना वोल्टेज बेटा E है, तो इतने रीजन में आप देख सकते हैं. तो पिंक कलर बेटा, ये पिंक कलर is या बोल दे डार्क पिंक कलर बेटा is greater than light pink color something. So this is the area in which our VAK is greater than 0, or in other words बेटा our SCR will be forward blocking mode. और इस एंगल को कुछ बोल देते हैं थीटा. तो ये हो गया बेटा जी अपना पाई माइनस थीटा. बस ध्यान रखना यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं सभी लोग. ओके, एंड हियर बेटा आई वांट टू राइट सम पाई, and this is 2 pi omega t. So this is the maximum possible conduction period. How much बेटा? थीटा कम कर दो तो कितना बचाइए? पाई माइनस 2 थीटा. वेयर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा बेटा ये रहा इंटरसेक्शन, तो थीटा की वैल्यू फटाक से एग्जाम में लिख देना, साइन इनवर्स E बाई VM. ये VM पे भी ध्यान देना. VM इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज, एंड दिस कंपैरिजन इज वैलिड ओनली व्हेन योर सप्लाई इज साइनसॉइडल. इफ योर सप्लाई इज गोइंग टू चेंज, देन यू आर नॉट सपोज्ड टू अप्लाई दीज कांसेप्ट्स. नाउ टेल मी. ओके, यस सर पावर फैक्टर रिड्यूस होगा ना सर? या डेफिनेटली पावर फैक्टर बेटा जी रिड्यूस होगा.
यस, या वेरी नाइस। सो दिस इज द वे। अब अगर हम लोग यहां पे बात करें बेटा, तो कितने टाइम के लिए एससीआर ऑफ रहेगा, कितने टाइम के लिए एससीआर ऑफ रहेगा? उस टाइम इंटरवल में एससीआर ऑफ रहेगा जहां पे वी के लेस देन 0 है। तो वी के लेस देन 0 कहां पे है बालक? आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये रहा वो पीरियड जहां पे वी के लेस देन 0 है। तो ये क्या हो गया बेटा? एससीआर का कम्यूटेशन टाइम। यहीं से पता कर लो कितना मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक करने जा रहा है बेटा। देखो ये हाइट ई है और ये हाइट कितनी है बेटा? वीएम है। तो ये वीएम और ये ई दोनों को ऐड करो। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक बाय एससीआर और डायोड, एनीथिंग जो डिवाइस लगा होता उसके हिसाब से। वीडी मैक्स और वीटी मैक्स इज नथिंग बट वीएम प्लस ई। मैक्सिमम का मतलब है रिवर्स वोल्टेज, मैक्सिमम का मतलब है रिवर्स वोल्टेज। नाउ टेल मी। यस, वेरी नाइस। पक्का क्लियर है? पक्का क्लियर है सभी को बेटा? सो रिवर्स वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू वेरी इजी क्वेश्चन एट दिस मोमेंट। सभी लोग स्टार्ट योर जॉब। चलिए फिर से कैलकुलेटर उठाइए, फटाक से। समय है अपने पास, इतना है कि मैं आपके साथ हर पॉइंट पे खेल जाऊंगा। बस आप थोड़ा सा कैलसी उठाइए एंड टेल मी वट एवर आई वॉन्ट टू आस्क एट दिस मोमेंट। क्योंकि इसके बाद बेटा सीधे हम लोग सिंगल फेज हाफ वेव इंडक्टिव लोड के साथ डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज SCR, हियर आई वांट टू राइट VT, डन। ओके, नाउ आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, ओके ध्यान देना बेटा हर बात पे। VT मैक्स, ध्यान देना, गिवन VT मैक्स इज 560 volt and E is equal to beta Z 160 volts. Okay, E is equal to 160 volts and R is 10 ohm. R is 10 ohm. Okay, so calculate power consumed by battery. Calculate power consumed by battery if SCR is triggered, at alpha min. Okay, start your job. So my dear friend, in this converter given VT max is equal to thyristor maximum voltage is 560 volts, E is 160 volt, R is 10 ohm. We have to calculate power absorbed by battery and SCR is triggered at alpha minimum. Now start your job. Okay, सभी लोग बालक प्लीज फटाक से। देखो अब समय बर्बाद नहीं करना है यार, मतलब मैंने बोला है कैलकुलेट करना है तो करना है। अब आप ये समझिए कि आप गेट एग्जामिनेशन में बैठे, 1 से 2 मिनट या 3 मिनट आपके पास हैं। स्टार्ट योर जॉब। ओके, फटाक से बोलो। 3 मिनट के बाद मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करें। सो प्लीज स्टार्ट योर जॉब। आफ्टर 3 मिनट्स वी विल मीट। ओके, यस, स्टार्ट योर जॉब।
मेरा कैल्सी गायब है बेटा। थोड़ा शिफ्टिंग की थी तो नहीं आ रहा है, कैल्सी नहीं मिल रहा है मुझे। आप लोग बताइए आंसर क्या आ रहा है। यस एवरीवन, एवरीवन टेल मी। 587.11 नीरज, यस। एनी अदर बॉस, एनी अदर बॉस? तब तक लाइक और शेयर भी कर दीजिए यार, काफी कम बच्चे हैं, लाइक और शेयर मारो जल्दी से। तो देखो सबसे पहले ध्यान से समझना, ध्यान, रेडी, ध्यान देना बेटा। देखो आर ई लोड हमें सोचना ही नहीं, इंडक्टर विंडक्टर है ही नहीं, सोचना ही नहीं। एग्जाम में अगर मैं एज ए स्टूडेंट अगर बात करूं तो जरा ध्यान से सुनना, ऐसे खोपड़ी लगाते हैं, अच्छा आर ई लोड है, जरा ध्यान देना एज ए स्टूडेंट। अच्छा आर ई लोड है, आर ई लोड है, ओके मैंने ये पढ़ा हुआ है। ओके थायरिस्टर का मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता था, Vm प्लस ई होता था। तो हमने फटाक से यहां से एक वैल्यू को कैच किया बेटा, एंड दैट इज नथिंग बट Vt max is equal to, we know that Vm प्लस ई। वेवफॉर्म नहीं बनानी एग्जाम में जाके, वेवफॉर्म बना दिए तो लैग कर जाओगे, वेवफॉर्म बना दिए तो लैग कर जाओगे। Vm प्लस ई, अब यहां पे आ गया बेटा वैल्यू, तो Vm दिया, सॉरी दिस Vt max कितना दिया हुआ है, Vt max is given हाउ मच बेटा 560। जरा आप लोग कैलकुलेट करिए, मैं कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं आप पे। एंड दिस Vm इज अननोन एंड E इज गिवन 160, तो Vm यहां से कितना आ गया बेटा 400 वोल्ट आई थिंक ना, 400 वोल्ट। तो 560 160 या डन, तो 400 वोल्ट डन करो। आगे बढ़ जाते हैं। क्या पूछा है बेटा जी उस बंदे ने पूछा हुआ है SCR ट्रिगर एट अल्फा मिनिमम, देन व्हाट विल बी द PE। तो SCR अगर अल्फा मिनिमम पे ट्रिगर हो रहा है, सो व्हाट विल बी द अल्फा मिन। एवरीवन टेल मी व्हाट विल बी द अल्फा मिन, फटाक से बोलो व्हाट विल बी द अल्फा मिन। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, व्हाट विल बी द अल्फा मिन इन दिस केस। ओके सो सी, वही वेवफॉर्म, वही पुरानी वेवफॉर्म कंपेयर कर दो। सो दिस इज साइनोसॉइडल एंड समवेयर हियर आई वांट टू से ई, और यहीं पे कहीं पे बेटा ये हो गया थीटा। सो थीटा यहीं पे तो ट्रिगर कर सकते हैं ना, तो थीटा ही क्या हो गया बेटा अल्फा मिन। वेरी नाइस। सो व्हाट विल बी द अल्फा मिन, अल्फा मिन इज नथिंग बट थीटा। सो अल्फा मिन इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स E बाय Vm। डन, इतनी कहानी क्लियर हो गई बेटा। यहां से हम लोग वैल्यू जरा रखें, सो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स, व्हाट विल बी द E इज 160 डिवाइडेड बाय 400। डन, खत्म करो। अब देखो किस रीजन में SCR ऑन रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे स्टूडेंट की तरह सोचा करो। ये रहा सर वो रीजन जिसमें SCR ऑन रहेगा, इसी रीजन में तो करंट फ्लो होगी। और अगर करंट फ्लो होगी तो क्या फंक्शन होगा करंट का बेटा, ये रहा R, ये E। तो कितना आसान होता है यार, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं एज ए टीचर आसान बोल रहा हूं, एज ए स्टूडेंट मैं आसान बोल रहा हूं। देखो ये रहा I नॉट, अच्छा I नॉट निकालो, तो I नॉट का फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, KVL तो लगाना आता ही है ना, Vm sin ओमेगा t माइनस E डिवाइडेड बाई R। ये रहा फंक्शन बेटा। किस रेंज में बेटा, ये किस रेंज में करंट फ्लो होगी, जरा ध्यान देना। करंट फ्लो होगी बेटा थीटा से लेके पाई माइनस थीटा, बिकॉज इन दिस पीरियड VAK इज ग्रेटर देन 0 एंड SCR इज ट्रिगर्ड एट अल्फा मिनिमम इक्वल टू थीटा। बोलो क्लियर है, एट अल्फा मिनिमम इक्वल टू थीटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखो करंट अगर निकालना हो तो I नॉट एवरेज। आप कहेंगे सर I नॉट एवरेज पे आप क्यों गए, क्योंकि बेटा जी पावर कैलकुलेट करना है बैटरी की, और बैटरी पावर होती है E इंटू I नॉट एवरेज। खत्म जो, ओके। अब यहां पे आ जाओ, कितने पीरियड में, 1/2 पाई पीरियड है, इंटीग्रेशन लिमिट थीटा टू पाई माइनस थीटा, एंड व्हाट विल बी द फंक्शन Vm sin ओमेगा t माइनस E डिवाइडेड बाई R d ऑफ ओमेगा t। खत्म, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो फाइनली I नॉट एवरेज जो आएगा, दैट वैल्यू विल बी, जो मुझे याद है, Vm बाई 2 पाई R Vm इंटू बेटा कॉस थीटा माइनस कॉस पाई माइनस थीटा एंड माइनस E इंटू पाई माइनस 2 थीटा। पुट ऑल द इंफॉर्मेशन हियर, और जो भी I नॉट एवरेज आंसर आएगा उसका आप E के साथ मल्टीप्लाई करके पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलिए, देखो अभी तक जितने भी आंसर आप लोगों ने दिए बेटा, एक दो को छोड़ के सारे सेम आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आपने थीटा बोला है, ओके 23 पॉइंट समथिंग, तो अब यहां पे आइए और फाइनल आंसर दे दिए। बताओ इस टाइप का क्वेश्चन कहीं कठिन लगेगा आपको? मतलब ही नहीं होता यार हार्ड लगने का, मतलब ही नहीं होता हार्ड लगने का। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं? नाउ माय डियर फ्रेंड, वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद इंडक्टिव लोड। सो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ इंडक्टिव लोड।
विथ इंडक्टिव लोड। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, बिना क्वेश्चन किए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, सो हियर आई वांट टू टेल यू बेटा फर्स्ट केस। सो आर एल लोड हो गया, यहां पे अपना एससीआर हो गया। क्षमा चाह रहा हूं, मैं राइटिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाऊंगा। वीएस है, आर है, एल है, प्लस माइनस वी नॉट है, दिस करंट इज आई नॉट। And here my dear friend I want to say some thyristor voltage VT and supply current IS। ये बताइए बेटा सर्किट क्लियर है आपको? पहला सर्किट क्लियर है? सभी लोग फटाक से बोलो, पहला सर्किट क्लियर है? या वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आई वांट टू आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। हियर टू मोर वोल्टेज आई वांट टू शो VR एंड प्लस माइनस VL। तो देखो ये VR हो गया, ये VL हो गया। पहला मेरा ये क्वेश्चन है बेटा, I नॉट किस L के लिए कंटिन्यूअस होगा? IL किस L के लिए बेटा कंटिन्यूअस होगा? सो I नॉट विल बी कंटिन्यूअस फॉर विच वैल्यू ऑफ L? ऑप्शन फर्स्ट है आपका बेटा लो वैल्यू ऑफ L, लो वैल्यू ऑफ L। सेकेंड ऑप्शन है बेटा हाई वैल्यू ऑफ L, कंटिन्यूअस करंट चाहिए। थर्ड ऑप्शन है बेटा आपका वेरी हाई वैल्यू ऑफ L, वेरी हाई वैल्यू ऑफ L। फोर्थ ऑप्शन है आइडियल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। आइडियल मतलब उसमें रेजिस्टेंस हो ही ना, उसमें रेजिस्टेंस हो ही ना। और इन्हीं में से बस आपको फाइनलाइज करना है फॉर विच वैल्यू ऑफ दिस when alpha is 30 degree। I want to say कि alpha 30 degree है। and fifth option is none of these। okay, now think over it। single phase half wave controlled rectifier alpha equal to 30 degree। I want to ask you very easy question, for which value of L this load inductance I naught will be continuous? for very low value, high value, very high value, ideal value of inductance and none of these, and none of these। okay Yeah, sir, you are the India best faculty of power electronics। Yeah, thank you, Deepak। So now please tell me बेटा fast। देखो हर बात को समझते रहना है साथ में। Yes, low value of L, high value, very high, ideal value of inductance, none of these। क्या समझाया था? आप भूल गए हैं शायद, आप सभी लोग भूल गए हैं। एक दो आंसर सही आ रहे हैं, देखो ध्यान दो। हाफ वेव रेक्टिफायर will never provide, स्टेटमेंट देखा करो, हाफ वेव रेक्टिफायर विल नेवर प्रोवाइड। चलो मैं थोड़ा चेंज करता हूं, आई वांट टू से अल्फा इज 0 डिग्री। अब बताइए अल्फा इज 0 डिग्री एंड माय डियर फ्रेंड दिस R इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये आपके पास फिर से ऑप्शन हो गए। अब बोलिए मुझे, लो अल्फा 0 कर दिया, अल्फा इज 0 डिग्री, अल्फा इज 0 डिग्री। ये सब काम आएगा एग्जाम में डायरेक्टली। अल्फा 0 डिग्री, R इज नॉट इक्वल टू 0, अबाउट L ऑप्शंस आर गिवन, अबाउट L ऑप्शंस आर गिवन। चलो मैं एक ऑप्शन हटा देता हूं, लो ये लो। अब आपके पास 4 ऑप्शन हो गए बेटा, दिस वन। ओके, सो नाउ फॉर विच वैल्यू ऑफ L व्हेन अल्फा इज 0 डिग्री आवर I नॉट कैन बी कंटिन्यूअस? सो लो वैल्यू, हाई वैल्यू और वेरी हाई वैल्यू। जल्दी जल्दी प्लीज, जल्दी जल्दी थोड़ा सा। या सर रेजिस्टेंस जब तक प्रेजेंट है कंटिन्यूअस कंडक्शन नॉट पॉसिबल। या नाउ लिसन टू मी केयरफुली बेटा, सभी लोग ध्यान से समझो। डजंट मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, डजंट मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ओके, आइदर इट इज 0 डिग्री, 90 डिग्री और एनी अदर वैल्यू। In any case our I naught cannot be continuous because this converter is half wave controlled or uncontrolled converter with resistive load, so the charging time will always be more than discharging time। अगर MSQ टाइप के क्वेश्चन रखे तो इस टाइप के क्वेश्चन इजिली बन सकते हैं, इजिली राइज हो सकते हैं प्रोफेसर की साइड से। ओके, सो प्लीज बी सीरियस, दिस कन्वर्टर विल नेवर प्रोवाइड कंटिन्यूअस करंट, सो विल नेवर प्रोवाइड continuous current, will never provide continuous current। okay, current I naught, कभी भी आपको continuous I naught नहीं मिलेगा। hopefully this thing is clear, very nice। okay, so my dear friend for any value of alpha, चाहे वो अल्फा 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 90 हो, 170 हो, जो मन करे वो अल्फा लो भैया, हमें किसी भी केस पे आई नॉट कंटिन्यूअस नहीं मिल रहा। आप कहेंगे सर जी पिछले 3 मिनट से आप एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी आपने देखा होगा आपके रिस्पॉन्सेज गलत हुए थोड़े से, तो अब आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, डजंट मैटर, ध्यान दो, एक तो बात कंफर्म हो गई कि ये आई नॉट कंटिन्यूअस नहीं होगी। ओके,
अब दूसरा, डजंट मैटर बेटा कि व्हाट इज द कंडक्शन पीरियड ऑफ दिस SCR, वर्डिंग का सब खेल है. Doesn't matter what is the conduction period of this SCR, in any case the average voltage of this inductor will always be zero. The average voltage of this inductor will always be zero. In other words, my dear friend, the average power of this inductor is also zero. It means whatever power this inductor will consume from the supply in the first half cycle, same power inductor will return to the supply and this resistive element in the upcoming half cycle. You are this point is clear to everyone? Please tell me fast. This point is clear to everyone? Yes, everyone tell me fast. पक्का clear है? Okay? Yeah. Okay. So now this point is clear, I think. जैसे आपको वॉल्यूम में कोई दिक्कत हो मुझे बता देना. Okay? थोड़ी सी बैटरी डाउन है बट अभी काम चलेगा. Now this is the point. अगला पॉइंट समझना बेटा, प्लीज बी सीरियस. So in this case the VL average will be zero and average power of inductor is also zero. बाद में बात करेंगे क्या होगा कंडक्शन क्या नहीं होगा, वो बाद में देखेंगे. अब देखो लोड में कितने एलिमेंट थे बेटा, दो ही तो एलिमेंट थे. ऐसे ध्यान रखना, दो ही तो एलिमेंट है लोड में, और ये रहा V0 और यहां लिख दे करंट हम I0. So what will be the load power? P0 we can easily write बेटा I0 RMS square into R. Only single formula. In this case, my dear friend, this power will never equal to V0 RMS into I0 RMS because load has more than one element. तो ये गलत हुआ और ये गलत हुआ तो ये भी तो टपका बेटा, ये भी तो गलत हो गया ना. यानी कि इस केस में अपने पास सिर्फ एक फॉर्मूला डेवलप होगा लोड पावर का, एंड दैट इज नथिंग बट I0 RMS स्क्वायर इनटू R. ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा. व्हाट विल बी द सप्लाई पावर? सो सप्लाई पावर इज नथिंग बट फॉर आइडियल कन्वर्टर VS RMS into IS RMS into cos phi. Done. And this VS RMS IS cos phi something for ideal converter is also equal to P0. तो इस केस में अगर कोई पावर फैक्टर पूछता बेटा तो क्या लिखते, हम लोग लिखते P0 by SS and that is nothing but I0 RMS square into R divided by VS RMS IS RMS is the really very important discussion at this moment. Yes बेटा बोलिए, पक्का क्लियर है? सर बाय फ्री व्हीलिंग वी कैन मेक इट कंटिन्यूअस ना? या डेफिनेटली आजम. ओके, नाउ इट इज क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं. देखो बालक ध्यान से समझो, अगर हम ये बोल सकते हैं यहां पे कि अपना इंडक्टर का एवरेज वोल्टेज जीरो है, तो सबसे शानदार जो खूबसूरती है इस कन्वर्टर की वो क्या निकल के आएगी, ऐसे समझिए बेटा. बाई KVL वी कैन राइट I0 इंटू R प्लस माई डियर फ्रेंड इंडक्टर वोल्टेज. और जब हम इस पूरी इक्वेशन को एवरेज में कन्वर्ट करेंगे देन वी कैन राइट बेटा V0 एवरेज इज इक्वल टू I0 एवरेज into R plus VL average and fortunately this value is 0. So what will be the I0 average? तो I0 average निकालने के लिए आपको I0 फंक्शन की जरूरत नहीं है, आपका काम V0 के फंक्शन से चल जाएगा, आपका काम V0 के फंक्शन से चल जाएगा. ये हो गया सिंपल KVL इक्वेशंस. अब अगर हम लोग बात करें इसी केस में फॉर RL लोड, my dear friend it is again really very easy. So I want to draw some sinusoidal supply this one, और मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा ये जीरो है और यहाँ अल्फा है, ये पाई है, ये 2 पाई है, फिर ये 2 पाई प्लस अल्फा समथिंग यहां लिख दिया और ये हो गया ओमेगा टी. और अपना कन्वर्टर क्या है बेटा? कन्वर्टर ये रहा, एक SCR है जिसमें RL टाइप का लोड लगा हुआ है, ये सप्लाई है, खत्म करो. अब देखो आराम से समझो, जब भी हम बेटा इस SCR को ट्रिगर करेंगे, जब भी हम इस SCR को ट्रिगर करेंगे, एक बात तो कंफर्म है कि ट्रिगरिंग पीरियड 0 से पाई के बीच रहा होगा. यानी कि अल्फा की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और लेस देन पाई होगी. इट मींस अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन पाई. दिस इज द ट्रिगरिंग एंगल. So in this range we can easily observe 0 to pi our supply voltage is +1. If the supply voltage +1, my dear friend, the direction of current through the SCR can never change and this direction of current will always flow from anode to cathode. So here through the supply the current will flow negative to positive. It means the supply is going to deliver power. And here I want to say some R and L and this is V0. It is really very easy to describe this thing beta. Our load elements are going to absorb power.
my dear friend, this inductor, no need to this inductor to deliver power to any other element. If already supply is going to deliver power. So what is the most important thing? The moment at which supply is delivering power, in general, my dear friend, inductor will never deliver any power to any other element. So in this case or situation, either inductor will not consume any power or it will consume power, but in general will not deliver power. Okay. So my dear friend, here this inductor element will work as a load. So when it will work as a load, obviously the current of inductor will flow positive to negative, and this resistive element will always only consume energy. So what will be the polarity of resistance voltage is plus minus something. So if we can easily say, my dear friend, in this particular case, whenever this SCR is on in the range of alpha to pi, this supply is going to deliver power, and whatever this power supply is going to deliver will dissipate and consume by R and L. So what will happen when the supply voltage polarity is going to change? So the moment at which this supply voltage polarity will change, at the same moment inductor will realize, what? Okay, I'm not similar to resistance, boss. I have some power, I have some characteristic to oppose the changes. और जिसके पास बेटा जी चेंजेस करने के अपोज होते हैं, उसको दुनिया इजीली कंटाप नहीं मार सकती है. जैसे ही पाई प्लस पे आके इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, एससीआर ऑफ होने के कगार पे होगा, इंडक्टर कॉलर टाइट करके खड़ा हो जाएगा. बॉस अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा और अपनी पोलैरिटी चेंज करके कैसे वर्क करेगा? एज ए सोर्स वर्क करेगा. लेकिन सप्लाई काइंड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट जैसे काफी बार समझाया, और इंडक्टर हम लोग थोड़े मोड़े पैसे हैं, एटीट्यूड उसी का है. तो बॉस जब तक इसमें थोड़ी मोड़ी एनर्जी है तब तक तो ये इस एससीआर को ऑन रखेगा, लेकिन कभी तो खत्म होगी. ओके, कटु सत्य है कि सभी का अंत निश्चित है. ऐसे ही बेटा एक तो अंत होगा, एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पे इंडक्टर की एनर्जी फाइनली जीरो होगी, और जिस मोमेंट इंडक्टर की एनर्जी फाइनली जीरो होगी, एससीआर विल गेट नेचुरल कम्यूटेशन. Okay, so my dear friend, here the positive slope of this inductor current, the positive slope of this inductor current is really lower than negative slope of inductor current magnitude wise. In other words, the charging time period of this inductor, that means alpha to pi, will always be greater than pi to beta. Hopefully this thing is clear. So in examination, if somebody will ask to question related to this beta charging and discharging, then we can easily reply, Sir ji, charging time will always be greater than discharging time in this case. If the value of R equal to 0, then charging and discharging time interval both will be equal. Okay, so these are the points. Please tell me dear, it is clear or not? Everyone beta? फटाक से बोलो. तो यहां पे क्या हो जाएगा बालक? यहां पे बेटा जी बड़े आराम से लिख दो कि भैया चार्जिंग टाइम मतलब अल्फा से पाई वाला जो पीरियड है, दैट विल बी ग्रेटर देन डिस्चार्जिंग टाइम बेटा, जो पाई से लेके बीटा वाला पीरियड है. और जो पाई से बीटा है उसमें इंडक्टर अपनी वोल्टेज पोलैरिटी चेंज करके बालक क्या बन जाएगा? एक सोर्स बन जाएगा. और इस केस में बेटा सप्लाई पावर डिलीवर करेगी. किसको डिलीवर करेगी? दो ही तो एलिमेंट हैं, यानी कि लोड को. खत्म हो गया, यानी कि लोड को. बोलो फटाक से. देखो इतनी बात क्लियर है. आप कहोगे सर जी अगर कहानी वहां सिमट चुकी थी, वी कैन कैलकुलेट आई नॉट एवरेज विद द हेल्प ऑफ वी नॉट एवरेज, देन व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एनालिसिस? माय डियर फ्रेंड, हमें पता होना चाहिए बेटा एनालिसिस, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो आई नॉट एवरेज पूछे. वो पूछ सकता है व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द एससीआर व्हेन एससीआर जस्ट कम्यूटेटेड, व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस एससीआर व्हेन एससीआर जस्ट ट्रिगर्ड. What we will do at that moment? We require the analysis or complete analysis of this converter. And in other words, beta, वो ये भी दे सकता है कि what will be the current equation in time domain? What will be the magnitude of current at some different time interval? For example, 2.5 millisecond, 3 millisecond, 7 millisecond, 8 millisecond, 8.23656 millisecond. कुछ भी, nobody knows it कि which type question they are going to ask. तो अगर हमें कुछ नहीं पता है तो सबसे बड़ा जो किरदार होता है बेटा वो आई नॉट या आई एस का ही होता है. अगर हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन सफिशिएंटली पता है तो मैं उम्मीद रखता हूं कि एक जस्ट एवरेज स्टूडेंट भी काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है. होपफुली दिस थिंग इज क्लियर. सर 3 फेज रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर
अभी 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 होगा बेटा, अभी होगा, जस्ट थोड़ा सा समय दें, खत्म करें इसको ना बेटा। एक बात कंफर्म हो गई कि भैया इस केस में एससीआर ट्रिगर ऑन रहेगा अल्फा से लेके बीटा तक, और अल्फा से बीटा में जो करंट की इक्वेशन जनरेट होगी काफी बार डिस्कस की हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, उसको ध्यान रखिएगा, VmZ sin ओमेगा t माइनस फाई प्लस बेटा सम a into e to power minus r by l into t. This portion is called transient portion when we will put omega t equal to alpha. Okay, so what will be the current nature? आपको पता है कि सर जी अल्फा से लेके पाई तक करंट राइज होगा, पाई से बीटा में करंट डिके होगा एंड सो ऑन। आगे की वेवफॉर्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पाई पे बेटा मैक्सिमम वैल्यू होगा आई नॉट का, और ये वो पीरियड होगा अल्फा से पाई का, अल्फा से पाई का वो पीरियड होगा जहां पे इंडक्टर चार्ज होगा, पाई से बीटा का वो पीरियड होगा जहां इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। दिस इज द पॉइंट। ओके, तो अगर इसी बेस पे बात करें बेटा तो एक बात क्लियर है कि एट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा आई नॉट वैल्यू विल बी जीरो, और यहां से देखें बेटा तो t इज इक्वल टू अल्फा बाई ओमेगा पुट करेंगे, यहां से बालक हम लोग t इक्वल टू अल्फा बाई ओमेगा पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब a की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेंगे और उसको फिर से इसमें रखेंगे तो आई नॉट टी इक्वेशन आएगी जो मुझे मोटा मोटी याद है, Vm बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाई माइनस Vm बाई जेड साइन अल्फा माइनस फाई इंटू ई टू पावर माइनस आर बाई एल ब्रेकेट टी माइनस अल्फा बाई ओमेगा is the very very important equation for half wave rectifier when load is RL type. When load is RL type. Yes dear, tell me it is clear? Okay, so this is the way. अब बेटा अगर वो कोई पूछता हमसे कि what will be the maximum value of current, then definitely we have to put in this equation omega t equal to pi. So at omega t equal to pi, whatever value we will achieve from this equation will be our maximum value of current. Okay, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ये नहीं कहना है कि Vm by Z होगा सर या Vm by R होगा, इस टाइप की स्टूपिड आंसर रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, कोई भी नीड नहीं है। ओके, होपफुली दिस थिंग इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा। जब भी आपके पास लोड में RL लोड हो, सॉरी जब भी आपके पास लोड में इंडक्टर हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपना कन्वर्टर दो मोड में वर्क करता है। क्या मीनिंग होता है इन मोड का? एक मोड वो होगा जब पावर सोर्स से लोड फ्लो होगी, और एक मोड वो होगा जब पावर लोड टू सोर्स फ्लो होगी। हमेशा ध्यान रखना बेटा, पावर लोड टू सोर्स तभी फ्लो हो सकती है जब अपना कन्वर्टर फ्री फ्रॉम फ्री व्हीलिंग एक्शन। क्या हो कन्वर्टर? फ्री फ्रॉम फ्री व्हीलिंग एक्शन हो। यानी कि प्लीज माइंडेड बेटा, पावर कैन फ्लो फ्रॉम लोड टू सोर्स only when we have two condition। क्या क्या है बेटा वो टू कंडीशन? टू कंडीशन आर, ओके हल्का सा बोर्ड हैंग हो रहा है तो जस्ट वेट, हो जाएगा सही। या चलिए तब तक इसी में लिखते हैं बेटा। सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन, लोड must have inductor, load must have dear inductor। Second, converter must be free from freewheeling action। That means freewheeling diode must be absent। Only in those cases our converter can operate in two mode। सर प्लीज टी नॉट बीटा का ग्राफ बताओ ना सर। पाई टू बीटा का ग्राफ ना बेटा, पाई टू बीटा का ग्राफ वो ग्राफ होगा, रुकिए बालक क्या हो रहा है, हल्का सा वेट कीजिए बालक, थोड़ा बोर्ड हैंग हो रहा है। ओके ओके वेट करिए, तब तक मैं रिफ्रेश कर देता हूं इसको। ओके हल्का सा वेट करिए, दो मिनट वेट करिए, मैं इसको जरा शट डाउन करके रिफ्रेश कर देता हूं, ठीक है? ओके श्योर 2 मिनट वेट करिए बेटा सभी लोग, प्लीज 2 मिनट का समय दीजिए, बस मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं बोर्ड को। ओके
हम्म। ओके ओके सर।
या नाउ टेल मी डियर, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर? थोड़ा फास्ट बोलिए। यस एवरीवन, एवरीवन बेटा टेल मी फास्ट, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर? अभी तक का सारा मुद्दा क्लियर है कि नहीं? सो वी वर डिस्कसिंग हाफ वेव रेक्टिफायर विथ RL लोड। ओके, तो आप में से किसी सज्जन ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर जी पाई से लेके बीटा में क्या होगा? ओके, तो मैं यहां पे फिर से आ जाऊं बेटा, पाई से लेके बीटा में अपना SCR ऑन रहेगा, बट इस केस में थोड़ा परिवर्तन होगा। इंडक्टर विल चेंज इट्स ओन वोल्टेज पोलैरिटी, सो करंट विल फ्लो माइनस टू प्लस। यस एवरीवन, या थैंक यू। सो माइनस टू प्लस दिस करंट विल फ्लो। ध्यान देना बेटा, इंडक्टर विल वर्क एज ए सोर्स, whereas here this polarity will get changed, so minus plus and current will flow from positive to negative। जब भी किसी भी एलिमेंट में, doesn't matter this is active element or passive element, doesn't matter, when current will flow positive to negative, this element will absorb power, so this element inductor will deliver power to our supply as well as resistance। तो इंडक्टर को कितने एलिमेंट के लिए सोर्स समझना पड़ेगा? 2 एलिमेंट्स के लिए। और इसी रीजन में बेटा कुछ इंडक्टर चार्ज होगा और पाई के बाद डिस्चार्ज होना शुरू करेगा और बीटा पे जाके क्या हो जाएगा? फुली डिस्चार्ज। सो इन दिस पीरियड व्हाट विल बी द V नॉट वेवफॉर्म? सो V नॉट वेवफॉर्म वी कैन इजीली डिजाइन हियर और ड्रॉ हियर। द सप्लाई वोल्टेज विल लुक लाइक समथिंग, एंड इसी को मैं ओवरलैप कर देता हूं बेटा व्हाइट कलर से। सो समवेयर हियर दिस इज द V नॉट वेवफॉर्म। ओके, जब तक SCR ऑन रहेगा तब तक वोल्टेज अपीयर होगा, अदरवाइज दिस वोल्टेज विल बी 0। okay, so this white color nature will be the output voltage somewhere here। okay, तो ये V0 हो जाएगा, ये I0 होगा। फटाक से बोलो बेटा, इतनी बात क्लियर है सभी को कि नहीं? जल्दी से सभी लोग, या इतनी बात क्लियर है कि नहीं? वेरी नाइस, आगे बढ़े। तो ये कहानी है। तो जब भी आपको वो RL लोड दें, हालांकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहता हूं बेटा, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, 99% इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इससे क्वेश्चन बनने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा नहीं होता कि MSQ में या थ्योरेटिकल अप्रोच में पूछा जा सकता है, अदरवाइज इन जनरल कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकंड एग्जांपल आई वांट टू टेक RL एंड E लोड। जब भी RL E लोड की बात होगी किसी भी SCR के साथ, या आप बोल सकते हैं कि डायोड के साथ, तो डायोड का मतलब हो गया अल्फा इक्वल टू 0 SCR के केसेस में। तो यहां पे मैं RLE लिख दूं। अब इस केस में ध्यान रखना क्या बारीकताएं हैं उनको समझिए। ओके, I want to speak like all sentences related to this converter in very authentic way or with slow speed, ताकि आप बातों को समझे। Now बालक try to understand the first thing here। I want to say the output voltage V0, current is I0, this current is IS। तो देखो इस कन्वर्टर में, ओके, या मैं एक काम करता हूं बालक, आपके लिए 2 कन्वर्टर यहां पे लेता हूं कंपैरिजन वाइज, ताकि आपको ध्यान रहे एग्जाम में कैसे इनको डील करना है। तो जैसे मैं इसमें लूं और यहां RL लिख दूं, और यहां बेटा फिर से मैं एक कन्वर्टर ले रहा हूं सेकंड वन, एंड नाउ दिस लोड इज RLE टाइप। जरा बात को बहुत ध्यान से हर बात को समझना है आपको। VS एंड हियर आई वांट टू राइट RL एंड E। ओके, ध्यान देना हर बात पे, मुद्दे पे। और ये करंट लिख दूं I0, दिस वोल्टेज इज V0, समवेयर हियर माइनस, दिस करंट इज IS, this voltage is VT and IT। okay, and somewhere here again I want to write IS plus minus VS, and V0 current is I0 plus minus some VT thyristor voltage। okay, I want to say beta ji here few things कि R is equal to 10 ohm है, L is equal to मान लो 100 मिली हेनरी है, यहां भी बेटा R is equal to 10 ohm है, L is equal to 100 मिली हेनरी है, एंड E इज इक्वल टू रफली चलो 50 वोल्ट मान लेते हैं। ओके, सो E इज 50 वोल्ट और VS दोनों का सेम है, तो दोनों का सेम लिख देते हैं 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज, और यहां भी VS लिख देते हैं बेटा 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज, और दोनों के लिए मैं अल्फा भी सेम ले लेता हूं। सो दिस अल्फा इज 60 डिग्री एंड दिस अल्फा इज ऑल्सो 60 डिग्री। ओके, अब मैं आपसे एक इन जनरल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं बेटा कि लेट अस अज्यूम द एक्सटेंसिंग एंगल बीटा फॉर दिस कन्वर्टर इज बीटा 1 and extrinsic angle for this converter is beta 2। तो सारी इंफॉर्मेशन सेम है और in both converters our SCRs are ideal। then can you tell me बेटा कौन सा बीटा बड़ा होगा या दोनों बीटा इक्वल होंगे in this situation? yes, think over it and tell me कौन सा बीटा ग्रेटर होगा बेटा। प्लीज एवरीवन आराम से समझ के रिप्लाई करो। देखो 2 कन्वर्टर हैं आपके सामने, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, ये हो गया एग्जांपल 1, ये हो गया बेटा एग्जांपल 2, और देखो सभी सेम है, जैसे R10 L100 R10 L100 E 50 वोल्ट्स। ओके,
So this E is 50 volts. So this E is 50 volts and here E is absent. और ये कुछ कहानी है and I want to ask you the relationship between beta 1 and beta 2. So beta 1 is greater than beta 2, beta 2 is greater than beta 1 और both are equal और we can't say anything. Okay? तो मैं 4 ऑप्शन दे देता हूं. beta 1 is greater than beta 2, B ऑप्शन है beta 2 is greater than beta 1 and C ऑप्शन है बेटा beta 1 is equal to beta 2 and D ऑप्शन है we can't say anything. We can't say anything. Okay? Yes. Now tell me. Yes. कौन सा सही होगा बेटा? beta 1, beta 1, beta 1. Yeah, very nice, very nice. So my dear friend, see आराम से समझो. इस कन्वर्टर में ध्यान देना बेटा, इस कन्वर्टर में या इस कन्वर्टर में लोड करंट को कंटिन्यूअस बनाना किसी भी वैल्यू ऑफ L के लिए इम्पॉसिबल है. So in these both cases, in the both cases beta I naught cannot be continuous. पहला point. So I naught will always be discontinuous. खत्म करें. Okay, doesn't matter what is the value of L, what is the value of alpha. Okay, for any value of alpha or for any value of inductance or load inductance L, I naught cannot be continuous. इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा. अगला पॉइंट बेटा, for any value of alpha or for any value of L, the VL average will always be 0. यानी कि इंडक्टर का एवरेज वोल्टेज अभी भी 0 रहेगा. And next thing, the average power consumed or delivered by inductor will always be 0. तो ये भी 0 हो गया. अब हम बात करते हैं बेटा अपने केसेस की. तो इन द रेंज ऑफ अल्फा, बिकॉज इन बोथ केसेस अल्फा आर सेम, तो अल्फा टू पाई ये सप्लाई इन दोनों एलिमेंट को चार्ज करेगा और यहां पे बेटा अल्फा टू पाई में ये इंडक्टर यहां पे चार्ज होगा. ओके, बट पाई से लेके बीटा में ये इंडक्टर इन 3 एलिमेंट्स पे पावर डिलीवर करेगा, जबकि यहां पे बेटा ये इंडक्टर इन 2 एलिमेंट्स पे पावर डिलीवर करेगा. तो इन जनरल विदाउट एनी मैथमेटिकल जॉब, ओके, जस्ट इन टेंटेटिव वे आई वांट टू टेल यू कि यहां पे बेटा बीटा 2 लेस होना चाहिए बीटा 1 से. इन अदर वर्ड्स बीटा 1 विल बी ग्रेटर देन बीटा 2. ओके, कोई मैथमेटिकल जॉब नहीं ले रहे हैं. ओके, उसका रीजन ये है कि इसका स्लोप बालक का थोड़ा सा फास्ट होगा डिस्चार्जिंग और इसकी डिस्चार्जिंग थोड़ी सी स्लो होगी. रीजन यू नो वेरी वेल. ओके, तो जैसे यहां पे अगर हम लोग सेकंड केस में इक्वेशन लिखें तो VL इक्वल टू हो जाएगा बेटा VS प्लस VR एंड प्लस E ना. सो प्लस एंड प्लस या प्लस डिवाइडेड बाय समथिंग. ऐसे यहां पे स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकाल के कंपैरिजन करके हम लोग फाइनली बोल सकते हैं कि किसमें बीटा ज्यादा होगा. ओके, एक बात. दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बेटा कि अगर हम यहां पे लोड पावर की बात करें फर्स्ट केस में, तो लोड पावर इन फर्स्ट केस इज वेरी इजी टू डिफाइन. P naught is equal to, we can write I naught RMS square into R, जबकि यहां पे लिख सकते हैं बेटा P naught is equal to I naught RMS square into R something A into I naught average. खत्म. जबकि दोनों में सोर्स पावर सेम रहेगा. हम पावर फैक्टर चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट द कैलकुलेशन ऑफ I naught RMS इज रियली वेरी कॉम्प्लेक्स. शब्द सेंटेंस इन पे ध्यान दो. द कैलकुलेशन ऑफ I naught RMS इज रियली समवॉट कॉम्प्लेक्स. So in general nobody will ask any question related to I naught RMS. फिर चाहे वो पावर फैक्टर हो, फिर चाहे वो इफिशिएंसी हो, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपसे राइज नहीं करेगा. ओके, अगले पॉइंट पे समझते हैं बेटा इसी को. एंड आई वांट टू टेल यू नेक्स्ट थिंग. ध्यान देना, इन बोथ केसेस VL एवरेज 0. तो अगर हम लोग इस वे से देखें तो यहां हो जाएगा बेटा I naught एवरेज इज इक्वल टू V naught एवरेज बाई R, जबकि यहां पे हो जाएगा बेटा I naught एवरेज इज इक्वल टू V naught एवरेज माइनस E बाई R. तो किसमें करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा? इसमें करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा और इसमें करंट का मैग्नीट्यूड कंपैरिजन में ज्यादा होगा, क्योंकि आपको आइडिया मिल रहा है. दूसरा पॉइंट क्या है बेटा कि यहां पे जो V naught एवरेज है वो एक्चुअली डिपेंड कर रहा है. तो जिस पीरियड में अपना SCR ऑफ होगा, इन जनरल वे से जिस पीरियड में बेटा अपना SCR ऑफ होगा उस पीरियड में भी V naught 0 नहीं होगा. आप समझ पा रहे होंगे बातों को. आई थिंक जैसे यहां पे अगर मैं V naught को शो करूं तो V naught अपने विदाउट जो E है वो कुछ ऐसा बनेगा बेटा. विदाउट E में कुछ ऐसा बनेगा. ओके, सो दिस इज अल्फा बीटा एंड सो ऑन. ये सब एग्जाम में आपको एक ही पल में सारी एनालिसिस आपके दिमाग में दौड़नी चाहिए, तब जाके क्वेश्चन हैंडल होता है प्रॉपरली. तो ये पाई हो गया, ये बीटा हो गया, या ओमेगा टी हो गया. जबकि यहां पे जो V naught का शेप होगा वो कुछ ऐसा बनेगा बेटा. व्हेनेवर SCR इज ऑन द आउटपुट वोल्टेज विल लुक लाइक सेम.
ऐसे कुछ बनेगा ये। लेकिन जैसे ही एससीआर ऑफ होगा, एससीआर के अक्रॉस एक नया वोल्टेज डेवलप होगा एंड दैट इज नथिंग बट वीएस माइनस ई। तो वीएस माइनस ई का मतलब इस रीजन में कुछ आउटपुट वोल्टेज होगा। तो जब एससीआर ऑफ हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा बेटा, एससीआर का वोल्टेज आएगा वीएस माइनस ई, तो लोड वोल्टेज क्या हो गया ई, यानी कि जहां जहां एससीआर ऑफ है वहां वहां आउटपुट वोल्टेज ई होगा। ओके, सो इस वे से देखें तो जब तक हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ना कर लें, कुछ भी ये बोलना कि किसका मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा होगा थोड़ा सही नहीं रहेगा। ओके, बट टेक्निकली हम लोग कह सकते हैं बेटा कि वी नॉट एवरेज में कुछ भी हो माइनस ई तो हो रहा है ना, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से कम होगा। इसलिए जब भी हम किसी भी डीसी मोटर को हाफ वेव रेक्टिफायर से ऑपरेट करना चाहते हैं विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड, तो सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, एक तो रिपल बढ़ जाते हैं, ऊपर से साथ में आपका आई नॉट एवरेज की वैल्यू कम हो जाती है, इतने सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, प्लस कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूटी भी होती है। इन सभी की वजह से इन जनरल वी डोंट वांट टू ऑपरेट अवर डीसी मोटर in controlling action or with the controlling technique with the help of single phase half wave rectifier. Okay, तो इस टाइप के रेक्टिफायर से हम कभी भी डीसी मोटर ऑपरेट नहीं करते हैं, रीजन यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। ओके, इतनी एक बात हो गई। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे भी वी कैन राइट सम जीरो, अल्फा, पाई एंड बीटा। ओके, अब यहां पे कम्यूटेशन टाइम की बात करें तो इसका कम्यूटेशन और इसका कम्यूटेशन ऑब्वियसली सेम नहीं होगा, क्योंकि यहां पे अगर आप आइडिया लें बेटा तो अल्फा मिनिमम थीटा की कैटेगरी में जाएगा, जबकि यहां पे अल्फा मिनिमम आपका जीरो की रेंज में जाएगा। ओके, क्योंकि यहां पे लोड में आरएलई नहीं है, आरएलई नहीं है, और यहां पे लोड में आरएलई है, मतलब ई है, और जब भी ई आएगा तो अल्फा मिनिमम कभी भी जीरो नहीं होगा। ओके, प्लीज टेल मी टिल नाउ ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर बेटा, एवरीवन प्लीज। यस, फटाक से बोलो एवरीवन, इट इज क्लियर टू ऑल। ओके, चलिए अगर इतनी बात क्लियर है तो कहीं ना कहीं अब मुद्दा ये हमें समझना पड़ेगा कि आगे की बातों को डील करने के लिए ओके क्या पैरामीटर्स अब हम लोग सिलेक्ट करें। तो देखो समझो, जब भी हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर में लोड आरएल हो या आरएलई हो बट फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं है, अगर फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं है तो एक बात तो क्लियर होनी चाहिए सभी को, द कन्वर्टर इज गोइंग टू ऑपरेट इन टू डिफरेंट मोड। ओके, फर्स्ट इज पावर विल फ्लो फ्रॉम सोर्स टू लोड, सेकंड इज पावर विल फ्लो फ्रॉम लोड टू सोर्स, एंड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन माय डियर फ्रेंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल आई नॉट विल नॉट बी कंटिन्यूअस। ओके, ये हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा द सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर विथ फ्री व्हीलिंग डायोड, सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर विथ फ्री व्हीलिंग डायोड, विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। नाउ टेल मी, स्टार्ट किया जाए, बोलिए बालक फटाक से स्टार्ट किया जाए। यस एवरीवन, सो विथ फ्री व्हीलिंग डायोड, सबसे पहली बात बेटा जो फ्री व्हीलिंग डायोड होता है, ये ध्यान रखना एमएसक्यू में, जो फ्री व्हीलिंग डायोड होता है इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एससीआर की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी से लगभग बराबर होती है कि लगभग इक्वल होती है। सो फ्री व्हीलिंग डायोड इज नथिंग बट जस्ट पावर डायोड and the voltage blocking capacity or current carrying capacity are almost equal to SCR whatever we are going to use in AC to DC converter। मुद्दा समझ रहे हैं? फ्री व्हीलिंग डायोड आपके ओवरऑल एससीआर की करंट और वोल्टेज रेटिंग को बाउंड कर देता है। एससीआर वोल्टेज रेटिंग एंड करंट रेटिंग in general we can say highest voltage and current rating in the power electronic devices। ओके, तो ये एक सुप्रीम डिवाइस है, लेकिन अगर आप किसी भी एसी टू डीसी कन्वर्टर में फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं फ्री व्हीलिंग डायोड का जो करंट और वोल्टेज रेटिंग है वो डिसाइड करने जा रहा है कि आपको मैक्सिमम एससीआर वोल्टेज करंट रेटिंग के रिस्पेक्ट में कितना लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं फ्री व्हीलिंग डायोड एक नॉर्मल कन्वर्टर के कंपैरिजन में आपके पावर रेटिंग को रिड्यूस कर देता है। ओके, क्योंकि किसी भी केस में पावर डायोड का वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग मैक्सिमम वे से एससीआर के इक्वल नहीं हो सकता। नाउ टेल मी, इट इज क्लियर बेटा, प्लीज एवरीवन फास्ट, इट इज क्लियर। ओके सर, डीसी मोटर इज RE लोड और नॉट? या डीसी मोटर वी कैन से RE लोड और RLE लोड एक ही बात है, L इनबिल्ट मानिए आप उसको, विदाउट L वी कांट डिजाइन डीसी मोटर। ओके, पक्का क्लियर है बेटा एवरीवन? ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड।
तो इतनी बात क्लियर है। अब हम आते हैं बेटा फ्री व्हीलिंग डायोड के दूसरे मुद्दे पे। ओके, मुद्दा समझिए क्या है। आई वांट टू से वेरी इजी थिंग्स बेटा। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, आई वांट टू शो हियर सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, एंड दिस इज आवर लोड। ओके, और जब भी हम फ्री व्हीलिंग डायोड की बात करेंगे, दैट फ्री व्हीलिंग डायोड विल ऑलवेज कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल नेचर अक्रॉस द लोड। तो ये हो गया अपना फ्री व्हीलिंग डायोड। अब देखो इस फ्री व्हीलिंग डायोड की कहानी क्या है, व्हाई वी रिक्वायर दिस फ्री व्हीलिंग डायोड इन जनरल। ओके, मुद्दा देखिए बेटा, फ्री व्हीलिंग डायोड की नीड क्यों आई। जब भी हमने बात की हाफ वेव रेक्टिफायर की, सो टिल नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव कंटिन्यूअस करंट इन हाफ वेव रेक्टिफायर, पहला मुद्दा। जैसे ही हमें यह पता चला कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कंटिन्यूअस कंडक्शन अचीव करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, ओके, ट्रिक आई माइंड में कि फ्री व्हीलिंग डायोड यूज किया जाए। तो फ्री व्हीलिंग डायोड से होगा क्या, सेम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस कैन प्रोवाइड कंटिन्यूअस कंडक्शन। जो वैल्यू अभी एल की है वही हम एल की फिर रख रहे हैं, बट इस बार पॉसिबिलिटी है कंटिन्यूअस होने की, और कहीं एल की वैल्यू तनिक सी बढ़ा दिए तो पॉसिबिलिटी हो सकती है रिपल को ऑलमोस्ट जीरो करने की भी, रिपल को ऑलमोस्ट जीरो करने की भी। हमारा लोड क्या है, हमारा लोड डीसी है, और डीसी के लिए प्राथमिकता है कि अपना V0 और I0 कांस्टेंट होना चाहिए बालक। कांस्टेंट का मतलब कोई वेरिएशन ना हो, लेकिन कन्वर्टर और लोड के बिहेवियर की वजह से V0 और I0 में कहीं ना कहीं अनवांटेड और वांटेड वेरिएशन हो रहे हैं। ये वेरिएशन रिपल और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कन्वर्टर की इफिशिएंसी डिक्रीज हुई है, कम है, पावर फैक्टर पुअर है। अगर किसी भी तरीके से हम V0 और I0 को, माय डियर फ्रेंड, कैपेबल हो जाते हैं कुछ ऐसा ड्रॉ करने में कि भैया V0 कुछ ऐसा बनेगा और I0 भी कुछ ऐसा बनेगा, जिस दिन V0 और I0 ये आ गए, इफिशिएंसी 100% होगी। पावर फैक्टर 1 नहीं, इफिशिएंसी 100% होगी। और पावर फैक्टर कब 1 होगा दुनिया में, एसी टू डीसी कन्वर्टर में? तब 1 होगा बेटा जब Vs जैसा ही Is आने लगे, यानी कि Vs और Is क्या हो जाए बेटा, प्योर साइनोसॉइडल। जब Vs Is प्योर साइनोसॉइडल हो जाए तो समझ लो पावर फैक्टर 1, कोई जरूरत नहीं हार्मोनिक रिडक्शन टेक्निक की। और जिस दिन बेटा V0 I0 प्योर डीसी हो जाए, कोई जरूरत नहीं है फर्दर फिल्ट्रेशन की। ओके, सो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बस मुद्दा यह था कि किसी भी तरीके से यार करंट और वोल्टेज को कांस्टेंट किया जाए, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया इंडक्टिव लोड के साथ। और इन जनरल देखें, चाहे वो एसी लोड हो चाहे वो डीसी लोड हो, लोड तो इंडक्टिव ही होते हैं बॉस, लोड तो इंडक्टिव ही होते हैं बॉस। नाउ टेल मी, इट इज क्लियर डियर? ओके, या आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे बेटा ये रहा सिस्टम जिसमें हम लोगों ने बात की V0 I0 की, और यहां बात की सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट की। तो देखो इस फ्री व्हीलिंग डायोड का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य ये है, जरा समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि ध्यान देना, जैसे हमारे पास कोई रेक्टिफायर है एंड आई वांट टू से RL, और यहां पे कुछ सप्लाई लिख देते हैं रफली ऐसे ही फर्जी में 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, और यहां लिख देते हैं बेटा ऐसे ही फर्जी में कि 10 ओम और 100 मिली हेनरी। ओके, दिस इज द वे। तो अब हमें यह पता चल गया कि भैया यहां पे कभी भी I0 कंटिन्यूअस नहीं होगा, और I0 कंटिन्यूअस नहीं होगा यानी कि अल्फा से पाई बाई ओमेगा का जो टाइम पीरियड है वो हमेशा बेटा बीटा माइनस पाई बाई ओमेगा से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपने कहा सर जी एक काम करो, आप ना एक फ्री व्हीलिंग डायोड लो और फ्री व्हीलिंग डायोड को यहां कनेक्ट कर दो। अब इससे एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज देखो, ध्यान देना बेटा, व्हेन दिस सप्लाई इज पॉजिटिव डजंट मैटर दिस SCR इज ऑन और ऑफ। थोड़ी देर के लिए समझो, हमने L को हटा दिया, थोड़ी देर के लिए समझिए बेटा, हमने L को हटा दिया, लो खत्म। अगर L को हटा दें तो कहानी में ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि डजंट मैटर दिस सप्लाई वोल्टेज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस डायोड विल नेवर कंडक्ट। जैसे अगर मैं यहां ग्राउंड ले लूं और ये सप्लाई वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव ये आया बेटा, अगर हमने SCR को ट्रिगर कर दिया तो डायोड तो ऑन होगा नहीं, क्योंकि इसके कैथोड पे ये वोल्टेज ट्रांसफर हो जाएगा, एक मुद्दा। और अगर ये SCR ऑफ हो गया तो डियर ये सारा वोल्टेज SCR ब्लॉक कर लेगा। मतलब ये फ्री व्हीलिंग एक्शन वाला जो डिवाइस है, या जो एक एंटी पैरेलल डायोड है या पावर डायोड है, ये कभी भी बेटा सप्लाई का मोहताज नहीं है। किसका मोहताज नहीं है, सप्लाई का मोहताज नहीं है। यानी कि फ्री व्हीलिंग डायोड को लगाया ही गया है कन्वर्टर में, किसकी वजह से,
इस इंडक्टर की वजह से। तो एक बात क्लियर होनी चाहिए, अगर लोड फ्री फ्रॉम इंडक्टर है तो फ्री व्हीलिंग डायोड कभी भी ऑन नहीं होगा। डजंट मैटर, दुनिया भर के एलिमेंट आप लोड में लगा दीजिए। पहला मुद्दा, यानी कि फ्री व्हीलिंग डायोड विल कंडक्ट ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस। प्लीज टेल मी इट इज क्लियर और नॉट? टेल मी बेटा, इट इज क्लियर और नॉट? बोलो बोलो फटाक से। नाउ सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से इस पॉइंट को हटाना चाह रहा हूं बेटा। आई वांट टू रिमूव ऑल दोस थिंग्स। तो मैं फ्री व्हीलिंग डायोड हटा दिया। अब ये कहानी कुछ हो गई अपनी। अब मैं ये कह रहा हूं, देखो इस केस में तो अपने पास कहानी ये है बालक की भैया इतने पॉइंट तक बेटा ये कंडीशन मैच करेगी और आई नॉट कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगी। आपने कहा सर जी ना एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दो, एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया। अब हुआ क्या होगा कि जैसे ही बालक इसकी पोलैरिटी चेंज हुई, माइनस प्लस यहां हुआ, इंडक्टर तो अपनी पोलैरिटी वैसे भी चेंज करता, डायोड हो ना हो। जैसे ही इंडक्टर ने अपनी पोलैरिटी चेंज की बेटा, दिस डायोड विल फेस पॉजिटिव वोल्टेज एंड दिस इंडक्टर करंट विल टेक प्लेस थ्रू दिस डायोड। अब कहानी ट्विस्ट देखो बेटा, ये जो चार्ज इंडक्टर था वो रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा वाया द पाथ ऑफ फ्री व्हीलिंग एक्शन। अब हम इसको इतने को उठा के बाहर ले आते हैं, और इतने को उठा के अगर बाहर ले आए तो कन्वर्टर कुछ ऐसा बना दोस्त, ये बन गया। और इस कन्वर्टर को देखें तो क्या ये फर्स्ट ऑर्डर बेटा फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री आरएल नेटवर्क नहीं है? फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री आरएल नेटवर्क नहीं है? आप कहेंगे यस सर है। अगर है तो यहां पे बेटा टाउ भी तो होगा, और अगर टाउ की बात करें तो एल बाई आर है। अच्छा एल बाई आर कितना हो जाएगा बेटा? एल इज 100 मिली, आर इज 10, सो इज नथिंग बट 10 मिली सेकेंड। खत्म हो गई बात। अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा। व्हाट इज द सप्लाई वोल्टेज? सप्लाई वोल्टेज इज प्योर साइनोसॉइडल and one cycle of supply will complete in 20 millisecond according to Indian frequency 50 hertz। अब देखो कहां पे बेटा इसने पोलैरिटी चेंज की थी? पाई पे, यानी कि पाई के बाद इंडक्टर सोर्स बना। और अगला ट्रिगरिंग कहां मिलेगा बेटा? यहां मिल सकता है, यहां मिल सकता है, कहीं मिलेगा। चलो मैंने ये मान लिया कि अल्फा पे यहां कहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो पाई से ये डिस्चार्ज होना शुरू किया, और टाउ कितना आ रहा है बेटा? 10 मिली सेकेंड। इस इंडक्टर को डिस्चार्ज होने में टोटल टाइम कितना लगता है? पढ़ा होगा कंट्रोल नेटवर्क में 4 टाउ लगभग, यानी कि 40 मिली सेकेंड इसको लगेंगे इंडक्टर को इस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होने में। यानी कि अगर मैं बेटा कहानी को यहां पे ले आऊं तो देखो 10 मिली सेकेंड, ये 10 मिली सेकेंड है, 10 मिली सेकेंड से ये डिस्चार्ज होना शुरू किया, तो यहां पे आया इंडक्टर डिस्चार्ज। लेकिन जैसे ही यहां पहुंचा आपने अपने एससीआर को ट्रिगर कर दिया, और जैसे ही एससीआर को ट्रिगर करोगे सप्लाई विल डिलीवर पावर टू इंडक्टर, यानी कि इसके बाद इंडक्टर को डिस्चार्ज होने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पूरा पीरियड बेटा मैक्सिमम कितना हो सकता? मैक्सिमम लेस देन 20 मिली सेकेंड। और इंडक्टर कितने में डिस्चार्ज होगा? 40 मिली सेकेंड में। यानी कि कहीं ना कहीं अब करंट कभी भी जीरो होगी नहीं। कैसे नहीं होगी? करंट की वेवफॉर्म से समझो। तो देखो ध्यान देना, अल्फा से लेके पाई तक बेटा, यहां अल्फा मान लें, यहां पाई मान लें, यहां 2 पाई मान लें, फिर से बेटा अल्फा 3 पाई एंड सो ऑन। तो ऑब्जर्वेशन अच्छी रखना। देखो अल्फा से लेके पाई में बेटा पहले 0 मान लो, करंट राइज हुआ, अब करंट डिके हो रहा है, और 40 मिली सेकेंड में से 0 होना है। तो देखो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, और कहीं जाके 40 मिली सेकेंड पे 0 हो रहा है। लेकिन यहां के बाद तो फिर से इंडक्टर चार्ज होना शुरू हो जाएगा प्रैक्टिकली, तो क्योंकि ये बेटा अगला ट्रिगरिंग है। अगर ऐसा हुआ तो एक्चुअल वेवफॉर्म क्या बनने वाली है? दिखना बेटा, चार्जिंग देन डिस्चार्जिंग देन अगेन चार्जिंग देन डिस्चार्जिंग। अब देखो आपको स्टेडी स्टेट में करंट कुछ कंटिन्यूअस दिखने लगी, और अगर L की वैल्यू को और बढ़ा दो तो करंट एक पर्टिकुलर L पे जाके ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। ये खूबसूरती दी थी आपको फ्री व्हीलिंग डायोड ने। नाउ टेल मी इट इज क्लियर बेटा? ये खूबसूरती दी थी आपको फ्री व्हीलिंग डायोड ने। लेटेस्ट वर्जन एवर। ओके नाउ क्लियर है बेटा? यस टेल मी फास्ट। यस जल्दी बोलिए बालक सभी लोग। इतनी बात क्लियर है? सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड? अगर कोई आपसे पूछे एग्जाम में एडवांटेज ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड, ओके यस लिसन टू मी केयरफुली बेटा। एमएसक्यू क्वेश्चन फ्री व्हीलिंग डायोड से बन सकता है। क्या क्या जवाब देंगे आप फ्री व्हीलिंग डायोड से रिलेटेड? सी प्रॉपरली,
freewheeling diode switching frequency is almost equal to SCR switching frequency. First point. Whenever freewheeling diode is present in the converter, for the conduction of freewheeling diode, only load inductance is responsible. For the freewheeling diode, only load inductance is responsible. Source inductance will never responsible for the conduction of freewheeling diode. Okay? अगला point समझिए. When freewheeling diode is present in the converter, converter will always deliver power from source to load. And the moment or period when freewheeling diode is on, the load voltage guaranteed 0 and will never enter into the negative region. That means, my dear friend, our converter is going to operate only in first quadrant. Only in first quadrant. And due to all those reasons, freewheeling diode is really very popular device whenever we want to operate our converter only in rectification mode. That means we want to transfer power from source to load. In those type of converter, for a small value of inductance can provide almost constant current. This is the beauty of freewheeling diode. Okay. So due to all those reasons, in short wave we can also say beta, in half wave control or uncontrolled converter without freewheeling diode, this continuous current or almost ripple free current at load, okay, or to achieve ripple free current at load is kind of impossible without freewheeling diode. Okay, now hopefully this thing is clear to everyone. Yeah, pakka. Okay, yeah, clear. Okay, very nice. चलिए, तो ये कुछ पॉइंट ध्यान रखना. नाउ आई वांट टू आस्क यू वेरी इजी क्वेश्चन एट दिस मोमेंट. ओके, फिर से अपना कैलकुलेटर उठाइए और जुट जाइए जरा इस एग्जांपल में. आई वांट टू गिव यू हियर बेटा वन एग्जांपल. दिस इज योर SCR, load is RLE type at this moment and supply voltage this one. Okay, so here I want to show some freewheeling diode. This R is 10 ohm, L and this E is this one. Okay, and somewhere here I want to show this is 400 sine omega t and the frequency of supply is 50 hertz. Okay, and the value of alpha is 90 degree. Okay, and the value of L is unknown. Okay, so now can you tell me anyone beta what will be the nature of this I naught? Okay, what will be the nature of I naught? I naught will be continuous or discontinuous. If L is unknown, E is unknown. Okay, so first tell me beta I naught is continuous or discontinuous. Think over it and tell me. फटाक से, समय थोड़ा कम है, जल्दी से बोलिए बेटा. Yeah. Okay. Yes. So think over it. What about this L? L is unknown value. L is unknown value. So what will be the value of I naught? कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस. आपके पास दो ही ऑप्शन है. ओके, सो प्लीज बी सीरियस स्टूडेंट. ओके, तो बालक, खैर तकिया कलाम आप मेरा यूज कर रहे हैं, जल्दी से सोच के. ओके, क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, सोच नहीं पा रहे हो, थोड़ा गंभीर होके. एल की वैल्यू दी नहीं किसी बंदे ने, एल की वैल्यू नहीं दी है. रेस्ट कन्वर्टर आप देख सकते हैं. मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, आई नॉट क्या होगा, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस. आई नॉट क्या होगा, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस. मालिक क्या ही कर रहे हो. आई नॉट मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस. हम कैसे कह सकते हैं बेटा, जब हमें एल ही नहीं पता है तो हम आई नॉट को कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं और डिसकंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल. माय डियर फ्रेंड, only freewheeling diode will never be the guarantee of continuous current. Only freewheeling diode. सिर्फ freewheeling diode प्रेजेंट होना कभी भी कंटिन्यूटी ऑफ करंट को नहीं प्रूफ नहीं करता है. समझ रहे ना, प्रूफ नहीं करता है. साथ में कौन होना चाहिए, ध्यान दो, सफिशिएंट हाई वैल्यू. वर्डिंग देखो, सफिशिएंट लार्ज वैल्यू ऑफ एल एंड freewheeling diode will give us assurity of continuous current, of continuous load current. Now tell me, it is clear or not? Yes. See beta, here I naught may or may not be continuous. May or may not be continuous because the value of L is not given. So for the continuous current, what we can write? So I naught continuous only when freewheeling diode is present plus L is sufficiently large. L is sufficiently large. Okay. अगर ऐसा कुछ है, now we can say the value of L the value of I naught definitely continuous.
अगर कहीं यहीं पे कोई बेटा जी बात कर देता है इस आई नॉट के कि आई नॉट बेटा ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा और रिपल फ्री हो जाएगा इफ फ्री व्हीलिंग डायोड इज प्रेजेंट प्लस वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एल, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एल इज प्रेजेंट, एल इज प्रेजेंट। ये कहानी है, ओके, ये कहानी है। या वेरी नाइस, पक्का क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में अगला मेरा क्वेश्चन ये है, सेम प्रॉब्लम में बेटा अगला मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन नहीं है ये, बारीकताएं समझो कि एल की वैल्यू अगर सफिशिएंटली लार्ज है तो आपकी करंट कंटिन्यूअस होगी और एल की वैल्यू वेरी हाई है तो करंट कांस्टेंट होगी। इसी केस में अगर एल की स्मॉल वैल्यू है तो आई नॉट डिसकंटिन्यूअस भी हो सकती है, ओके, ये मुद्दा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूं बेटा, इफ आई नॉट इज कांस्टेंट इन द सेम कन्वर्टर, इफ आई नॉट इज कांस्टेंट देन व्हाट विल बी द सप्लाई पावर फैक्टर? यस, स्टार्ट योर जॉब, जल्दी जल्दी बेटा, ओके, बहुत स्पीड के साथ। इन दिस कन्वर्टर इफ आई नॉट इज कांस्टेंट देन व्हाट विल बी द सप्लाई पावर फैक्टर? देन व्हाट विल बी द सप्लाई पावर फैक्टर? ओके, information is given to all of you, okay? So alpha is 90 degree, supply is 400 sin omega t, frequency 50 hertz, R is 10 ohm, I naught is constant and E value is unknown, okay? Can you tell me बेटा कि I naught constant है तो L क्या रहा होगा? ऐसी बोल दो, ऐसी फर्जी पूछ रहा हूं मैं, अगर I naught constant है तो L क्या रहा होगा? सर फॉर हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर चेंज भी तो स्लोली होगा। हाँ मतलब चेंज भी स्लोली होगा, चार्ज भी स्लोली होगा, ओके, सडन चेंज वाला कंसेप्ट लगा दो तो इसलिए करंट के रिपल ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। अब 0.86 ज्यादा नहीं हो गया? 0.86, आई एम नॉट श्योर कि ये सही है कि नहीं है, बट आई थिंक इट इज, या थिंक ओवर इट, थिंक ओवर इट। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, या वेरी नाइस बेटा, देखो सिंपल क्वेश्चन है, सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर विद फ्री व्हीलिंग डायोड, लोड इज RLE टाइप, if I naught is constant then what will be the supply power factor? Then what will be the supply power factor? Yeah, very nice, very nice. Yes, अब सोचिए इसके बारे में, सप्लाई पावर फैक्टर। तो देखो इस कन्वर्टर को अपने दिमाग में, जहन में बिठा लो। नाउ आई वांट टू टेल यू हियर, वेरी इजी थिंग, अगर बेटा I naught कांस्टेंट है तो ये बोल सकते हैं कि भैया I naught की वेवफॉर्म ये होगी, इतनी बात क्लियर है, I naught की वेवफॉर्म ये होगी। और यहीं पे अगर बेटा जी हम लोग बात करें कि अल्फा और पाई वगैरह की, तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि समवेयर हियर बेटा दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई, खत्म करें, दिस इज पाई एंड 2 पाई, इट इज 0, और यहां पे कहीं पे हम लोग अल्फा शो कर देते हैं बिकॉज अल्फा इज गिवन 90 डिग्री, सो दिस इज आवर अल्फा, दिस इज आवर पाई प्लस अल्फा, सॉरी 2 पाई प्लस अल्फा एंड सो ऑन, ओके। तो यहां लिख देते हैं बेटा 2 पाई प्लस अल्फा। कैन यू टेल मी डियर, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कैन यू टेल मी डियर अल्फा टू पाई विच डिवाइस विल कंडक्ट, SCR और फ्री व्हीलिंग डायोड? सोच के बोलो, अल्फा से पाई तक क्या ऑन रहेगा, SCR और फ्री व्हीलिंग डायोड? आप कहेंगे सर आसान है, अल्फा टू पाई SCR ही ऑन होगा। अगला क्वेश्चन बेटा, जैसे ही सप्लाई की वोल्टेज पोलैरिटी चेंज होगी, यानी कि पाई के बाद फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन होगा बिकॉज इंडक्टर विल चेंज इट्स ओन वोल्टेज पोलैरिटी। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब ये फ्री व्हीलिंग डायोड कब तक ऑन रहेगा? अगर उस बंदे ने पहले से बोल दिया I naught कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस, काइंड ऑफ क्या, जो कांस्टेंट फंक्शन है बेटा वो कंटिन्यूअस तो है ही, जो कंटिन्यूअस है वो जरूरी नहीं कि कांस्टेंट हो, ओके। अब इस मुद्दे पे आते हैं कि ये फ्री व्हीलिंग डायोड कब तक ऑन रहेगा, तो पाई प्लस पे ये ऑन होगा और तब तक ऑन रहेगा जब तक नेक्स्ट टाइम इसको फिर से ट्रिगर ना किया जाए। तो यहां पे सिंपल सा एनालिसिस निकल के ये नहीं आता यार बेटा, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में बात की जाए यहां पे कि इन दी रेंज ऑफ अल्फा टू पाई, ओके, इन दी रेंज ऑफ बेटा अल्फा टू पाई SCR इज ऑन, खत्म करो, SCR इज ऑन। अगर SCR ऑन, एग्जाम में ऐसे ही डील करना, अगर SCR ऑन है तो गारंटेड डियर फ्री व्हीलिंग डायोड ऑफ होगा, तो गारंटेड डियर फ्री व्हीलिंग डायोड ऑफ होगा और यहां कोई करंट IS होगा, ये SCR हो गया, ये I naught हो गया, R, L एंड E हो गया, खत्म करो इसको। इन दिस केस अवर इंडक्टर विल गेट चार्ज और ये रहा बेटा अपना V naught, डन। अब देखो KVL लगाओ तो V naught इज इक्वल टू क्या हो गया, VS, और IS किसके इक्वल हुआ, I naught के, when SCR is on and this SCR will conduct alpha to pi। सेकंड केस क्या होगा बेटा, पाई टू पाई प्लस अल्फा, एक पॉइंट, लेकिन पाई प्लस अल्फा के बाद
क्या SCR ट्रिगर हो रहा है? नहीं। तो नेक्स्ट टाइम SCR ट्रिगर कब होगा? नेक्स्ट टाइम SCR ट्रिगर होगा बेटा अगली पॉजिटिव साइकिल में, और अगली पॉजिटिव साइकिल में यहां पे कहीं, और ये पॉइंट होगा आपका 2 पाई प्लस अल्फा। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब फ्री व्हीलिंग डायोड की जिम्मेदारी बन जाती है बेटा इस रीजन में करंट को पास करने की, इस रीजन में करंट को पास करने की। तो इस पूरे रीजन में किसको ऑन रहना पड़ेगा? फ्री व्हीलिंग डायोड को। अगर ऐसा नहीं होता तो करंट कंटिन्यूअस भी नहीं होती। नाउ टेल मी, दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस पॉइंट्स आर क्लियर बेटा टू एवरीवन। ये कहानी है। तो यानी कि हम लोग चले गए यहां से इसको उठा के 2 पाई प्लस अल्फा पे, यानी पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा गारंटेड फ्री व्हीलिंग डायोड इज ऑन। और अगर फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन है तो गारंटी है बेटा कि SCR क्या रहा होगा? ऑफ। SCR क्या रहा होगा? ऑफ। और अगर SCR ऑफ है बेटा तो IS यानी कि सोर्स करंट की वैल्यू भी क्या रही होगी? 0। इंडक्टर ने अपनी वोल्टेज पोलैरिटी चेंज की होगी और फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू करंट I0 फ्लो होगी। उम्मीद है इतनी बात क्लियर है। सो इन दिस ड्यूरेशन बेटा IS 0 एंड दिस आउटपुट वोल्टेज, बिकॉज दिस फ्री व्हीलिंग डायोड इज शॉर्ट सर्किटेड, सो दिस आउटपुट वोल्टेज विल बी 0। फटाक से बोलोगे बालक इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? जल्दी बोलोगे बेटा। या यूनिवर्सिटी एग्जाम में पावर इलेक्ट्रॉनिक पूछा था और 2 ऑप्शन की वैल्यू में एक से ज्यादा थी, पावर फैक्टर की एक से ज्यादा, तो बेटा आप समझ ही रहे हो। या क्लियर, वेरी नाइस। तो इतनी कहानी आपको या हमें सभी लोगों को क्लियर है। तो बेटा अगर इस बेस पे बात करें, ये बोर्ड यार काफी धोखा दे रहा है। हाँ, मैंने देखा बेटा बोर्ड कहीं का भी हो लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे से जरूर हैंग होना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट वाज द बेटा I0 वेवफॉर्म हम लोगों ने ड्रॉ की थी यहां पे, ये रही I0 वेवफॉर्म, ये रहा बेटा। तो देखो 0 से लेके अल्फा तक की बात बाद में करेंगे, लेकिन अल्फा से लेके पाई में कौन ऑन है? SCR। अगर SCR ऑन है बेटा तो सोर्स करंट फ्लो होगी, इसके बाद SCR ऑफ है तो सोर्स करंट 0, और 0 रहेगा नेक्स्ट ट्रिगरिंग तक। ये हो गया। अब बेटा यही तो SCR ऑन है, बाकी में SCR ऑफ है, तो ये हो गया सप्लाई करंट वेवफॉर्म, और वी कैन राइट माय डियर फ्रेंड थायरिस्टर करंट वेवफॉर्म। इतनी बात क्लियर है। और जो SCR से करंट फ्लो होगी बेटा वो I0 के बराबर होगी। इतने बात समझ गए? बोलो बोलो यार, बोलते ही नहीं हो आप लोग, फटाक से बोला करो यार, जल्दी जल्दी। अगला पॉइंट बेटा फ्री व्हीलिंग डायोड की बात करें तो डायोड किस रीजन में ऑन होगा? डायोड ऑन होगा बेटा बचे हुए रीजन में, क्योंकि करंट को तो कंटिन्यूअस रखना ही है। ये हो गया आपका ID। डन करो। अब इन दोनों करंट को अगर हम लोग बेटा सुपर इंपोज करें तो देखो ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, I0 बन गया, यानी कि I0 हो गया कंटिन्यूअस और कांस्टेंट। ये कहानी है। देखो इसकी जरूरत थी हमें IS की, ये मिल गया। अगले पॉइंट पे समझो, जहां बेटा फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन है वहां पे V0 की वैल्यू क्या है? 0 है। आप कहेंगे सर जी क्लियर है। यहां भी V0 की वैल्यू क्या है बेटा? 0 है। और जहां पे SCR ऑन है वहां पे V0 किसके इक्वल है? VS के इक्वल है। यानी कि अगर V0 की वेवफॉर्म बनाते तो V0 की वेवफॉर्म कुछ ऐसी बनती बेटा, अल्फा से लेके पाई तक दिस वन विल बी साइन फंक्शन, अदरवाइज बेटा 0। तो ये हो गया अल्फा, ये पाई, ये 2 पाई प्लस अल्फा, ये हो गया बेटा V0। चलो बताओ इतनी बात भी क्लियर है? आगे बढ़ो। क्या निकालना था बेटा? पावर फैक्टर। देखा करो कैसे निकाला जाएगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज नथिंग बट सप्लाई पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। अब बालक अपना जो लोड है वो RLE है और कन्वर्टर आइडियल है, तो इस लोड पावर के इक्वल ही तो सप्लाई पावर होगी। यानी कि हम यहां लिख सकते हैं PS इज इक्वल टू P0। एग्री हो? P0 को लिख सकते हैं बेटा इन एलिमेंट्स की पावर, मतलब PR प्लस PL प्लस PE। क्लियर? अब हमें यह पता है बेटा कि एवरेज पावर ऑफ इंडक्टर विल ऑलवेज 0, ये भी खत्म। रजिस्टिव पावर को हम लिख सकते हैं बालक I0 RMS स्क्वायर एंड बैटरी पावर I0 एवरेज। डन करें। दिस इज इक्वल टू P0 एंड दिस पावर इज ऑल्सो इक्वल टू सप्लाई पावर व्हेन कन्वर्टर इज आइडियल। आगे बढ़ो। अगर हम यहां पे अगले मुद्दे रखें बेटा, सो I0 इज प्योर डीसी, और प्योर डीसी के लिए बेटा I0 एवरेज इज इक्वल टू I0 RMS। इतना सभी को क्लियर है? जब ये वैल्यू यहां पे रखोगे तो फाइनली फॉर्मूला ड्राइव होके क्या आ जाएगा बेटा? P0 इज इक्वल टू V0 एवरेज इनटू I0 एवरेज।
बताओ बालक, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? प्लीज एवरीवन, आई नीड रिस्पॉन्स बेटा, आई नीड रिस्पॉन्स. सो दिस इज द पी नॉट. सो व्हाट विल बी द सप्लाई पावर फैक्टर बेटा? पी नॉट डिवाइडेड बाई एस एस, और पी नॉट हो गया वी नॉट एवरेज इनटू आई नॉट एवरेज. क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम में तमीज से हैंडल करिएगा. आई एस आर एम एस एंड सो ऑन. डन. आगे बढ़े बेटा इसी में. तो देखो ऑब्जर्वेशन करना, हमारे पास बेटा वी नॉट हमें पता है, आई नॉट हमें पता है, वी एस हमें पता है, आई एस थोड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया. देखो यहां पे अगर हम आए तो वी नॉट की वेवफॉर्म क्या थी बालक? ये रही वी नॉट की वेवफॉर्म. वी नॉट की वेवफॉर्म से अगर वी नॉट एवरेज निकालें तो क्या फॉर्मूला डेवलप होता है? कुछ याद है? वी एम बाई टू पाई 1 प्लस कॉस अल्फा बाई इंटीग्रेशन. वी एम बाई टू पाई 1 प्लस कॉस अल्फा बाई इंटीग्रेशन. सर एससीआर तो अल्फा टू पाई माइनस थीटा तक कंडक्ट करेगा. नहीं पल्लव, जब भी लोड में इंडक्टर होगा, ये हमेशा ध्यान रखो, फ्री व्हीलिंग डायोड कभी भी बेटा पाई से पहले ऑन नहीं होगा. ये काफी समझाया था मैंने उस टाइम पे. क्या रीजन है? क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड को ऑन होने के लिए सप्लाई वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होना मैंडेटरी है. जब तक सप्लाई वोल्टेज ऊपर पॉजिटिव है तब तक फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन नहीं हो सकता. इसलिए फ्री व्हीलिंग डायोड पाई के बाद ही ऑन रहेगा. ओके, पाई के बाद ही ऑन होगा. तो अल्फा टू पाई में बेटा ये कुछ इंटीग्रेशन किया, वी नॉट एवरेज आ गया. अब आते हैं आई एस. तो आई एस की वेवफॉर्म हम लोगों ने ये बनाई थी. यहां कहीं जो आई एस की वेवफॉर्म है, यहां से क्या हम बेटा आई एस आरएमएस नहीं निकाल सकते? तो देखो आई एस आरएमएस निकालने के लिए आसान सा ये करें कि भैया आई एस आरएमएस क्या हो जाएगा बेटा? रूट मीन स्क्वायर. देखो ये एरिया बताओ कितना होगा? आई नॉट स्क्वायर इंटू बेटा पाई माइनस अल्फा. टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई. तो क्या हो जाएगा? एरिया आई नॉट स्क्वायर इंटू पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 पाई टू पावर हाफ. होपफुली दिस टर्म इज क्लियर टू एवरीवन. अब ये समय नहीं है कि मैं आपको आई नॉट आरएमएस और एवरेज निकालना बताऊं. तो अब यहां पे आते हैं. फाइनली कॉस फाई की वैल्यू क्या हो गई बेटा? वैल्यू सारी बहुत तमीज से एग्जाम में एक एक स्टेप रखना होता है. वी नॉट एवरेज इज बेटा वी एम बाई टू पाई 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू आई नॉट एवरेज डिवाइडेड बाई बेटा वी एस आरएमएस इज स्टैंडर्ड वैल्यू वी एम बाई रूट 2 फॉर साइन एंड कोसाइन फंक्शन. एंड दिस आई एस आरएमएस इज नथिंग बट आई नॉट अंडर रूट pi minus alpha divided by 2 pi is our final derivation of power factor when load current is constant or ripple free. Okay, इसको ध्यान रखना है. बोलो. याद नहीं रहते सर, बार बार एनालिसिस करना पड़ा. मैं समझ रहा हूं एमजे. होता क्या है बालक, जब तक हम चीजों को ब्लड में नहीं लाते हैं, जब तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक थोड़े से दिक्कतें होती हैं. तो जैसे अगर अब आपको ध्यान रखना है फिलहाल में अभी कि जब भी हाफ वेव रेक्टिफायर हो और ऑब्वियसली फ्री व्हीलिंग डायोड होगा तभी आई नॉट कांस्टेंट होगा. जब भी आई नॉट कांस्टेंट हो, डजंट मैटर कि लोड आरएल है कि आरएलई है, योर पावर फैक्टर फॉर्मूला इज फिक्स्ड. ओके, बट प्लीज कीप इन माइंड दिस पावर फैक्टर फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन योर कन्वर्टर इज आइडियल. अगर बंदे ने बेटा कन्वर्टर में लॉस शो कर दिए तो वो लॉस आपको यहां पे ऐड करने पड़ेंगे. ओके, तो मैं यहां पे फॉर्मूले में हल्का चेंज कर देता हूं. अगर कन्वर्टर प्रैक्टिकल हो तो आप ऐसे लिख देना पीसी कन्वर्टर लॉस. ओके, अगर आइडियल है तो ये लॉसेस जीरो कर देना, और अगर प्रैक्टिकल है तो ये लॉसेस ऐड करके पावर फैक्टर फाइंड आउट कर लेना. ओके, यस. एनी अदर क्वेश्चन बेटा? टेल मी. यस, बोलते रहिए. ओके, चलिए. सो ये हो गया. अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए. अल्फा की वैल्यू आई थिंक 90 डिग्री थी ना अपने केस में, तो 90 डिग्री रखेंगे. फाइनली पावर फैक्टर वी कैन कैलकुलेट. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ आई वांट टू आस्क यू अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम दी दिस वन बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर. ओके, सो ध्यान देना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर मैं आपसे बात करूं बालक सिंपल एक क्वेश्चन की, जैसे कोई डायोड है या एससीआर है and the load is pure inductive and somewhere here we have some supply voltage Vs. Okay, this is the load pure inductive. Okay, and somewhere here this SCR I want to trigger at alpha equal to 60 degree. ये दो एग्जाम्पल आपको ध्यान से सेट करके जाने हैं दिमाग में, और थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि क्वेश्चन बहुत हाई पॉसिबिलिटी तो नहीं है बट उतनी कम भी नहीं है कि आप इग्नोर करें. तो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको करा रखे हैं. ओके, क्लासेस वगैरह में.
YouTube पे भी मैंने करवाए हुए हैं, हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं, तो ये सब ध्यान रखना। ओके, सो प्लीज कीप इन माइंड कि जब भी हम प्योर इंडक्टिव लोड की बात करें या आरसी लोड की बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर में, ओके, सो आपको ध्यान रखना है फॉर व्हेन अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री दिस आई नॉट लोड करंट आई नॉट विल बी कंटिन्यूअस, ओके, एक पॉइंट, और व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री करंटेड आई नॉट विल बी डिसकंटिन्यूअस, एक पॉइंट। यहां पे बात करो बेटा तो टाउ इज इक्वल टू आरसी निकालना, and RC यानी कि this RC will tell you whether your V0 is continuous or not. So beta when we can say when 4 tau is greater than, okay, 4 tau is greater than this device cannot be SCR, my dear friend, this device only will be diode. So when 4 tau is greater than in general we can say 10 millisecond, okay, then V0 will be continuous, V0 will be continuous. Wait a minute. Then V0 will be continuous. ये ध्यान रखना 4 tau is greater than 10 millisecond. When 4 tau beta less than 10 millisecond, V0 will be discontinuous. Okay? तो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि टाउ का क्या मतलब है. Obviously after beta this वेट करना 10 मिलीसेकंड ना, नहीं 10 नहीं 15 मिलीसेकंड, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 तक चार्ज होगा ना, उसके बाद नहीं. तो अगर ऐसा कुछ है तो कंटिन्यूअस और ये कुछ है तो डिसकंटिन्यूअस. तो कहां से कहां तक चार्ज होगा बेटा कैपेसिटर? 0 से लेके पाई बाई 2 तक चार्ज होगा और पाई बाई 2 से लेके 2 पाई तक, ओके, कंफर्म डिस्चार्ज होगा और 2 पाई के बाद डिसाइड होगा. ओके, तो ये कुछ मुद्दे हैं. इन जनरल वे से आप ऐसा कुछ कह सकते हैं. और आगे बात करें तो इसमें जैसे इंडक्टर है तो आपकी करंट कॉन्टिन्यूअस तभी होगी व्हेन अल्फा इज 0 और व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 गारंटेड आई नॉट डिसकंटिन्यूअस. तो ये दो स्पेशल केसेस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है. दूसरा मुद्दा ये ध्यान रखना कि एल की कोई भी वैल्यू इस केस में आपके करंट को कांस्टेंट नहीं कर सकती, रिपल फ्री नहीं बना सकती, बट यहां पे सी की हाई वैल्यू अपने आउटपुट वोल्टेज को रिपल फ्री कर सकती है. बट ये ध्यान रखना जो आई नॉट या लोड करंट है उससे कैपेसिटर का कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है. जरूरी नहीं कि आपकी आई नॉट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है डिसकंटिन्यूअस भी हो जाए, इट डिपेंड्स. ओके, होपफुली ऑल दी टर्म्स आर क्लियर. ओके, तो संतन सर बालक मेरे हिसाब से ऐसे मान के चलिए 7:15 तक 7:30 तक कुछ इस टाइप का. ओके, सो या क्लियर, वेरी नाइस. नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा फुल वेव रेक्टिफायर. सो व्हाट विल बी द फुल वेव रेक्टिफायर? सो फुल वेव रेक्टिफायर, ओके, फुल वेव रेक्टिफायर यह अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान से समझिए. या चलिए full wave rectifier. So what is a full wave rectifier? How many number of SCRs we require? Total number of SCRs we require in this converter beta 4. तो एक लोड से हम सारी बातें लगभग करेंगे. ओके, एक ही लोड से हम लोग ऑलमोस्ट सारी बातें डिस्कस करेंगे. So here I want to write R, L and E and this device I want to give some name. तो इसे T1 मान लें, इसको बेटा T2 मान लें, ये T3 मान लें, ये T4 हो गया. और यहां लिख देते हैं सप्लाई दिस टर्मिनल इज ए दैट टर्मिनल इज बी प्लस माइनस Vs. ओके, चलिए आगे बढ़े. यस, जरा ऑब्जर्वेशन समझिए बेटा, ठीक है. नाउ टिल नाउ एनी डाउट? बोलिए बालक फास्ट, सभी लोग, अभी तक कोई डाउट? ओके, देखो ध्यान से समझो. फुल वेव रेक्टिफायर, ओके, प्योर रेजिस्टिव लोड या RE लोड के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्या हो जाता है? हाफ वेव रेक्टिफायर. बस किसका फर्क पड़ेगा बेटा? टाइम पीरियड का. जैसे वहां 0 से पाई में मान लो अनकंट्रोल्ड है तो वहां 0 से पाई में साइनसॉइडल है, और फुल वेव अनकंट्रोल्ड है तो 0 से पाई में भी साइन है और पाई से 2 पाई में भी साइन है. वो आप समझ गए होंगे. ऐसे अगर RE लोड है तो जो 0 से पाई में नेचर होगा आई नॉट का या V नॉट का, वही सेम नेचर होगा आपका फुल वेव में पाई से 2 पाई में भी. ओके, यानी कि कुल मिला के टाइम पीरियड कितना हो जाता है? हाफ. टाइम पीरियड हाफ होने की वजह से जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या हो जाती है? डबल. ओके, रिपल फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट आउटपुट फ्रीक्वेंसी. इतनी बात क्लियर है. तो फुल वेव रेक्टिफायर प्योर रेजिस्टिव लोड, फुल वेव रेक्टिफायर RE लोड आर सिमिलर टू हाफ वेव रेक्टिफायर. वर्किंग वाइज बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है. अब आते हैं फुल वेव विथ इंडक्टिव लोड.
तो अब फुल वेव इंडक्टिव लोड में अपने पास दो पॉसिबिलिटी होंगे, आइदर आई नॉट विल बी कंटिन्यूअस और आई नॉट विल बी डिसकंटिन्यूअस। ओके, यहां पे आपको ध्यान से समझने वाली यह बात है कि अगर आई नॉट कंटिन्यूअस है, ओके, या ऐसा कुछ आपको बेटा जी वो एल की वैल्यू दे देते हैं कि कंफ्यूज हो जाए कि आई नॉट है क्या, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो आई नॉट की कंटिन्यूटी डिटरमाइन करना और डिसकंटिन्यूटी या इन अदर वर्ड डिसकंटिन्यूटी डिटरमाइन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर दैट वी हैव टू यूज सम मैथमेटिकल जॉब। जो मैंने आपको आई नॉट टी की एक इक्वेशन नहीं बताई थी, वी एम बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस पाई माइनस वी एम बाई जेड समथिंग लाइक दिस, तो उस इक्वेशन को हमें यूज करना पड़ेगा कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी बताने का। जबकि सिंगल फेज हाफ वेव में ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है टू डिटरमाइन कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। ओके, क्योंकि फायदा क्या है हाफ वेव में अगर फ्री व्हीलिंग नहीं है तो किसी भी एल के लिए डिसकंटिन्यूअस है, किसी भी एल के लिए डिसकंटिन्यूअस है, खत्म करो। और फ्री व्हीलिंग है तो आसानी होती है फाइंड आउट करने में, डायरेक्टली 4 टाउ से कंपैरिजन कर दो। बट फुल वेव में ऐसा नहीं है। तो फुल वेव में पहले तो आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। इन द फुल वेव रेक्टिफायर वेदर गिवन करंट इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट, गिवन करंट इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट फॉर इंडक्टिव लोड। ओके, आगे समझिए इस बात को। अगर उसने लिख दिया कंटिन्यूअस है, अगर उसने लिख दिया कंटिन्यूअस है तो अब हमें कुछ सोचना ही नहीं है। और अगर उसने डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कुछ भी नहीं लिखा है तो हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन आप कहेंगे क्या सर इतना टाइम होगा कि उस बड़ी इक्वेशन को सिंपलीफाई किया जाए? अगर टाइम है तो चेक कर लेना, और अगर टाइम ना हो तो कंटिन्यूअस मान के हैंडल कर देना। वर्डिंग देखो, अगर टाइम है कैपेबल हो तो चेक करना, और नहीं हो तो कंटिन्यूअस मान के हैंडल कर देना। आप गलत कब होगे कंटिन्यूअस मान के? ओनली व्हेन लोड विल हैव सम बैटरी, ओनली व्हेन लोड विल हैव सम बैटरी। ओके, मुद्दा यह नहीं है बालक कि कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कैसे पता करें। मुद्दा यह है कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस आने से फॉर्मूले चेंज होंगे। ओके, अब फॉर्मूले कब चेंज होंगे? इन जनरल वो तभी चेंज होंगे जब वी नॉट आई नॉट की वेवफॉर्म चेंज हो। और वी नॉट आई नॉट की वेवफॉर्म चेंज करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें आर एल और ई की वैल्यूज पता होनी चाहिए। वो वैल्यूज हम वहां पे रखेंगे, फिर डिटरमाइन करेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, बट फिर भी होता क्या है, जब भी हम एसी टू डीसी कन्वर्टर की बात करते हैं तो ये चॉपर जैसा नहीं है जिसमें डायरेक्ट आपको कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस पूछा जाएगा। यहां पे आपको लिखा मिलेगा क्वेश्चन में प्रॉपरली कि ये भैया करंट कॉन्टिन्यूअस है या ये करंट डिसकंटिन्यूअस है। जब भी वो आपको कॉन्टिन्यूअस की बात करे आप कंटिन्यूअस वाले फॉर्मूले लगा देना, जब भी डिसकंटिन्यूअस की बात करें आप डिसकंटिन्यूअस वाले फॉर्मूले यूज करना। ओके, नाउ इट इज क्लियर? या गुड इवनिंग, आगे बढ़ते हैं। समझना बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं, सिंपल सिंपल बातें करेंगे हम लोग, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। इफ आई वांट टू से दिस आई नॉट इज कंटिन्यूअस, सिंपल बात, इफ आई वांट टू से बेटा दिस, इफ दिस आई नॉट इज कंटिन्यूअस, ओके, देन व्हाट विल बी द वी नॉट नेचर? 10-12 केस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं, बस सुनते रहिए, जहां भी डाउट हो पूछते रहिए। ओके, अब मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूं बेटा, आई नॉट इज कंटिन्यूअस। वर्डिंग देखो, आई नॉट इज कंटिन्यूअस डजंट मैटर लोड इज आर एल ई और लोड इज आर एल और लोड इज एनी इंडक्टिव। यही पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, या तो लोड आर एल ई होगा या आर एल होगा और एनी इंडक्टिव लोड। बट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बेटा, आई नॉट कंटिन्यूअस है। अगर आई नॉट कंटिन्यूअस है और कन्वर्टर कुछ ऐसा है तो एक बात कंफर्म है बालक कि किसी भी कॉस्ट पे वी नॉट की वेवफॉर्म चेंज नहीं होने वाली फॉर एनी लोड। वर्डिंग देखो, फॉर एनी लोड बट आई नॉट कंटिन्यूअस, then V naught shape will look like something. This is alpha pi plus alpha. खत्म। कहां कठिन है? फॉर एनी लोड अगर आपकी करंट कॉन्टिन्यूअस है तो V नॉट की वेव शेप को बेटा ब्रह्मा भगवान भी चेंज नहीं करेंगे, और अगर ये वेव शेप आ गई तो V नॉट एवरेज कंफर्म क्या हो जाता है? कुछ याद करो, 2Vm by pi cos alpha। पहले आप सभी लोग बताइए, यहां तक क्लियर है सभी को? प्लीज टेल मी डियर फास्ट, यहां तक क्लियर है सभी को? फटाक से बोलो। देखो सिंपल, आप लोग बोलो, हाँ ना करो, तब तक मैं रिपीट कर देता हूं।
ध्यान देना बेटा, मैं सिंपल आपसे ये कहना चाह रहा हूं, कोई भी फुल वेव रेक्टिफायर हो कंट्रोल, कोई भी फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर हो, सारे डिवाइसेस एससीआर होने चाहिए, नहीं तो मैं कंटाप जड़ दूं, ये ध्यान रखना, सारे डिवाइसेस एससीआर होने चाहिए, हर एससीआर का ट्रिगरिंग एंगल सेम होना चाहिए। अगर करंट कॉन्टिन्यूअस है, सारे डिवाइसेस एससीआर है, सबका ट्रिगरिंग एंगल सेम है, तो ये वी नॉट आएगा गारंटेड। और अगर ये वी नॉट आता है तो वी नॉट एवरेज यही होगा जो लिखा हुआ है, और वी नॉट आरएमएस क्या आ जाता है बेटा, वी नॉट आरएमएस आ जाता है Vm/√2। होपफुली ऑल दी पॉइंट्स आर क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला पॉइंट समझिए। अगर इस स्थिति में है, समझो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऑल आर एससीआर, एक बात, ओके, पहली बात, ट्रिगरिंग एंगल ऑफ each SCRs are same। अगली बात बेटा, लास्ट, लोड इज हाईली इंडक्टिव और I naught is continuous or constant। So for this type of case, okay, our V naught wave shape will be this one and the V naught average RMS will be this one। अगला पॉइंट समझते हैं बेटा, अगर हम I naught की बात करें तो I naught में दो बातें हो सकती हैं, या तो I naught बेटा कांस्टेंट होगी या फिर कंटिन्यूअस होगी। अगर कांस्टेंट हो तो सिंपल ये शो करके भाग आना वहां से, और अगर आई नॉट कंटिन्यूअस हुई तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग शो करके ऐसे चले आना। इसकी आरएमएस वैल्यू आपसे कोई पूछेगा नहीं भैया, टफ होती है, इसकी आरएमएस वैल्यू कोई भी पूछ सकता है। तो 99% से ज्यादा केसेस में आपको लोड करंट कांस्टेंट दी जाएगी। ये चॉपर नहीं है कि आरएमएस वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लो, ये रेक्टिफायर है AC to DC में कैलकुलेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू इज रियली समवॉट कॉम्प्लेक्स व्हेन लोड इज RL और RLE टाइप। सो ये बेटा मुद्दा हो गया कि इसमें आई नॉट आरएमएस नहीं पूछेगा, बट इसमें पूछ सकता है। जब भी करंट कांस्टेंट हो, आप लोड पावर को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, वी नॉट एवरेज इनटू आई नॉट एवरेज। कब लिख सकते हैं, जब लोड करंट कांस्टेंट हो, और ये पावर बेटा और किसके इक्वल होगी, आई नॉट आरएमएस स्क्वायर इंटू ई आई नॉट एवरेज के भी इक्वल होगी। लेकिन अगर ये आपकी करंट बेटा कांस्टेंट है, सॉरी, अगर आपकी करंट कॉन्टिन्यूअस है, तो आप सिर्फ सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वाला इनवैलिड हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले वैलिड कब होंगे, जब करंट कांस्टेंट हो, और जब करंट सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है तो सेकंड यूज करना, फर्स्ट वाले को भूल जाना। क्योंकि फर्स्ट वाले केस में बेटा, फर्स्ट वाला केस ये शो कर रहा है कि आई नॉट एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट आरएमएस है, इसलिए इक्वल हो गया। जबकि यहां पे बेटा आई नॉट एवरेज इज लेस देन आई नॉट आरएमएस है, दैट्स व्हाई फर्स्ट फॉर्मूला इज फेल व्हेन दिस करंट इज कंटिन्यूअस। ओके, या वेरी नाइस। पक्का क्लियर है बालक, आगे बढ़ा जाए, पक्का क्लियर है। ओके, नाउ ध्यान देना बेटा अगली बातों पे। जब भी आपको सारे एससीआर दिए हों, सभी का ट्रिगरिंग एंगल सेम है, तो यह भी ध्यान देना है, द कंडक्शन पीरियड ऑफ ऑल एससीआर विल बी सेम। The conduction period of all SCR will be same. The commutation time of all SCR will be same. Now the most important point, अगर सारे डिवाइसेस SCR हैं बालक, सारे डिवाइसेस SCR हैं, लोड आपका RLE टाइप है, लोड आपका RLE टाइप है, जैसा आपको दिख रहा है वैसा है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इतने सारे पैरामीटर्स के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है बालक, I naught will be continuous, I naught will be continuous only when, the most important point, only when alpha is less than 90 degree। अगर आपका कन्वर्टर कुछ ऐसा है तो आई नॉट कंटिन्यूअस तभी होगा जब अल्फा की वैल्यू क्या हो, लेस देन 90 हो। वहां जाके डफर की तरह बैठ मत जाना गेट में, ध्यान देना। अगर वो ना कुछ ऐसा दे इंफॉर्मेशन तो इन बातों पे ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल मैं आराम से एक कन्वर्टर बना दूं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो एग्जाम में। हियर बेटा वी हैव ऑल डिवाइसेस एससीआर। मेरी बात समझो बालक, बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है आपके साथ इस समय। मैंने आपसे बोला 10-12 पॉइंट में से ये पहला पॉइंट चल रहा है जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज E and here I want to write some VS. So this terminal is A, this terminal is V, some T1, T2 and T3, T4. Okay, सभी all devices are SCR.
तो देखो जब भी आपका ये जो बैटरी E है, that battery is going to absorb power. Okay, so this battery is going to absorb power. It means I naught will be continuous. I naught will be continuous only when alpha is less than 90 degree. Okay, now with plus beta, L value should be high or very high, inductance value. दूसरा इसी में समझना बेटा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि स्टिल E इज एब्सॉर्बिंग पावर, E इज एब्सॉर्बिंग पावर, ओके, तो देखो अभी E पोलरिटी सेम है E के, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं L की वैल्यू वेरी लार्ज है, वर्डिंग देखो L की वैल्यू वेरी लार्ज है एंड पावर कंज्यूम बाय बैटरी इज स्टिल एब्सॉर्बिंग पावर, मतलब ये बैटरी पावर डिलीवर नहीं करेगी, L वेरी लार्ज है, बट अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर ये कंडीशन आपको कोई देता है तो आप L की लार्ज वैल्यू को भूल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता अब इससे, गारंटेड ये इंफॉर्मेशन आपको आई नॉट डिसकंटीन्यूअस देगा, गारंटेड ये इंफॉर्मेशन बेटा आपको आई नॉट डिसकंटीन्यूअस देगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सर इतने सारे पॉइंट्स कैसे माइंड में रख देंगे एग्जाम में, तो थोड़ा बेटा थोड़ा से तो पॉइंट रखने पड़ेंगे। देखो मैं फिर से रिपीट करूं, जब भी आपको लोड आरएलई दे, सारे एससीआर वर्डिंग देखो, सारे एससीआर सारे का ट्रिगरिंग एंगल सेम है, आपकी करंट कंटीन्यूअस तभी होगी जब अल्फा लेस देन 90 डिग्री हो प्लस एल हाई हो। दूसरा पॉइंट बेटा, एल भले ही कोई वैल्यू बना रहे, लेकिन अगर अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया और अभी भी बैटरी आपकी पावर कंज्यूम कर रही है तो गारंटेड आई नॉट क्या हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस। तो गारंटेड आई नॉट क्या हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस। अगला पॉइंट इसी समझिए बेटा, इतने केस तक हम बोलते हैं रेक्टिफायर केस, लेकिन अगर कोई आके लोड में उसकी बेटा ई की पोलरिटी को चेंज कर दे, जैसे यहां माइनस यहां प्लस कर दे, जबकि आपको पता है कि लोड की करंट डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी, तो देखो अब बैटरी में करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होगी, मतलब ये बैटरी पावर डिलीवर करने जा रही है, और जब ये बैटरी पावर डिलीवर करे, एल की वैल्यू लार्ज हो, अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो भी आई नॉट क्या हो जाएगा बेटा? कंटीन्यूअस। तो आई नॉट क्या होगा? कंटीन्यूअस। मतलब ध्यान दो, एल की वैल्यू लार्ज होना कंटीन्यूअस करंट का प्रमाण पत्र नहीं है, रेस्ट्रिक्शन दे देगा। एल की वैल्यू लार्ज होना कंटीन्यूअस करंट के लिए मैंडेटरी है, पर उसके साथ साथ मोड भी जाना चाहिए। जैसे रेक्टिफिकेशन मोड है तो अल्फा लेस देन 90 डिग्री पे करंट कंटीन्यूअस होगी, लार्ज वैल्यू एल के लिए। रेक्टिफिकेशन मोड में ही अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री में करंट डिसकंटीन्यूअस हो जाएगी। इन्वर्टिंग मोड है तो अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री पे लार्ज वैल्यू एल के लिए करंट क्या हो सकती है? कंटीन्यूअस हो सकती है। डन करो, बताओ क्लियर है कि नहीं? ओके, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं बेटा, थैंक यू। ये एक बात हो गई। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले, आपको बस इतना ध्यान रखना, डजंट मैटर आवर कन्वर्टर इज गोइंग टू ऑपरेट एज ए रेक्टिफायर मोड और एज एन इन्वर्टिंग मोड, डजंट मैटर। इन ऑल केसेस द वी नॉट एवरेज फॉर्मूला विल बी 2bm by pi into cos अल्फा। खत्म करो। अब मैंने जैसे आपको समझाया है कि आपको इन जनरल लोग जो लोड करंट है वो रिपल के साथ नहीं देंगे, वो रिपल के साथ नहीं देंगे। अगर रिपल के साथ देते हैं तो कुछ ऐसा करेंगे कि आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ना हो, किसी ना किसी तरीके से कैंसिल वैंसिल हो जाएंगी चीजें। लेकिन अगर आई नॉट उसने कांस्टेंट दे दिया तो अब उसके पास हक मिल गया, एक पूरे स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ उसके पास हक है कि भैया वो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके रेक्टिफायर से पूछ सकता है, अगर आई नॉट को उसने कांस्टेंट कर दिया तो। और आई नॉट को अगर कांस्टेंट नहीं किया तो रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कि आप कम से कम गेट में बैठे हुए बच्चे से आई नॉट आरएमएस कैलकुलेट ना करवाएं, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। ओके, इतनी बातें क्लियर है। यही एक आपका मेन सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर था। अब हम बात करते हैं बेटा इसकी कि भाई कभी कभी आपने देखा होगा, जरूरी नहीं चारों एससीआर हो, सॉरी जरूरी नहीं बेटा कि चारों एससीआर हो, कुछ एलिमेंट या डिवाइसेस आपके डायोड भी हो सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे करूं कि बेटा यहां पे कोई एससीआर है और यहां डायोड है, प्लीज बी सीरियस, ये अगला पॉइंट है, यहां पे कोई एससीआर है, यहां डायोड है, तो मैं ऐसे बोल देता हूं ये एससीआर है और ये डायोड है और यहां कोई सप्लाई लगा दिया, दिस इज आर एल एंड ई। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि एल की वैल्यू लो है, एल की वैल्यू मैं खुद लिख रहा हूं लो, एल की वैल्यू लो है। ओके, लो का मतलब बहुत लो नहीं है, एल की वैल्यू लो है बस। ओके, चलो एक काम करते हैं, एल को क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, थोड़ा ध्यान देना इस बात पे। नाउ एल इज अननोन, क्वेश्चन मार्क, जो आपको सिलेक्ट करना है वो करिए। आई वांट टू ask you very easy question at this moment.
इफ एल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्या आप बता सकते हैं बेटा आई नॉट कंटिन्यूअस होगी कि डिसकंटिन्यूअस होगी इन केसेस में? क्योंकि यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। सर रिएक्टिव पावर की भी बात कर दीजिए। बिल्कुल पल्लव, अभी कर देते हैं, अभी इसी मोमेंट पे कर देते हैं। सर बहुत डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, परसों क्या करें? रुको, भावुक कर दिया आप लोगों ने। देखो मैं समझ सकता हूं इस क्रिशुअल टाइम में, और थोड़ा सा मैं कहूंगा एक जो पैनिक वाला ना पीरियड होता है वो है अभी अपने पास। देखो अब आप ऐसे समझना, ओके, थोड़ा मैं क्या हूं ओपन होके ज्यादा बोलता हूं, ओके। अब आप ऐसे समझना कि आप मार्केट में खड़े हो और घर से अपनी साइकिल या स्कूटी पे मार्केट में आए हो और कोई आपको कंटाप लगाने जा रहा है। अब आपको उन कंटाप का सही वे से रिप्लाई करना है, ओके। अब यह हो सकता है कि वो कंटाप आपको कोई साइकिल पे बैठा हुआ बंदा मारे, कि बाइक पे बंदा मारे, कि मर्सिडीज वाला बंदा मारे, कि मान लो और कोई पावरफुल बंदा मारे। अब कहां आपको कंटाप का कंटाप से रिप्लाई देना है, कहां आपको कंटाप का किसी और वे से रिप्लाई देना है, ये आपको समझना है उसी शॉर्ट पीरियड में। ऐसा नहीं किसी बंदे ने 2 तमाचे धर दिए, फिर आप गए समोसे खाए, सोचा और फिर जाके रिप्लाई कर रहे हो, भाई साहब आपने ना गलत किया है, ओके, ये नहीं। तो ऐसे इंपल्सिव पीरियड में जो बेस्ट जो आंसर्स आते हैं या डिसीजन हम जो लोग लेते हैं बेटा, वो हमें वाकई में एक तरीके से नहीं होता है, आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, ओके। तो कहानी को अगर हम समझें कंक्लूजन वाइज तो ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास है अभी, अब ये ऑलमोस्ट फिक्स है, ऑलमोस्ट कोई वेरिएशन नहीं होगा एग्जाम तक। बस हम ब्रशअप करके 2-4 फॉर्मूलों को और अपने ध्यान में दिमाग में रख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब वो क्वेश्चन हल्का होगा एग्जाम में, थोड़ा और हाई लेवल होगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, नोबडी नोज इट। हमें उसे रिप्लाई कैसे करना है, हथियार तो अपने पास वही है ना जितना हमने पढ़ा है, उसका बेस्ट लगा डालिए, ओके। आप विश्वास नहीं करेंगे, संडे को या 7 तारीख को जब आप आके मुझे बताएंगे, मैं आपको पेपर पे लिख के दे देता हूं, आप जो कहेंगे मैं वो कर दूंगा। अगर मैं गलत हो जाऊं, आप मुझसे आके कहेंगे सर ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं पक्का कर सकता था और मैंने घर पे आके कर दिए थे, मैंने मेट्रो में कर लिए थे, मैंने बस में कर लिए थे, बस वहां नहीं हुए। बस मैं उन्हीं 3-4-5 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, ओके, जो आप मुझे बाद में बताने वाले हो कि सर पक्का हो जाते। सर पता है सर क्या हुआ, 7 नंबर मेरे इससे गलत हो गए कि उसमें 1 किलो ओम लिखा था, मैंने 1 ओम ले लिया। सर पता है क्या हुआ था यार, सर उसमें ना 600 माइक्रोसेकंड था, मैंने जल्दीबाजी में मतलब 600 मिली फैरेड ले लिया। सर क्या हुआ, आप पढ़ाते रहते थे 50 हर्ट्ज, एग्जाम में 60 हर्ट्ज था, इससे सर मेरे 7 नंबर गलत हो गए। 4 क्वेश्चन ऐसे थे सर जो मैं पक्का कर सकता था, वो भी छूट गए, ओके। बस में कर दिए थे सर, मैंने बस में कर दिए थे, हो गया था। अगर 7 क्वेश्चन गलत हो गए, लाइक डेटा लेने की वजह से या थोड़ा कंसंट्रेशन वीक होने की वजह से, 4 क्वेश्चन वो जो आप मेट्रो में किए थे, मेट्रो में करने का मतलब है 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद कर दिया आपने, ये क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चन आप वहां कर सकते हो, ओके। सबसे पहली बात, लालच छोड़ देना, नहीं लाने 80 नंबर, नहीं लाने 90 नंबर, जो आएंगे वो बाद में देखा जाएगा, लालच नहीं करना है। लालच कर दिए तो रोल नंबर और रैंक बराबर, फिर आप उसमें डिफरेंस पैदा नहीं कर सकते, ओके। नहीं होता है, बल्कि दुनिया के कितने भी लोग समझा ले यार, करना हमें वही होता है जो वाकई में हम करना चाहते हैं अंदर से। वरना आप समझ रहे हैं इतने बड़े बड़े मोटिवेटर हुए हैं, कहीं कुछ बदलाव कर पाए बहुत ज्यादा ब्रह्मांड में, हार्डली एक अच्छा मोटिवेटर अपनी लाइफ में 100 लोगों को भी सही से चेंज नहीं कर पाता है। तो हम जो अंदर से हैं वो हमारी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको चेंज सिर्फ हम कर सकते हैं। तो उस 3 घंटे में आपको लालच नहीं करना है, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि बगल वाला क्या कर रहा है क्या नहीं। उन 3 घंटों के लिए आपका अपना समर्पण उस एग्जाम को, खत्म।
आप 1.5 घंटे में खाली हो जाए बुरा मत मानिए, 3 घंटे कम पड़ जाए अच्छा मत मानिए, बस इतना जानिए कि हाँ ये मेरा बेस्ट था और ये मैंने दिया। हर इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली देखना है, कोई जबरदस्ती की गलती नहीं करना है। अगर समय बचता है आधे पौन घंटे, रिकैलकुलेट कर दो चीजों को। जो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि दिखने से हो रहे हैं और आ नहीं रहे हैं, उन पे और टाइम दे दो। ऐसे मोटा मोटी करने से बहुत कुछ अचीव कर लोगे। तो डर नहीं, स्वाभाविक है, नेचुरल है। अब उसमें आप या हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ओके, आपको पता है आज भी 10 साल ऑलमोस्ट मुझे हो गए डील करते हुए बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बट आज भी जब मैं किसी नई प्लेटफॉर्म पे जाता हूं ना, तो हल्का सा तो रहता होगा ना। ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा कि कोई ऐसा हो जिसको हल्का सा भी ना फील हो, कुछ ना कुछ तो हल्का सा एक वेरिएशन, या नया है कुछ, समझ रहे हो ना। ये सबको होता है यार, तो कोई नई बात नहीं है। बस अपने आप को थोड़ा मजबूत रखिए, थोड़ा मजबूत रखिए, गिरने मत दो। अब ये वो समय है, कुछ किसी भी तरीके से हेल्थ वाइज मेंटल स्टेज थोड़ी सी अच्छी रखो। ओके, ना मन करे पढ़ने का छोड़ दो। वैसे भी 3 दिन में मतलब एट मैक्स अगर आप बहुत अच्छा कर जाते हो तो 6-7 नंबर का वेरिएशन आज भी कर सकते हो, ये मैं कहूंगा। ओके, कर देते हैं लोग यार, 3 दिन बहुत होते हैं अभी। बट मैं फिर से कहूंगा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुल मिला के खुद को स्ट्रांग रखो। डर लग रहा है, लोगों के साथ चले जाओ 2 घंटे के लिए बाहर, थोड़ा घूमो फिर आओ, नहीं मन लग रहा है मूवी देखो, बट ये देखो कि आपके एग्जाम में बहुत गेट ना चले। ओके, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जैसे कोई नया काम होने होता है तो जैसे मान लीजिए मैं सो ही नहीं पाता हूं सुबह 6 बजे तक, वो दिमाग में चलता रहता है, फिर होता क्या है पूरा दिन खराब हो जाता है। बट आपका तो एग्जाम है, तो कुछ भी ऐसे करना है कि दिमाग में कम से कम ये रिएक्शन चले, चलेगी वो नेचुरल है, बट कम से कम चले। ओके, तो कोशिश करके देखो एक बार। यस सर, इस पार्ट में से कितने मार्क्स का आता है? अभिनव ऐसा बोल सकते हैं बालक, 2 मार्क्स का लगभग यहां से रहेगा। बस 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 यही रखना है। और खुद मतलब खुद को खुद ही खुद ही से परेशान हो रहे हो तो खुद ही को 2 घंटा रख देना। ओके ओके, 42 बेटा। और ओके, तो चले आगे बढ़े, चलिए। ओके, थैंक यू। तो अब एक बार फिर से जरा लहजों को समझिए। जैसे ऐसे ही समझो, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप ऐसे नहीं, ऐसे बैठे थे यार, डिस्कस कर रहे हैं पार्क में बैठ के। ओके, देखो 2 एससीआर है, 2 डायोड है और आरएलई लोड है, आई नॉट अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री। खत्म करते हैं इस बात को, समझिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूं बेटा, व्हेन अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री देन दिस आई नॉट विल बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, एल इज नॉट गिवन। देखो जब सारे एससीआर थे, मैं बोल रहा हूं आप सुनो सही से, जब ये सारे एससीआर थे तो अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री पे आई नॉट डिसकंटिन्यूअस होगा अगर ये बैटरी पावर डिलीवर नहीं करती तो। और अगर ये बैटरी पावर डिलीवर कर रही है, एल की वैल्यू लार्ज है, अल्फा ग्रेटर देन 90 है, तो करंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी और इन्वर्टिंग मोड आ जाएगा। क्लियर करें, आगे बढ़े ना बालक। हियर 2 डायोड 2 एससीआर, एल वैल्यू नॉट नोन, अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री, आई नॉट बताओ कॉन्टिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा? ओके, कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा? ध्यान देना बालक। देखो आई नॉट क्या होगा उसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी वर्किंग देखते हैं, वर्किंग से हमें आइडिया मिलेगा। तो देखो आराम से समझना बेटा, एक बात कंफर्म है, ध्यान देना, एक बात कंफर्म है कि 0 से लेके पाई तक ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी कुछ ऐसे होंगे 0 से पाई, और पाई से 2 पाई में ये पोलैरिटी चेंज होगी। यानी कि 0 से लेके पाई बालक इसके नेगेटिव है, तो ये कंफर्म ऑन रहेगा D1 और ये हो गया T1, इसे बोल देते हैं T2, इसे बोल देते हैं D2। तो एक कंफर्म है बेटा कि 0 से पाई D1 कंफर्म ऑन एंड पाई टू 2 पाई D2 कंफर्म ऑन। तो ऊपर से वो एससीआर ऑन होगा जिसको ट्रिगर करेंगे उसके फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। यानी कि अल्फा से लेके पाई तक T1 कंफर्म ऑन और पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक बेटा T2 कंफर्म ऑन। अब थोड़ा पीरियड बचा, उसमें T1 ऑन होगा कि T2 ऑन होगा वो वर्किंग बताएगी। लेकिन एक बात कंफर्म है कि 0 से पाई में D1 ऑन होगा क्योंकि D1 के कैथोड पे नेगेटिव है, और पाई से 2 पाई में बेटा D2 ऑन होगा क्योंकि D2 के कैथोड पे नेगेटिव है।
समझ पा रहे हैं ना? इसका मतलब एक ऐसा पीरियड जरूर होगा बेटा जहां पे T1 D2 एक साथ ऑन होंगे और T2 D1 एक साथ ऑन होंगे, और वो पीरियड भले छोटा क्यों ना हो लेकिन होगा जरूर, होगा जरूर। इसका मीनिंग क्या है बेटा? फ्री व्हीलिंग एक्शन आ गया, फ्री व्हीलिंग एक्शन आ गया। फ्री व्हीलिंग डायोड दिख नहीं रहा है लेकिन इनहेरेंटली मौजूद है, इनहेरेंटली मौजूद है। यानी कि कोई एक पीरियड जिसमें T1 D2 एक साथ ऑन होते हैं, तो ये देखो बेटा शॉर्ट हो गया लोड, ऐसे T2 D1 एक साथ ऑन होते हैं तो शॉर्ट हो गया, V0 की वैल्यू क्या हो गई? 0। यानी कि जब भी फ्री व्हीलिंग एक्शन आ जाए और कोई लिख दे बेटा L वैल्यू इज लार्ज फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फा, I0 विल बी कंटिन्यूअस, I0 विल बी कंटिन्यूअस। किसमें? जब सारे डिवाइसेस SCR ना हो, एक कम से कम एक तो डायोड हो या एक से ज्यादा डायोड हो, तो कंफर्म बेटा लार्ज वैल्यू L के लिए I0 कंटिन्यूअस होगी। डजंट मैटर अल्फा लेस देन 90 डिग्री है कि अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सबसे बड़ी बात, जब भी फ्री व्हीलिंग एक्शन होगा इस बैटरी की पोलैरिटी कभी चेंज होगी नहीं, क्योंकि कभी भी इन्वर्टिंग मोड लग ही नहीं सकता है। इन्वर्टिंग मोड इज इम्पॉसिबल व्हेन कन्वर्टर विल हैव इनहेरेंटली फ्री व्हीलिंग एक्शन और फीडबैक डायोड इज प्रेजेंट। Now tell me it is clear? Yeah, semiconductor freewheeling action अपने बिल्कुल ये हो गया बेटा ऐसे ही। तो जब भी आपको इस टाइप की कोई एनालिसिस मिले उस पर थोड़ा ध्यान रखना है कि इस टाइप के केसेस में आपके किसी भी अल्फा के लिए करंट कॉन्टिन्यूअस हो सकती है, करंट कांस्टेंट हो सकती है, और जब भी इस टाइप का कोई कंडक्शन होगा, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, ओके, इन सारे एग्जांपल्स को ध्यान रखना। 2 SCR टॉप में, 2 डायोड बॉटम में, एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा। ये लोड आपका मैं यहां रख देता हूं एंड I0 इज कंटिन्यूअस और कांस्टेंट, I0 इज कंटिन्यूअस और कांस्टेंट, ये एक कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन बेटा ऐसा मैं बना देता हूं, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया और दूसरा कॉम्बिनेशन मैं यहां ले लेता हूं। इस केस में अपने पास कुछ कहानी में बदलाव कर देता हूं, ये ऐसे कुछ है बेटा, ये लो ये बन गया, ऐसा कुछ भी बन जाए, या अब इसमें हम लोग कुछ ऐसे कर देते हैं, 2 SCR एक ही साइड ले लेते हैं, ये हो गया और ये हो गया, या ये ले लिया जाए बेटा ये केस। तो देखो कितने हो गए, सिंगल फेज सा सिमेट्रिकल कन्वर्टर, सिंगल फेज एसिमेट्रिकल कन्वर्टर एंड सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर। ये तीनों केसेस एक साथ स्क्रीन पे देखो, तीनों केसेस। इन तीनों केसेस में एक बात कॉमन है कि V0 की वेवफॉर्म सेम आने वाली है, V0 की वेवफॉर्म सेम आने वाली है। तो V0 की वेवफॉर्म इन ऑल केसेस विल लुक लाइक समथिंग, विल लुक लाइक समथिंग 0 अल्फा पाई, पाई प्लस अल्फा। फॉर्मूले में जाके वहां पे मिस्टेक नहीं कर देना, फॉर्मूले की मिस्टेक माफी योग नहीं होती है। और फिर अगर V0 एवरेज निकालें तो ये हमेशा निकल के आएगा Vm बाई पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी I0 और IS वगैरह पता कर सकते हैं। जब भी फ्री व्हीलिंग एक्शन होगा तब आपको ध्यान रखना है IS RMS will never equal to I0 RMS when freewheeling diode is present. Okay, when freewheeling diode is present or freewheeling action is present or freewheeling action is present. So due to your teaching in 1 year, I understand whole power electronics. Okay, thank you Anik. Now it is clear बेटा, आगे बढ़ जाए। तो देखो अब इतने शॉर्ट पीरियड में मुद्दों पे बात समझो कि अगर सारे SCR हैं तो आपको मैंने बता चुका हूं, अगर फ्री व्हीलिंग एक्शन इनहेरेंटली प्रेजेंट है या अलग से लगा हुआ है तो जरा पावर फैक्टर निकालते हुए ध्यान देना, सोर्स करंट निकालते हुए ध्यान देना, फोरियर सीरीज पे ध्यान देना, क्योंकि अगर सारे SCR हैं तो बेटा I0 RMS IS RMS इक्वल हो जाएगा। अगर फ्री व्हीलिंग एक्शन लगा है तो I0 IS RMS इक्वल नहीं होंगे, उस केस में आपको थोड़ी सी एनालिसिस चेंज करनी पड़ेगी। ये हो गया सिंगल फेज फुल वेव। ओके, अब इसी सिंगल फेज फुल वेव में थोड़ी सी और बारीकताओं पे काम करते हैं कि लेट अस अज्यूम माय डियर फ्रेंड वी हैव अगेन सम लाइक SCRs इन दिस फैशन, कि कोई आके आपको ऐसे कुछ बोल दे, ओके, कोई आके आपको ऐसे कुछ बोल दे कि मान लो बेटा ये लोड है अपना एंड दिस इज I0, दिस इज V0, और यहां कहीं कुछ SCRs ले लेते हैं हम लोग, और ये हो गया सप्लाई एंड प्लस माइनस Vs, दिस इज टर्मिनल A एंड B।
अब आके किसी ने ये बोला बेटा कि आई नॉट कंटिन्यूअस है, बस आई नॉट कंटिन्यूअस है एंड वांट टू से कि SCR T1 को SCR T1 T2 और T3 T4 बोल देते हैं इसको। और कोई आके आपको ऐसे बोलता है कि बेटा SCR T1 डैमेज हो गया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि SCR T1 बेटा डैमेज हो गया, एक कहानी। SCR T2 को हमने डायोड बना दिया, दूसरी कहानी। तो आप बताइए सप्लाई पावर फैक्टर क्या होगा, सप्लाई पावर फैक्टर क्या होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन की एनालिसिस कैसे करना। सबसे पहले तो एज ए स्टूडेंट थोड़ा सीरियस हो जाइए। क्या कह रहा है बेटा एग्जाम में, वो T1 डैमेज हो रहा है। 2-3 बातें मैं कहूंगा, जो 10-12 सेंटेंसेस थे उनमें 5-6 हो चुके हैं, ध्यान देना बेटा। उस प्रोफेसर ने कहा कि T1 डैमेज हो गया, तो जैसे ही उसने बोला T1 डैमेज हुआ तो T1 को बेटा हम अपने सर्किट से ओपन कर देंगे। एक नया सर्किट बनाना अपने रफ पेपर पे, T1 को हटा देना, ओके। फिर उसने कहा कि T2 को डायोड बना रहे हैं, तो T2 को हटा दो और यहां पे एक डायोड लगा दो। अब आप 2-3 बातें जो मैं बोला हूं आपको, उनको जरा ध्यान रखना। यार रवि सर एक बात बोले थे कि जो यहां डायोड होते हैं वो कंफर्म अपने अपने पीरियड में ऑन रहते हैं, क्योंकि वो तो अनकंट्रोल्ड है, ट्रिगरिंग की जरूरत नहीं है। मतलब ये जो डायोड है, अगर मैं इसे D2 नाम दूं तो एक बात तो कंफर्म है कि मिनिमम नहीं होता बेटा, वर्डिंग देखो, मिनिमम 0 से लेके पाई तक तो D2 कंफर्म ऑन रहेगा। मतलब अगर मैं एक सेंटेंस यहां लिखूं कि D2 0 to पाई ऑन गारंटेड, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं बेटा, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं। इतनी बात क्लियर है सभी को? प्लीज टेल मी एवरीवन, प्लीज टेल मी एवरीवन बेटा कि D2 0 से लेके पाई में कंफर्म ऑन है। क्यों ऑन है? क्योंकि बेटा यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव है। दूसरा, ये वाला डिवाइस तो है ही नहीं बेटा, तो इसको हटा देते हैं, ये लो कंफर्म। ये हो गया अपने पास कोई सिस्टम। अब देखो कैसे ऑन होगा। अगर करंट कांस्टेंट है तो जरा मोड देखो, अगर करंट कांस्टेंट है तो क्या हम एग्जाम में यार इतने भी हम गए गुजरे नहीं है ना कि हम समझ लेना बात को। उसने कहा अल्फा बेटा मान लो 30 डिग्री है, तो हमने कहा ठीक है 30 डिग्री पे बेटा ये दोनों एक साथ ट्रिगर करेंगे, खत्म। और जैसे ही पोलैरिटी चेंज होगी बेटा ये कंफर्म ऑन होगा। हमें करंट कॉन्टिन्यूअस चाहिए, तो कंटिन्यूअस के लिए ऊपर वाला डिवाइस तो परमानेंटली ऑन रहना चाहिए, परमानेंटली ऑन रहना चाहिए। अगर ये डैमेज हो गया, करंट कॉन्टिन्यूअस चाहिए, तो ये डिवाइस परमानेंटली ऑन होने का मतलब है क्या हम इसको बेटा एक कंडक्टर से रिप्लेस नहीं कर सकते? क्या हम इसको बालक एक कंडक्टर से रिप्लेस नहीं कर सकते? ऐसे ही एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट लेके अपना ज्ञान दिखाना, ये परमानेंटली हो गया, अब हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं है। मतलब अगर कोई आके ये कहता कि 3 साइकिल के बाद इस SCR की फायरिंग पल्स को निकाल ले रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो डिवाइस परमानेंटली ऑन है, जो डिवाइस परमानेंटली ऑन है उसके लिए ट्रिगरिंग सर्किट की जरूरत ही नहीं है। अब बात आ गई बेटा इन दो डिवाइसेस पे, जिसमें एक डायोड है, दूसरा SCR है। अगर हमें करंट बेटा कंटिन्यूअस रखनी है तो मिनिमम वाले पीरियड में तो ये तो ऑन रहेगा, और ये उस पीरियड में ऑन रहेगा जिस पीरियड में हम इसे ट्रिगर करेंगे। तो ऐसे समझो कि 0 से लेके पाई तक तो D2 कंफर्म ऑन है बेटा, 0 से लेके पाई तक तो D2 कंफर्म ऑन है। और जब D2 ऑन है तो D2 के साथ ये शॉर्ट वायर, इस केस में देखो V0 की वैल्यू क्या हो गई? 0। V0 की वैल्यू क्या हो गई? 0। अगला पॉइंट बेटा, जिस पॉइंट पे इसे ट्रिगर करोगे उस पॉइंट पे तो बेटा D2 ऑफ हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों नीचे वाले या दोनों ऊपर वाले से में हमेशा साइमल्टेनियसली ये दोनों ऑन नहीं होंगे। अगर इसे ट्रिगर कर दिया तो इसे ऑफ होना नेचुरल है, इसका ऑफ होना नेचुरल है। यानी कि अब ये पाथ बना, और अगर ये पाथ बन गया तो V0 किसके इक्वल है बेटा? Vs के इक्वल है, बस खत्म। यानी कि आउटपुट वोल्टेज कहीं ना कहीं बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर कंट्रोल्ड को फॉलो करेगा। जैसे ही आपको ये आइडिया लग गया बेटा कि एक पीरियड T4 किसी में ऑन है, जैसे मैं एक प्रॉपर अगर इसकी वेवफॉर्म बनाऊं तो कुछ ऐसी नहीं बना सकते हैं, जरा ध्यान देना। ये लो बेटा V0 बना देते हैं इसका, देखो ऐसे ही एग्जाम में छोटे छोटे स्टेप्स लेना, आपने जबरदस्ती की बातें नहीं करनी है हम लोगों को। जैसे लो ये हो गया, ओके, ये VB हो गया बेटा, और ये VAB ऐसे बना लेना। देखो ऊपर वाला तो चला गया है, तो मैं ऊपर वाले की जरूरत नहीं है क्योंकि T1 डैमेज हो गया। T1 डैमेज होने से बेटा आउटपुट में कभी भी VAB आएगा नहीं, तो हमने VAB को हटा दिया बेटा परमानेंटली। अब VBA बचा, तो देखो 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक बेटा यहां से यहां तक कौन ऑन रहेगा? खुद ही बताओ कौन ऑन रहेगा? ऊपर वाला डिवाइस T2 और नीचे से डायोड D2।
खत्म। अगला T3 या T4 कब ट्रिगर करोगे, इसको कब ट्रिगर करोगे, अल्फा पे, यानी कि अल्फा का मतलब बेटा यहां कहीं, देखो यहां कहीं, ये हो गया पाई प्लस अल्फा। ये वो एंगल है जहां पे T4 ट्रिगर कर रहे हो, और जैसे T4 यहां ट्रिगर करोगे, T4 कहां तक ऑन रहेगा बेटा, इतने ही में तो ऑन रहेगा, बचे हुए में फिर से D2 ऑन हो जाएगा, क्योंकि D2 तो कंफर्म ऑन होना है। तो अब जरा मार्कर उठाते हैं और V0 की वेव शेप देखते हैं कैसी बनेगी। तो देखो यहां से लेके यहां तक बेटा T2 D2 ऑन, और जब T2 D2 ऑन है तो फ्री व्हीलिंग एक्शन है, यानी कि V0 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0। देखो आराम से, V0 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0। लो 0 हो गया। अगले में चलो देखो क्या T4 ऑन हुआ, नहीं सर जी T4 आगे ऑन होगा, तो यहां पे 0 ले आओ, क्योंकि करंट कंटिन्यूअस चाहिए। तो जब तक T4 ऑन नहीं होगा तब तक पुराने वाले डिवाइसेस को अपना काम करना पड़ेगा, ऐसे ही 0 हो गया। जैसे ही यहां पहुंचे T4 ऑन हो गया, मतलब T4 और T3 ऊपर से ऑन हुए, V0 ये बन गया। लेकिन जैसे ही यहां पहुंचे बेटा फिर से D2 ऑन हो गया, तो वोल्टेज 0 एंड सो ऑन, दिस इज द V0। कौन नहीं बना पाएगा। और जैसे ही बेटा V0 एवरेज की बात की, फाइनली हम लोगों ने लिख दिया Vm/2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। अब पूछ लो भैया क्या पूछोगे, अगर करंट आपकी कांस्टेंट दे दी उसने, तो करंट कांस्टेंट देने से बेटा हम लोग ये सीधी सीधी बात कर सकते हैं कि भैया अगर I0 कांस्टेंट है तो IS क्या होगा। देखो वेवफॉर्म से IS क्या होगा, अगर I0 कांस्टेंट है तो ये हो गया बेटा, IS वहां फ्लो होगा जहां T3 T4 दोनों एक साथ ऑन है, यानी कि ये स्टार्ट होगा बेटा पाई प्लस अल्फा से, 2 पाई पे खत्म, फिर ये स्टार्ट होगा बेटा 3 पाई प्लस अल्फा पे और 4 पाई पे खत्म। लो अब यहां से ये IS आ गया, IS की RMS वैल्यू निकालो, I0 की एवरेज और RMS दोनों इक्वल होंगी। cos फाई क्या होता है बेटा, जब भी लोड करंट कांस्टेंट हो, जब भी लोड करंट कांस्टेंट हो, cos फाई इज नथिंग बट V0 एवरेज इनटू I0 एवरेज डिवाइडेड बाय VS RMS IS RMS। डन, ओके, यस, पक्का क्लियर है बालक, ओके वेरी नाइस। तो ये कहानी हो गई। तो जब भी आपको फ्री व्हीलिंग एक्शन दिखे या कहीं पे भी कोई एससीआर डैमेज हो जाए, ओके, डायोड पे विशेष ध्यान रखना, मतलब डायोड का एक मिनिमम पीरियड जरूर ध्यान रखना कि भैया 0 से पाई में कौन कंफर्म ऑन रहेगा, पाई से 2 पाई में कौन कंफर्म ऑन रहेगा, पर इनको फोकस करना है। ओके चलिए, नाउ आई थिंक टिल नाउ ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। बोलिए बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर में कोई डाउट है किसी को? यस, टेल मी फास्ट। फुल वेव रेक्टिफायर में कोई डाउट है किसी को? जल्दी बोलिए बालक। ओके, नाउ वेरी इजी एग्जांपल आई वांट टू गिव यू हियर। ओके, ध्यान से समझिए। हियर बेटा यू हैव सम लोड इन दिस फैशन, और ये अपने पास कोई सिस्टम है इस टाइप का। ओके, एंड दिस I0 इज कांस्टेंट, तो I0 को मैं लिख देता हूं कांस्टेंट, I0 इज कांस्टेंट, लोड इज देयर, दिस इज V0। ओके, आपको मुझे बहुत जल्दी से बताना है व्हाट विल बी द सप्लाई पावर फैक्टर cos phi s। ओके, एक पॉइंट, एंड ऑल्सो टेल मी फंडामेंटल पावर फैक्टर, फंडामेंटल पावर फैक्टर, ये भी बताना है मुझे आपको, फंडामेंटल पावर फैक्टर। और ये हो गया आपका सप्लाई वोल्टेज विच इज प्योर साइनसॉइडल Vs। दिस इज T1 T2 T3 T4। ओके, T1 T2 T3 T4। तो इसको मैं जरा हटा देता हूं, ये हो गया। ओके, सो स्टार्ट करिए आप लोग। सो ये हो गया, और यस, तो इसको लैंग्वेज नहीं देते हैं, इसको डैमेज कर देते हैं। तो ये भी हट गया बेटा, ये लो ओपन हो गया, ये डन। सो ओपन, डन। नाउ बेटा दिस SCR T1 आई वांट टू राइट ऑन SCR T2 एंड डायोड D, ये कुछ सर्किट दिया आपको। ओके, एंड
calculate supply power factor if triggering angle, triggering circuit of T1 is removed after pi plus. This is the question. And the triggering angle of each SCR is 45 degree. And the triggering angle of each SCR is 45 degree. Okay? Yes. Now start your job. Okay? बहुत आराम से. हाँ पल्लव, इसी में रिएक्टिव पावर ले लेते हैं बेटा, इसी में रिएक्टिव पावर ले लेते हैं. सो ध्यान देना, T1 T2 D 1 SCR इज ऑलरेडी डैमेज. तो लैंग्वेज में बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं है इतनी. ओके, सो दिस आई नॉट करंट इज कांस्टेंट. शायद फिर से मुझे शट डाउन करना पड़ेगा इसको. ओके, खैर, सो दिस आई नॉट करंट इज कांस्टेंट. ध्यान देना बेटा, आई नॉट करंट इज कांस्टेंट. Yes, I naught current is constant. SCR 1 SCR is damaged. T1 की जो फायरिंग सर्किट है उसको रिमूव किया जा रहा है पाई प्लस पे. Then what will be the power factor and fundamental power factor when alpha is 45 degree? Okay, start your job. अब देखो अपने आप को, मान लो अब आप एग्जाम में बैठे हुए हो. ओके, अब मान लो एग्जाम में बैठे हुए हो और आपके पास 2 से 2.5 मिनट है लगभग, इससे ज्यादा टाइम नहीं होता है. सो टेक अराउंड 3 मिनट्स. इतने डिस्कशन के बाद ट्रस्ट मी बालक, आप इस क्वेश्चन को वाकई में हैंडल कर सकते हो. मैं बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस होके नहीं बोल रहा हूं, बट आई थिंक अगर आप इसको हैंडल कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, फुल वेव रेक्टिफायर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. ओके, फुल वेव रेक्टिफायर में कोई दिक्कत नहीं होगी जी. यस, आराम से 3 मिनट लो, 2-3 मिनट लो एंड हैंडल इट. 3 मिनट के बाद मैं बोलता हूं आपसे, आप पहले अपने आप को समझो. ओके, VS इज प्योर साइनोसॉइडल, आई नॉट कांस्टेंट दिया हुआ है बंदे ने. ये कहानी है 2 से 3 मिनट मोर देन एनफ है. ओके, करिए, स्टार्ट करिए. हाँ, आया आंसर बेटा?
0.381। बिल्कुल परेशान नहीं होना अगर इधर उधर हो जाए आंसर, बट ये सोचो कि आपने अपनी कोशिश की, उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। थोड़ा इस पे विचार करो, 3 मिनट हो गए ऑलमोस्ट। ओके, उस पे सोचो बेटा। देखो कुछ नहीं है, देखो क्या है, T1 रिमूव्ड, फायरिंग ट्रिगरिंग सर्किट ऑफ T1 इज रिमूव्ड अप पाई प्लस। तो देखो T1 तो ट्रिगर हो गया होगा बेटा अल्फा पे। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले सभी लोग बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, एवरीवन स्पीक अप। देखो क्या कह रहा है बेटा, सिंपल वे से कि इफ ट्रिगरिंग सर्किट ऑफ T1 इज रिमूव्ड आफ्टर पाई प्लस अल्फा एट अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो देखो अगर ये 45 डिग्री पे रिमूव भी कर लिया जाता है और आई नॉट कांस्टेंट है, तो बेटा इसको देखो, ये तो परमानेंटली ऑन हो गया ना। अगर आई नॉट को कांस्टेंट रखना है, मतलब ये करंट कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, तो ये तो परमानेंटली ऑन हो गया। और ये है डायोड, अब यही SCR तो बचा, तो पुराना केस नहीं हो गया। समझो, पुराना केस हो गया। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा। 0.318 0.384 आपने 2 आंसर दिए हैं, इसलिए मैं पूरी कैलकुलेशन कर देता हूं। ओके, मतलब कैलकुलेशन आप करना, मैं समझा देता हूं। तो देखो एक बात कंफर्म हो गई बेटा। अच्छा बताओगे किस पीरियड में कंफर्म ये डायोड ऑन है D1? किस पीरियड में ये कंफर्म ऑन है? ये कंफर्म ऑन है। तो देखो जब ये पॉजिटिव है तब तो ऑन नहीं होगा, माइनस प्लस में ये कंफर्म ऑन है, तो D1 कंफर्म ऑन होगा बेटा पाई से 2 पाई। ये मिनिमम है, जरूरत हुई तो इससे ज्यादा भी ऑन रहेगा, बट मिनिमम ये है कि पाई से 2 पाई में भगवान भी इसको ऑन होने से नहीं रोक सकते। इस बात को समझो। ओके, आगे बढ़ो। तो देखो अगर हम यहां पे सिंपल ऐसे ही एग्जाम में करना, एक VS बनाना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप वहां पे केस 1 केस 2 इस टाइप से लिखो। ये हो गया, यहां अल्फा बन दो बेटा, ये पाई लिख दो, उसके बाद ट्रिगिंग की जरूरत नहीं है, सॉरी जरूरत है, यहां पे T2 लगा हुआ है ना, तो यहां पे देखो अगला अल्फा दे दो, अगला अल्फा दे दो, फिर अल्फा की जरूरत नहीं है क्योंकि परमानेंटली ऑन हो गया, फिर यहां अल्फा दे दो। ये अब ऑब्जर्वेशन करो कि जब बेटा ये ऑन है तो आपका V0 कुछ ऐसा बन गया, जब आपका स्टार्टिंग में देखें। उसके बाद जैसे ही पाई के बाद चले आगे, तो देखो ऊपर से तो बेटा एक ही ऑन है ना, लेकिन पाई से 2 पाई में कंफर्म D1 ऑन है, तो अब ये एक साथ ऑन हो गए। जैसे ये एक साथ ऑन हुए, V0 शॉर्ट सर्किट हो गया लोड, तो V0 की वैल्यू क्या हो गई? 0। यानी कि इसके बाद V0 क्या हो गया बेटा? क्या ही हो रहा है यार, हाँ V0 क्या हो गया बेटा इसके बाद? 0। अब ये कंटिन्यूअस 0, अगला अल्फा आपको यहां कहीं मिलेगा, तो यहां पे तो अब जरूरत नहीं है ट्रिगरिंग की। लेकिन इस केस में रुको, एक केस छूट गया ना, हाँ वेट करना बेटा, ये अब जरा ऑब्जर्व करो। तो यहां से लेके यहां तक तो बालक ये 0 हो गया, क्योंकि इतने पीरियड में कौन ऑन है? फटाक से बोलो सभी लोग, इतने पीरियड में ऑन हुआ आपका T1 एंड D1 जो नाम दिए थे। आगे बढ़ो, T2 को हम लोग यहां कहीं ट्रिगर करेंगे, बट T2 यहां फिर से गड़बड़ हो रहा है, रुको जल्दीबाजी हो गई यहां पे। ये तो जरा ऑब्जर्व करना बेटा, पहले केस में यहां पे देखो T1 T2 डायगोनली कनेक्टेड है ना, तो ये एक साथ ऑन हुए होंगे, यानी कि अल्फा से लेके पाई तक T1 D1 सॉरी T1 T2 ऐसे ऑन हुए, तो V0 की वैल्यू क्या होगी बेटा? VS, खत्म। जैसे ही हम पाई प्लस पे मूव किए, T1 D1 ऑन रहेगा और 2 पाई तक कम से कम ये ऑन रहेगा, तो ये इसके साथ ऑन रहेगा। तो क्या हो गया बेटा, यहां से लेके यहां तक 0। अब अगला बताइए T2 कब ट्रिगर होगा? T2 ट्रिगर होगा बेटा यहां कहीं, तो यहां तक तो अभी बॉटम से डायोड को ही ऑन रहना है, तो डायोड ऑन हो गया। जैसे ही आगे पहुंचे फिर T2 ट्रिगर हो गया, फिर T2 T1 ऑन हो गया एंड सो ऑन। ये हो गया बेटा V0। अब बताओ क्लियर है? अगर ये V0 है तो किस रीजन में सोर्स करंट फ्लो होगा? सोर्स करंट उसी रीजन में फ्लो होगा बालक जिस रीजन में डायगोनली पेयर ऑन होगा, और डायगोनली पेयर ऑन यहां कहीं होगा, इसके अलावा नहीं होगा। ये रहा IS का वेवफॉर्म, तो IS का वेवफॉर्म I0 के इक्वल होगा। किस रीजन में? जिस रीजन में डायगोनली पेयर ऑन है। ये हो गया IS एंड I0। ये पीरियड क्या हो गया बेटा? ये अल्फा 2 पाई, और ये हो गया 3 पाई प्लस अल्फा 2 2 पाई प्लस अल्फा 2 बेटा 3 पाई। अब बताओ क्लियर है V0 एंड IS? यस एवरीवन टेल मी फास्ट बेटा, अभी क्लियर है सभी को?
mj 0.318 ये हो गया। अब जरा मेरी बातों को फिर से विशेष ध्यान दो। अगर हम V नॉट एवरेज की बात करें तो V नॉट एवरेज क्या हो गया बेटा, Vm बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, डन। और ISRMS की बात करें तो ISRMS हो गया बेटा वही पुरानी कहानी, I नॉट अंडर रूट पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 पाई। बस इन वैल्यूज को ध्यान से समझो। अब अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो कोई कैलकुलेट करे बेटा मेरे साथ। V नॉट एवरेज करंट कांस्टेंट है, इसलिए V नॉट एवरेज इनटू I नॉट एवरेज फॉर आइडियल कन्वर्टर डिवाइडेड बाई VSRMS इनटू ISRMS। MJ कैलकुलेट करो यार। तो ये V नॉट एवरेज हो गया बेटा Vm बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा इनटू I नॉट, ओके, डिवाइडेड बाई ये Vm बाई रूट 2 इनटू I नॉट अंडर रूट पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 पाई, ओके। ये हो गया। अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 45 डिग्री आई थिंक, तो अल्फा 45 पुट कर दो यहां पे, तो ये फाइनली हो जाएगा बेटा अपने पास Vm हट गया 1 बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस 45 डिग्री, I नॉट कैंसिल हो गया और ये बच गया बेटा 1 बाई रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4, यही होता है ना 45 डिग्री, या पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 पाई। यार ये कोई वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे बताए, ये वैल्यू कोई बताए बेटा मुझे कैलकुलेट करके। यस, इससे जो आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। ये हो गया सप्लाई पावर फैक्टर। बस आपको या नहीं होता यार, ध्यान से समझना होता है हर बात को। जब आप एनालिसिस करें तो आप बहुत सीरियस रहे। जैसे आपने देखा होगा मैं ही हूं तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, ओके। जैसे आपने देखा होगा कि जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो प्रॉपरली डिवाइसेस को देख रहा था कि कौन ऑन होगा कौन ऑफ होगा। खासतौर से जब कोई डिवाइस डैमेज होता है तो क्वेश्चन और भी ट्रिकी बन जाता है। तो डैमेज अगर कहीं पे वर्ड दिख जाए तो उस पर बड़ा सीरियस हो जाना है उस मोमेंट पे, ओके। या 0.318, सो डेफिनेटली 0.318 इज करेक्ट आंसर। देखो आने लगे, बस ऐसे ही करना है, इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में, ओके। नाउ माय डियर फ्रेंड वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 फेज रेक्टिफायर, ओके। 3 फेज रेक्टिफायर, ओके। इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस को पढ़ लेना, मैं एक लेक्चर में डिस्कस किया हूं, उस लेक्चर को शॉर्ट में हाई स्पीड पे जाके देख लेना जरूर, सारे फॉर्मूले वहां से रिवाइज कर लेना, ओके। अब आते हैं 3 फेज रेक्टिफायर पे। 3 फेज रेक्टिफायर में बेटा मैं एक रेक्टिफायर से आपको सारे केसेस बताऊंगा, ओके। इस एक रेक्टिफायर से आपको सारे केसेस ऐसे ही ध्यान रखने हैं जैसे मैं समझा रहा हूं, ओके। सो हियर वी हैव ऑल डिवाइसेस SCR। अगर MSQ बनता है इससे तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेगा, नो डाउट ऐसे क्वेश्चन का रिप्लाई बिरले ही कर पाएंगे, ओके। सो हियर आई वांट राइट सम T1, T3, T5 एंड T4, T6 एंड T2 इज दिस। और सप्लाई दे देते हैं बेटा यहां पे R फेज, दिस इज Y फेज एंड दिस इज B फेज, ओके। ये सप्लाई हो गई 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई, ओके। 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई ये हो गया। दिस इज आवर लोड। आपको जरूरी नहीं कि I नॉट कांस्टेंट दिया जाए एग्जाम में, तो उस पर भी ध्यान रखना है। अब मैं आपको यह सजेस्ट नहीं करूंगा कि बहुत ज्यादा कहीं से पढ़ना है, बस 2-4 क्वेश्चन अगर आपके पास समय हो तो आप उसको कर सकते हैं, ओके ओके। बिल्कुल बिल्कुल पलप मैं अभी ले लेता हूं यार, मैं बार बार मिस कर देता हूं आपके क्वेश्चन को, बट मैं बोल देता हूं, ओके। चलिए ध्यान से समझना। सी बेटा जी, अगर कोई आपसे रिएक्टिव पावर पूछे तो रिएक्टिव पावर के लिए सबसे पहले आपको फंडामेंटल पावर फैक्टर निकालना होगा। फंडामेंटल पावर फैक्टर निकाल के आप VS IS cos फाई कर साइन फाई कर देना, बस खत्म। एक पॉइंट, अगर आपके पास रियल पावर आ चुका है, S आ चुका है, तो आप वो फॉर्मूला लगा देना Q इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस वन S स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, वो लगा सकते हैं। अगर आपके पास IS का कंपोनेंट टोटल आ गया है तो आप S इज इक्वल टू V इंटू आई कॉन्जुगेट लगा के उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पावर फैक्टर आ गया है तो बहुत सारे तरीके हैं रिएक्टिव पावर फाइंड आउट करने के, ओके। आप मोटा मोटी ये मान के चलिए कि 99% केसेस में आपसे रिएक्टिव पावर की कोई बात नहीं करेगा रेक्टिफायर में, क्योंकि ना तो यहाँ पे कंपनसेशन वो आपसे करवा रहा है, या तो कंपनसेशन करवाए तो रिएक्टिव पावर पूछे, अदरवाइज रिएक्टिव पावर का बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं है। अब इन अदर वर्ड्स की अगर मान लो रिएक्टिव पावर पूछ ही देता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको रियल पावर आपने निकाल चुके हैं, अपरेंट पावर आप निकाल लेंगे S इक्वल टू V इंटू आई से, तो या तो आप ये S स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर लगा दें,
या फिर आप S इक्वल टू बी इंटू आई कॉन्जुगेट लगा दें। जब आई कॉन्जुगेट लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि पावर फैक्टर आपका निकला होना चाहिए। उस पावर फैक्टर को जब पुट करेंगे तो S कन्वर्ट हो जाएगा P प्लस माइनस जे क्यू की फॉर्म में, वहां से आप रिएक्टिव पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके यस। इसके अलावा बेटा सर आपका क्लास कब तक है? राजेश हार्डली 7:15 तक, 7 तक। ओके उसके बाद देखते हैं कि कुछ टॉपिक जो बच जाता है वो कैसे हैंडल करेंगे। चलिए सबसे पहले इस पे आइए। बालक थोड़ा सीरियस होके सुनिएगा। नाउ फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग द एनालिसिस ऑफ कन्वर्टर व्हेन आई नॉट इज कांस्टेंट। तो पहला केस में 3 फेज रेक्टिफायर में लेता हूं कि जब भैया आई नॉट क्या है, कांस्टेंट है। ये पहला केस है। अगर आई नॉट कांस्टेंट है तो ध्यान देना क्या किन किन मुद्दों पे बात करनी है। ऐसा मान के चलिए 90% केस में आई नॉट कांस्टेंट के साथ आपसे इस कन्वर्टर से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कन्वर्टर ऑलरेडी ऑपरेशन वाइज थोड़ा टफ है। जब आई नॉट कांस्टेंट हो तो आपको यहां पे 2 केसेस मिलेंगे। फर्स्ट केस होगा रेक्टिफिकेशन मोड, ध्यान देना फर्स्ट केस होगा रेक्टिफिकेशन मोड, एंड सेकेंड केस होगा बेटा अपना इन्वर्टिंग मोड। इन्वर्टिंग मोड ओके इन्वर्टिंग मोड होगा तो अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी और ई जो है वो पावर डिलीवर करेगा। रेक्टिफिकेशन मोड में बेटा अल्फा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी, ई आपका पावर कंज्यूम करेगा या ई एब्सेंट भी हो सकता है। ओके अगर इस केस में हम देखें तो आई नॉट एवरेज की जो वैल्यू है वो आप वी नॉट एवरेज माइनस ई बाई आर से कैलकुलेट करेंगे, और यहां पे आई नॉट एवरेज की वैल्यू आप वी नॉट एवरेज प्लस ई बाई आर से कैलकुलेट करेंगे। ये ध्यान रखना है इन्वर्टिंग मोड में। साथ में दोनों ही केसेस के लिए जो वी नॉट एवरेज का फॉर्मूला है वो सेम रहेगा 3VML बाई पाई इंटू कॉस अल्फा। यहां भी वी नॉट एवरेज सेम रहेगा 3VML बाई पाई इंटू कॉस अल्फा। ओके ये मुद्दा है। जहां पे ml का जो मीनिंग है वो है, या v जो ml है वो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज। ओके खैर ये सबसे आसान पार्ट है। अगर 3 फेज रेक्टिफायर का आसान क्वेश्चन आता है तो यहां से आएगा। ओके 3 फेज रेक्टिफायर का अगर आसान क्वेश्चन है तो यहां से आएगा, लेकिन अगर ट्रिकी हुआ तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द लोड इज रेजिस्टिव, फॉर एग्जाम्पल द लोड इज रेजिस्टिव, फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन कर दिए जो बिना थ्योरी डिस्कशन के नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको ध्यान हो, शायद आप कभी 3 फेज रेक्टिफायर की मेरी क्लास किए हो या सर की क्लास किए हो तो आपको आइडिया मिला होगा इस टाइप से कि व्हेन करंट इज कॉन्टिन्यूअस ओके और एनीथिंग, तो आपने ऑब्जर्व किया हो बेटा कि जो अल्फा की वैल्यू है वो अगर 0 ले ले तो आउटपुट कुछ ऐसा बनता है, और अल्फा की वैल्यू अगर बेटा 60 डिग्री ले ले तो आउटपुट कुछ ऐसा बनता है। 3 फेज रेक्टिफायर में क्यों बनता है अब उसका टाइम नहीं है। ओके अगर अल्फा की वैल्यू बेटा 90 डिग्री ले ले तो आउटपुट कुछ ऐसा बनेगा जिसमें पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया इक्वल होते हैं। ओके और अगर अल्फा बेटा 120 ले ले तो आउटपुट कुछ ऐसा बनने लगता है जो टोटली नेगेटिव हो जाता है, जो टोटली नेगेटिव हो जाता है। तो देखो ये अल्फा 0 डिग्री है, ये अल्फा 60 डिग्री है, ये अल्फा 90 डिग्री है और ये अल्फा 120 डिग्री है। ओके अब जरा ऑब्जर्वेशन जो करने वाली बातें हैं उनको समझते हैं। ठीक है ध्यान देना देखो बेटा यहां पे वी नॉट टोटली पॉजिटिव में है, यहां भी वी नॉट टोटली पॉजिटिव में है, यानी कि चाहे लोड प्योर रेजिस्टिव क्यों ना हो, वर्डिंग देखो, चाहे लोड प्योर रेजिस्टिव क्यों ना हो, चाहे लोड आर हो, आर एल हो, आर एल ई हो, आर ई ना हो, आर ई की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे लोड आर हो बेटा, आर एल ई हो, आर एल हो, इन तीनों लोड्स के लिए व्हेन अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 60 डिग्री द वी नॉट वेवफॉर्म विल नेवर चेंज। एक पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन वो अराइज कर सकते हैं कि व्हेन फ्री व्हीलिंग डायोड विल कंडक्ट। तो ध्यान देना बेटा ये जो अल्फा है वो 60 डिग्री है और 60 डिग्री तक वी नॉट आपका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रीजन में आ रहा है, यानी कि अगर फ्री व्हीलिंग डायोड 3 फेज रेक्टिफायर में लगा भी है तो फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन नहीं होगा। कब तक ऑन नहीं होगा बेटा, जब तक कि अल्फा 60 डिग्री है। So there is no meaning of freewheeling diode when any load is there, okay, when alpha is less than equal to 60 degree. अगर alpha greater than 60 degree है तो freewheeling diode can take place
बट वी डोंट वांट टू ऑपरेट फ्री व्हीलिंग डायोड इन 3 फेज फुल वेव कन्वर्टर ड्यू टू मैनी रीजन, वो मैंने डिफाइन किए हुए हैं, अभी उनकी जरूरत नहीं है। तो आप ऐसा मान के चलिए अकॉर्डिंग टू मी ऑलमोस्ट इन 100% केसेस आपको वो फ्री व्हीलिंग एक्शन देगा ही नहीं 3 फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में व्हेन अल्फा ग्रेटर देन 60 डिग्री। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, नहीं होता कि अनएथिकल हो जाता है, ये सब कोई मीनिंग नहीं है इसका। अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा, अगर फ्री व्हीलिंग एक्शन नहीं है या फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं है तो उस केस में अल्फा ग्रेटर देन 60 डिग्री के बाद अपना आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में जाना शुरू करता है। जब तक कि अल्फा बेटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री रहता है, पॉजिटिव एरिया ग्रेटर देन नेगेटिव एरिया होगा, तो स्टिल आवर रेक्टिफायर, आवर कन्वर्टर विल वर्क इन रेक्टिफिकेशन मोड। इन अदर वर्ड्स द रिजल्टेंट पावर विल फ्लो फ्रॉम सोर्स टू लोड। जबकि बेटा जब अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाती है तो नेगेटिव एरिया इज ग्रेटर देन पॉजिटिव एरिया, और उस केस में हम लोग बोल सकते हैं डेफिनेटली दिस कन्वर्टर इज गोइंग टू वर्क इन इन्वर्टिंग मोड। That means the power will flow from load to source, or we can say beta resultant power will flow from load to source. In other words, our battery is going to charge our generator. Okay, this is the way. Now tell me it is clear? Yeah, tell me fast beta, it is clear? तो ये एक मुद्दा है। तो आपको मोटा मोटी ये ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन लगभग 90% चांसेस है कि इन्हीं से आना चाहिए। ओके, लेकिन 10% केसेस में क्वेश्चन मोल्ड होगा। अगर मोल्ड हुआ तो वो इसको बना सकते हैं बेटा 3 फेज सेमी कन्वर्टर। 3 फेज सेमी कन्वर्टर बनाया तो क्या होगा जरा समझिए। 3 फेज सेमी कन्वर्टर हुआ तो कुछ ऐसी कहानी होगी। यहां पे 3 फेज सेमी कन्वर्टर में नीचे वाले सारे एससीआर क्या बन जाएंगे बेटा, डायोड। अगर ये सारे एससीआर डायोड बन गए तो अब आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। नाउ फॉर्मूला विल बी 3VML/π1 प्लस कॉस अल्फा। एक पॉइंट। दूसरा, अगर ये सारे डायोड बन गए तो ये अनकंट्रोल्ड हो गया। कहां से, बॉटम से, यानी कि बॉटम में कोई स्विचिंग नहीं होगी, इनकी फिक्स हो जाएगी, लेकिन टॉप से स्विचिंग चेंज हो गई। और स्विचिंग चेंज होने की वजह से, यानी कि ऑन ऑफ प्रोसेस चेंज होने की वजह से 3 फेज सेमी कन्वर्टर 3 पल्स प्रोवाइड करता है, जबकि 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर 6 पल्सेस प्रोवाइड करता है व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री। When alpha equal to 0 degree, 3 phase semi converter and 3 phase full wave rectifier both are going to work like in the same way. So output voltage जो 3 phase full wave rectifier का होगा या 3 phase semi converter का होगा जब alpha 0 होगा, दोनों ही केसेस में सेम है, दोनों ही केसेस में सेम है। ओके, इतनी बात क्लियर है। चलिए, ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट थिंग। देखना, अगर क्वेश्चन और मोल्ड करता है, ओके, अगर क्वेश्चन और मोल्ड करता है तो यहां पे क्वेश्चन में जरा आइए बेटा कि T1 T3 T5 T4 T6 T2 या तो तीनों एससीआर या 6 एससीआर कर दिए, या टॉप 3 एससीआर बॉटम 3 डायोड कर दिए, या बेटा टॉप 3 डायोड कर दिए बॉटम 3 एससीआर कर दिए। ये हो गए सिंपल एग्जांपल अभी तक मेरे अकॉर्डिंग। और कॉम्प्लेक्स करें, अगर उसने आके ये कह दिया बेटा कि T5 परमानेंटली डैमेज हुआ, तो ध्यान रखना T5 के डैमेज होने से T5 के डैमेज होने से T2 को आपको हटाना नहीं है। T5 के डैमेज होने से T2 को आपको हटाना नहीं है। हो सकता है ये कंडक्ट करे, कैसे करेगा आप समझ रहे हो ना, डिस्कस किया था हम लोगों ने एक बार। ऐसे बेटा ध्यान लो, कोई आके बोलते T5 और T2 दोनों डैमेज हो गए तो आपका ये फेज डैमेज, क्योंकि ये भी डैमेज बेटा और ये भी डैमेज, जब दोनों डैमेज हो गए तो ये डैमेज, यानी कि 3 फेज रेक्टिफायर कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल फेज फुल वेव में, सिंगल फेज फुल वेव में। उस केस में आपको एनालिसिस अलग तरीके से करनी है अब, क्योंकि ये फेज है ही नहीं, डन। अब आके कोई ये बोल दे बेटा कि T5 T2 T3 तीनों डैमेज हो गए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल फेज हाफ वेव विथ फ्री व्हीलिंग एक्शन, सिंगल फेज हाफ वेव विथ फ्री व्हीलिंग एक्शन। मतलब आराम से सुनो, अगर टॉप से 2 बॉटम से 1 हेल्दी कंडीशन में रेस्ट डैमेज हो गए, या बॉटम से 2 टॉप से 1 हेल्दी कंडीशन में रेस्ट डैमेज हो गए, देन इट विल वर्क सिंगल फेज हाफ वेव विथ फ्री व्हीलिंग एक्शन। अगर बेटा कोई भी एक कॉलम परमानेंटली डैमेज हो गया, कोई भी एक कॉलम का मतलब ये, कोई भी एक कॉलम परमानेंटली डैमेज हो गया, इट विल वर्क सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर विथ कंट्रोल्ड वे। अगर बेटा कोई भी टॉप से 1 अथवा और बॉटम से 1, मतलब 5 डिवाइस अभी भी हेल्दी कंडीशन में है,
तो भी इसे काइंड ऑफ आप सिंगल फेज फुल वेव बोलिए, फिर भी ये 3 फेज नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि जो एक बच जाएगा वो फ्री व्हीलिंग एक्शन का काम करेगा। ठीक है, तो किसी भी कॉस्ट में आपके पास टोटल सप्लाई नहीं पहुंचेगी जो 3 फेज में चाहिए होती है। कुल मिला के अगर हमें 3 फेज सप्लाई चाहिए लोड पे काइंड ऑफ, या 3 फेज टाइप का आउटपुट चाहिए लोड पे, जिसमें या डीसी जो वोल्टेज है लोड पे आ रहा है उसमें सारे वोल्टेजेस चाहिए, तो उसके लिए सारे डिवाइसेस हेल्दी कंडीशन में हो। तो अपना प्लीज दिमाग शांत रख के सोचिए, विचार करिए। अगर 3 फेज रेक्टिफायर में उसने डैमेज किए तो कहानी बदलेगी, फिर आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, और कैसे करेंगे आप समझ रहे हैं, तो उसी तरीके से इसको फॉलो करना है। ओके, या क्लियर? एवरीवन टेल मी फास्ट बेटा, क्लियर है? जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा। हेल्दी कंडीशन में, हेल्दी कंडीशन की बात कर रहे हैं, आप सब कुछ छोड़ दो। हेल्दी कंडीशन में 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर की बात करें, हेल्दी कंडीशन में 3 फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इन हेल्दी कंडीशन, 3 फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इन हेल्दी कंडीशन। नाउ माय डियर फ्रेंड, ईच एससीआर विल कंडक्ट कितने डिग्री के लिए? सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ईच एससीआर विल कंडक्ट फॉर 120 डिग्री, ईच एससीआर विल कंडक्ट फॉर 120 डिग्री। वेरी नाइस। नाउ बेटा अगर आईएस आरएमएस की बात करें तो इसको भी ध्यान रखना है, इज नथिंग बट आई नॉट अंडर रूट 2/3 एम्पियर। डन। वहीं पे अगर हम लोग फंडामेंटल पावर फैक्टर की बात करें, सो इट विल बी सिंपली कॉस अल्फा। ओके, कॉस अल्फा सिंपली। और पावर फैक्टर की बात करें जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा बेटा PS डिवाइडेड बाई SS, बट दिस टाइम 3 फेज। ऐसे लिख लिया करो ताकि कभी कोई मिस्टेक ना हो, अगर 3 फेज का हो तो ऐसे लिखना। अब यहां पे बेटा अगर I नॉट कांस्टेंट है तो जो रियल पावर है वो सिंपली V नॉट एवरेज इंटू I नॉट एवरेज हो जाएगा, जबकि बेटा जो डिनोमिनेटर है ये हल्का सा चेंज हो जाएगा, 3 इंटू V फेज RMS इंटू I फेज RMS। ओके, सिमिलरली वी कैन राइट दिस पावर फैक्टर इन दिस वे, लाइन ऑल्सो कि V नॉट एवरेज लिख दिया जाए इंटू I नॉट एवरेज लिख दिया जाए बेटा, डिवाइडेड बाई दिस वन 3 इंटू √3 इंटू V लाइन RMS इंटू I लाइन RMS। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, पावर फैक्टर निकालने में या फंडामेंटल पावर फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, होपफुली दिस थिंग इज क्लियर। चलो यहां तक बेटा 3 फेज रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया है। अब चॉपर और इन्वर्टर रहते हैं, तो चॉपर और इन्वर्टर हम लोग देखते हैं कैसे क्या, नहीं तो कल MSQ सॉरी माई 10 क्वेश्चन वाला एक सेशन लेते हैं, उसमें चॉपर और इन्वर्टर कोशिश करेंगे निपटाने की। ओके, तो अभी थोड़ी देर में आपके साथ संतन सर होंगे, सभी लोग शेयर कर दीजिए सेशन को। पावर सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीनों में जो खिलाड़ी बन जाता है उसका गेट निकल जाता है, अदरवाइज आप समझते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में उतना कंपैरिजन नहीं होता है जितना यहां। ओके, जितना यहां, ठीक है। तो होता क्या है कि यार जैसे नहीं होता है जब इलेक्ट्रिकल के हो तो जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं नॉन कोर, वो ऑलमोस्ट हर बच्चा जो टॉपर में लिस्ट में जा रहा है वो हर बच्चा हैंडल कर रहा है। जो रैंक डिसाइड होती है वो कोर से डिसाइड होती है, तो इसको थोड़ा महत्व दीजिए। सेशन शेयर कीजिए सभी के साथ, और संतन सर आ रहे हैं हार्डली हाफ एन आवर में या 15 मिनट में, उसके बाद फिर देखते हैं 1 घंटा टाइम निकाल के चॉपर इन्वर्टर पे भी डिस्कशन करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू डियर। बताइए एनी डाउट बालक, एवरीवन, एनी डाउट टिल नाउ? यस, स्पीक अप फास्ट। या उमेश जोशी, अच्छा विशाल सैनी सर भी हैं। अब यही नहीं पता चलता है आजकल के टाइम में कि कौन है कौन नहीं है। सो या क्लियर है पक्का बॉस? मुझे कोई डाउट तो नहीं मिल रहा है। ओके, या सो थैंक यू। चलिए, तो अब संत सर आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद का प्लान देखते हैं, ठीक है। ओके ओके डियर।
चॉपर भी होगा बेटा। अभी मैं एक 1 आवर लगभग निकलवा रहा हूं फिर से। ओके, तो 1 आवर में चॉपर इन्वर्टर के जो की पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी 2.0। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग। और अब तो आज तो 3 तारीख हो गया ना, अब टाइम तो ज़्यादा है नहीं, तो खूब बढ़िया से अभी देख लो, रिवाइज कर लो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और जो भी आप नोट्स बनाए होंगे ना उनको आप रिवाइज कर लो। ज़्यादा अभी अब जो है ना, नया चीज़ सीखने का अब टाइम नहीं है ना। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं ना उसको रिवाइज कर ले थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या सॉल्विंग एबिलिटी, मतलब क्या क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सब चीज़ देख ले। और विथ थ्योरीज, कुछ थ्योरी जो भी हमको लगेगा कि हाँ रिवाइज करवाना चाहिए, वो चीज़ हम आपको करवाएंगे यहाँ पे, है ना। और बेसिक्स से ही, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप पावर सिस्टम बहुत पहले भी पढ़े हो, तो उसके लिए रिवीजन का भी एक हमारा यहाँ पे है कि रिवीजन भी करेंगे हम लोग, है ना। तो ठीक है, आप में चैट में जो है ना एक लिंक आ रहा होगा, आप लोग उस लिंक पे चले जाओ, ठीक है। आप लोग उस लिंक पे चले जाओ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आप लोग जो है ना दूसरे लिंक पे चले जाओ। एक दूसरा लिंक क्रिएट हुआ है यहाँ पे, आपके चैट बॉक्स में दिख रहा होगा। सारे के सारे लोग आप उस पे चले जाओ, वहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, बेसिक्स से, 3 फेज से लेके 3 फेज पहले देखेंगे, फिर इंडक्टर कैपेसिटर का थोड़ा बहुत बिहेवियर देखेंगे हम लोग, वो स्टेबिलिटी में भी काम आता है, ठीक है। फिर पावर कैसे फ्लो होगा वो वाला पार्ट भी हम लोग देखेंगे इसमें, बेसिक्स में ही कोशिश करेंगे कि बेसिक्स में ही बहुत सारा चीज़ कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद इंडक्टेंस कैपेसिटेंस जो होता है ना, जिसमें जो GMD GMR वाला कॉन्सेप्ट लोगों को दिक्कत होती है उसमें, है ना। अदरवाइज है वो कुछ नहीं, बहुत ही ईजी होता है GMD GMR वाला, तो वो भी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी आप जो है ना, अभी आप लोग उस लिंक पे चले जाओ पहले, है ना, उसके बाद हम लोग मिलते हैं उस लिंक पे, ठीक है। 2 मिनट के अंदर उस लिंक पे मिलते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। आप लोग कॉपी पेन के साथ ही बैठना, हम लोग बेसिक से ही पढ़ेंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअली। तो दूसरे लिंक पे मिलते हैं हम लोग।